Mr. Malik? Now I should go to Punjab. Punjab. Very poor connectivity. Will you connect to Punjab? What I want to emphasize here is that we must know efficiency. As an engineer, it is our prime duty to have command over efficiency. All things start with this very basic point as an engineer. So efficiency of motor is 60, efficiency of 90%, pump is 60%, overall efficiency will be 54%. It is a science formula, engineering formula. Efficiency neta overall is equal to efficiency of one multiplied by efficiency of, it may be up to infinity. For example, if three machines, three components are directly coupled, then third will also be multiplicative. It will be multiplicative. So 0.9 into 0.6, it will be 0.54. If we multiply it with 100, then it is 54. So it will not be average. What I want to say, efficiency drastically reduced because of multi-layering, multi-machine coupled to a same shaft or directly coupled. So efficiency, with this I start always with efficiency. Thereafter, now I say in Jal Jeevan mission, our mission is to efficiently achieve our outcomes. Our outcome is 55 LPCD to each household. 55 LPCD per capita to each household. It means around, say, if it is a 5-person per family, then it is nearly 300 liter we have to supply in each house daily. So as a public health engineer, the main is, one is real capital work and another is operational maintenance. When I joined, I want to provide house connection, but it was told to me you should not do, otherwise your career will be stuck, because at that time only public stand posts were up. No one were allowed to provide house connection at that time when I joined the service, 1987. It means at that time there was paradigm was different. Now it is totally a paradigm shift. And I have championed this cause since I joined. I used to say provide only house connection. But at that time, I was not able to provide house connection because the policy at that time were not commensurate to provide house connection. Thereafter, this paradigm shift in Haryana took place on my in one meeting. I told in Hindi, I told in the meeting that ek badi bhool. एक बड़ी भूल, I use this word, this sentence, एक बड़ी भूल जन स्वास्थ्य विभाग की रही, वो है सार्वजनिक नलों से पानी देना. At that time I was criticized in the meeting कि this is against policy. Then I told then and there, it was taken by our secretary, sir, if we provide connection to household, we will save lot of time of each household, member of each household. In this way, at that time, Haryana adopted this policy of providing only household connection, not public stand. That year was 2006. To 2006. Thereafter, I was not expected that on my paper this policy paradigm shift will take place.
But it took place because in that meeting I explained in very detail. We we provide waterworks, we provide skeleton distribution system, but we don't provide house connection. Whereas in town and city, we provide house connection. So at that time, it was realized that we should go for house connection. Now, the grand vision of our Prime Minister uh, to provide house connection to each and every home. It is a grand challenge for us public health engineers, for public health engineers. For this, we have to work very hard. And in this, I want to emphasize Haryana adopted uh, parallel, we say in computing, we say parallel computing. On this aspect, I also told my engineer, you do work parallelly. One is increasing the water supply, improving the water supply system. On the other hand, providing house connections simultaneously because skeleton structure was always there. 40 LPCD, 55 LPCD we were doing in the past also. Since independence, we are doing the work. So I told we should work parallelly. We should provide house connection on one hand and provide upgrade water resources piping system on other hand simultaneously. So this was a great challenge for us. We are uh, doing it, but in this process, what I want to emphasize here is the most important aspect. Yes, house connection is very important, but more than that is our daily operation maintenance, attending daily complaints about non-availability of water, poor quality of water. These are our daily challenges. One is say 1 or 2 year challenge is providing house connection, supplying water. But our story doesn't end here itself. It will go on and on for years together, for all the days of the year. This challenge will be before us. So our desire, our strategy, what should be our strategy? What should be our strategy? Our strategy should be, I can only tell here, we should have assured source of water. Assured source of water. This is the biggest challenge before us. We should have assured source of water. Otherwise, if we provide house connection, in Haryana we are facing this. For example, we have provided house connection, but we don't have assured source. Then one day we supply, next day we fail to supply. Yeah, 1 month we supplied, or for another month we are dry. So assured water source is the first and foremost challenge we have to address. Next is next is so how to go about for ensuring assured water. What I want to say, it should have simple treatment. For example, in the past, you must have experienced. For example, we provide deep fluidization plant, we provide desalination. These may not work in long term because defluoridation plant may adjust its capacity. Then you have to change the media. Then this create problems. So we should, if we can have surface source instead of providing these complicated system, simple surface source, then we can have more success in achieving our. So here I want to emphasize, even if it has to be carried from distance, then even then it will be simpler and maybe economical also. Maybe economical also. This aspect should be always in your back of your mind. Okay, should I provide defluoridation plant or should I carry water from 15 kilometers from my canal or from my river? This has to be
uh, think at the very beginning of the project preparation itself. But my experience say कि bring surface water even from by gravity, or if some pumping is required, even then it will be cheap. Even then it will be cheaper because deep load is. Now I say one is community defloration plant, community desalination plant. These are very expensive and very difficult to operate and maintain. So even if you have to provide in say worst case scenario where you don't have any surface water, then I sometimes feel we should provide in each and every household individually, where there should be some sensor which say yes you are adjusted, so it could be replaced. Then you only for drinking purpose, only for drinking purpose, only for drinking purposes. For other purposes, the water can be used. Otherwise, this may be. I am saying alternative. I am not saying this is a hard and fast rule. You have to apply your mind on each and every scheme of what you conceive, what you deliver to in your state. Another aspect I say, usually our experience, what is your experience, you can share, but technically we say elevated surface reservoir, surface tank, some call ESR, we call it overhead service reservoir. This also requires thinking, deep thinking. In our case, we have seen these are not used and may become white elephant or not used intelligently. Otherwise, technically, when we study in public health engineering, overhead service reservoir as balancing service reservoir, you prepare mass diagram, then you accordingly design the elevated server. Somewhere it is one third capacity, somewhere it is half capacity. But for proper distribution, is OHSR is the only solution or some other solution are also there. In case in Haryana, we are now we see from each and every state are constructing basically from Delhi, WhatsApp. I see OHSR are being constructed in Rajasthan, in many other places also. In Haryana, we have small boosting station. Intentionally, maybe unintentionally, but we realize there are some benefit in that also. Because in case of overhead service reservoir on one corner of the village, when water is supplied at higher pressure, then more water goes into house nearby and tail ender remain dry. For this, I usually say while technically designing your distribution system, also think of high volume, low pressure system. High volume, low pressure system so that ultimately water should be available. Water should be available. For this, the designing of system should not involve high pressure and low flow. What I say, it should be high volume, low pressure system. It will have less leakages, less wastages, and you can think over this aspect also. These are the practical nuances I am explaining it to what have come to our in front of us during our execution, during our implementation, during our operation and maintenance. We have learned so many things which are practically required. So this is one of the practical solution I am suggesting here. Then I say, whenever you design your system, you keep in mind the topography. The topography generally we don't see topography in design of water supply system.
But many southern states, I see, they keep the topography. For example, in Tamil Nadu, when I saw they draw L section or even for water supply line. Here in Haryana, we don't do this L section. We don't prepare L section for water supply. For sewerage system, we do prepare L section, but for water supply system, because it is provided at say 3 feet depth below ground level, so we don't do leveling for water supply system. I know you must be doing leveling also. It must be done. It must be done. Leveling should be there. You see the topography, accordingly design the system. And for higher area, you may have a separate boosting station or ESR as you find suitable for your area. You can design accordingly. Now next I say how to execute the work faster. Because motivate. And in the process, some mistake may happen. Then I don't say deliberately make mistake, but I say sometimes we have to ignore small mistake for the larger goal. For example, we create negativity from the beginning. Then project will always remain stuck. This is my personal experience. I usually say, so long an engineer intention is good and he is doing diligently. If some bona fide, I am here saying very important, the word is here bona fide. If mistake is bona fide, it should be ignored, it should be rectified and go ahead. If someone doing nasty thing, then he should be either thrown out or from the project or whatever, take action. But so long as intentions are good, bona fide intention, and he doing diligently, he delivering the result, then we should appreciate him. Basically, in today's scenario, the engineering community is demoralized. And a demoralized person can never deliver good result. A demoralized person can never deliver good results. So keep your morale always high. Keep your morale always high. You are doing a great service to the nation, to your state, to your people. Lok kalyan mein hi hamara kalyan. When you are doing lok kalyan, then you must always be proud of that. I am doing a great service. The public health engineer are doing a great service to the nation, to the people of this nation. Then we should be always in motivated state. And further, I say, human management is a very difficult process. You have our process should be simplest possible. How simple it should be. Sometimes we complicate our each and every daily simple procedure. We complicate everything. And I say from last 25 years, I have said this, सरल है तो सफल है, जटिल है तो विफल, सरल है तो सफल है, जटिल है तो विफल है, जटिलताएं पैदा मत करिए. Never complicate the matter. Never ever. Simplify. I have told to each and every during every meeting I say the word सरल है तो सफल है, जटिल है तो विफल है, even before the honorable CEO, even before this our secretary, even before our each and every engineer. I say engineering is a complicated, complex process. Yes, computer is a complex system, but at the same time, it has been made user friendly so that a normal person having basic intelligence can operate these systems. Mobile is a very complicated system behind the scene, but it can be operated even by a lay person. Similarly, our system should be so simple so that it could be operated by a lay person.
it could be executed by a lay person after, of course, after little bit of training. Now I say, what is the most important aspect which should always be kept in mind? First, I started a campaign. I say, if for a public health engineer, one most important aspect that should never be forgotten whenever we go to office, our first priority should be leak repair. Leak repair should always be our first priority for a public health engineer. During, I am saying operation and maintenance, during operation and maintenance, someone complained you about leakage, about dirty water. Immediately the leakage should be addressed. Otherwise, very awkward situation will arise. For example, some cholera or other disease may spread, waterborne disease may spread. Then your whole exercise, your all what you have done will become zero. The day one leakage can spoil your career, can spoil your department. One leakage is sufficient. So I always say, for a public health engineer, the first thing I emphasize is leak. Then some my colleague asked me the second. Yes. Second is chlorinated. Second is chlorinated. If these you maintain these two on daily basis, you adhere to this for this, what you should. And then I told in my department, since last say more than 25 years, when I joined service, someone asked me, you keep this record in your almirah, then people will come, will salute you. And I was a little bit idealistic boy at that time. This gentleman is showing me a wrong path. And that was the day I adopted one day norm when I joined my service. One day norm means do your daily work daily. Do your daily work daily. This I called it one day norm, ODN. Why I am saying no? I am not saying I am making a law. I am getting it a law. I am saying your conscience should be, I will do my daily work diligently every day. Diligently every day. And during my training to my colleague, my staff, I say adopt one day. One day now means if your supply fail, repair on that and on in a one day. If your leakage is there, repair in one day. If your chlorination is out of order, restore it in one day. So this is my one day no. I am saying one day no. If every public health engineer adopt it, I can vouch you will be always in good esteem in the public. Your image will be a high step. If some person come to you and say, I am getting dirty water, and you tell him, okay, I will do today. And even if you take 2 days, he will be happy. Okay, yes, this gentleman has done a great job. When I went to him, he responded positively and he acted diligently and he completed his job in a day or two. So, one day law is the real game changer for public health engineering. You have to only manage the soap. And for this, money is not the problem. Problem is man management, human management. Problem is really we as an engineer are not attuned to this. What I usually say, if you don't adopt one day law, then some more people will come. They will agitate, then agitation, they will get the department, they will make the bad light of the department, bring the department in bad light, simply because of one, two leakages or water supply failure. So another I say, usually we don't have this second part, standby arrangement. Keep a standby arrangement. Always keep a stand.
an essential service. Water supply is an essential service, so we should always keep our standby in working order. In working order, you must be designing standby arrangement. Yes, we failed at many occasions where even standby or motor are not working. When only one motor was running, standby was always out of order. And when something happened, then whole water supply disrupted. So disruption in water supply system is the real pain point for public. Disruption of water supply, then I told leakage, then I told chlorination. If you keep these 3 points in uh, mind and actually act on these points, you will realize, oh, this was so simple. Why we have not adopted these system improvement earlier? Now, uh, my this talk will be useful if you adopt these 3 points on daily basis. Now I, how much time I have now? Now we can have questions from you. Any type of question, any type during your life long career, you have good experience. I am saying that. I want to share with you on your question. On your question, I want to share you the knowledge I have gained during my whole career. Now I am nearing to retirement, so I want to give back to my colleague, to whatsoever we can give back to society. So you can have question. Thank you. You listen patiently. You can have question. This will be a great pleasure for me to address your day-to-day difficulty, or I am not saying that I know all, but we can at least share and come out with some solution to your problem. Thank you. Thank you, Engineer D.R. Yadav, for formally inaugurating this training program and setting the tone and vision of the program. Thank you very much, sir, for your very presence. May now please request Colonel Dalbir Singh, General Manager, Training and Consultancy, Maxipa, to present a token of appreciation to Engineer D.R. Yadav. Colonel Dalbir, please. Thank you. Thank you very much. Thanks for coming, sir. Thank you. Thank you. May I also please request Colonel Dalbir to present a memento to Shri Dhanesh Chandra, Training Coordinator, Haryana, who has joined us. Colonel Dalbir, please. Thank you so much. Thank you. ये जो Mr. Dinesh Sarni, I have given him training charge, training in charge. In fact, I have made him. He is also a great leader in our department. And I forgot to mention him today. He spoken a word to dissemination. Then I told him, yes, this is the appropriate word, disseminate. Disseminate what we have learned here. Dissemination. Today, when we are coming together, he told me a word, disseminate. Then I said, congratulations, this is the most appropriate word for the training dissemination. Thank you. With this note, I request Dr. Pramod Kumar Kalia, Consultant KRC, NJJM Maxipa, to accord a vote of thanks. Dr. Pramod Kalia, over to you. Respected Engineer D.R. Yadav, Engineer in Chief, Public Health Engineering Department, Government of Haryana. Respected Sani ji, SCPHED, respected ADS Sapola ji, Senior Drinking Water Consultant, UNICEF, eminent speakers, nodal officers, and the most important, all participants who have joined us today for a one-day training program on project management, financial management,
for regional schemes in rural area under JJM. It has been our proud privilege to have Engineer D.I. Yadav, sir, amongst us. And, sir, your thoughtful and very inspiring words would certainly go a long way to install a confidence among our engineering fraternity to do their best job efficiently and effectively and make the Jal Jeevan mission a success. In your address, sir, as you mentioned, that efficiency is one of the criteria which on which we just sometimes we take it very casually, but that is the most important. And all the projects hangs on efficiency also. So I'm sure with your kind words, will definitely go a long way. Thank you very much for inspiring and giving a thoughtful. Thank you. I'm very thankful to Shri Dinesh Saini also that he has graced the occasion by escorting engineer sir, engineer chief sir, and thank you very much sir for having in here. Thankful to all the eminent speakers who have joined us now and will be carrying their proceedings in today's. Thank you very much, all the eminent speakers. I'm also thankful to all the participants from different states of Haryana, Punjab, J&K, Ladakh, and Chandigarh who joined us today. We're having a lot of deliberations, project management, and on social management. Very key. Project execution. The financial component is very important component. So we are given emphasis on this. I'm very thankful to all the participants for joining us. Last but not the least, and also thankful to all my colleagues at KRC team also to building up this environment so that we can have a meaningful and purposeful one-day trip. So thank you very much. Thank you very much. Back to Nitika. Thank you, Dr. Pramod Kalia, for your fond regards, sir. Thank you very much. Thank you. Thanks. Thank you. Thank you. I will just starting our training after the negotiation session. We'll just join it, please. Stay joining, please. In 2 to 3 minutes, we will begin with our technical sessions. I would request you all to kindly be with us and kindly put your videos on enable mode. It is compulsory and it is a humble request to keep your videos enabled. Thank you. Thank you, Nitika. And we're just sorting. I just said the Polar sir, have you joined it? We are going to have our first session, and in the meantime, Nikita, am I audible? Yes, sir, you're audible, sir. I think I cannot see the Bola, sir, on board.
if you would please call him, sir. Uh, Respected participants, sorry for the inconvenience. The Pola sir is joining us soon. And in the meanwhile, I would request you all to kindly enable your videos, please.
हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए सब, मेरा जब पीपीटी लगा दें। नमस्कार। कालिया साहब, फिर मैं पीपीटी लगा देंगे। कैन यू हियर मी? हेलो, यस, गुड मॉर्निंग द पोलर सर, यू आर ऑडिबल सर। आई आप एम सुन रहे हैं? कॉलिंग। हाँ जी, हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। एक मिनट में सर इन्फॉर्म कर रही हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही मेरी? अच्छा अच्छा, ठीक है। आपके वहां से नहीं आ रही आवाज। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी पार्टिसिपेंट का स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, बेसिकली पार्टिसिपेटरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे बात करने जा रहे हैं। जो क्योंकि वही पुराने लोग, मेरे ख्याल से मुझे काफ़ी ओल्ड फेसेस दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेरी बहुत सारी बातें तो मैं आपसे कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ एक दो स्लाइड में मैं रिपीट करूंगा, फिर आपको कुछ नई बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट। तो जैसे कि मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, अब आप क्योंकि 2 बार ट्रेनिंग में आप रह चुके हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल जीवन मिशन जो प्रोजेक्ट है वो बॉटम अप अप्रोच का प्रोजेक्ट है, न कि टॉप डाउन अप्रोच का। बॉटम अप अप्रोच से मतलब है कि कोई भी विलेज एक्शन प्लान है वो ग्राउंड लेवल पर बनेगा। जो ग्राम पंचायतें हैं और VWSE है, गांव वाले हैं, वो सब मिलके जो है विलेज एक्शन प्लान बनाएंगे और उसको फिर ऊपर से उनकी फंडिंग और टेक्निकल सपोर्ट उनको स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार देगी। दैट्स वाई, और सेम जो उनका प्रोजेक्ट है उसी प्रोजेक्ट को अप्रूव करके उनको दिया जाएगा, जो कि उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है। नेक्स्ट प्लीज। तो यहाँ पर हम उस दिन बात कर रहे थे, कोई सज्जन इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? हेलो। तो इसमें आपने देख, हाँ, बैक बैक, हाँ। तो इसमें आप देखें कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम आम आदमी को नहीं शामिल करते हैं अपने डिस्कशन में उसमें। तो बड़ी समस्या उससे हो जाती है, क्योंकि आम आदमी जो है, जो उसको उस सर्विसेज को यूज कर रहा है डे टू डे बेसिस पे, वो उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से जानता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो वो पानी लेके जो बंदा आ रहा है, उसको मालूम है कि यार लीकेज बंद कर देंगे तो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट में इसी बात का ध्यान रखा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें न कह के, जो आम बातें हैं, जो रूरल एरिया के जो गांव के लोग हैं, जो जिस सॉल्यूशन को वो चाहते हैं, वही सॉल्यूशन उनके लिए किया जाए। नेक्स्ट, आगे बढ़ा दें। नेक्स्ट, हाँ, पीछे करें ना। कहाँ? इतने आगे क्यों नहीं जा रहे? पीछे पीछे पीछे। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट जो है, ज़्यादा इसको हम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बोलते हैं, बल्कि ये हमारे उसमें ज़्यादा सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट ज़्यादा है।
हाँ सर, वो उसमें जो उसको आगे पीछे कर रहा है ना, उसको जरा समझा दें। ओके। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट ज़्यादा है, जिसमें लोग अपनी बात भी इसमें रखते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, और उनकी बात सुनी जाती है कि वही अपनी बात रखते हैं, बाकी हम लोग उनकी बात सुनते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। तो ये इसमें विशेष रूप से ध्यान करने की बात है। तभी इस बात को आप यदि अपने ज़हन में रखेंगे, जब गाँव वालों के साथ बात करते हैं, उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, तो तभी आप एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर पाएँगे। जल जीवन मिशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए ऐसा कोई टूल नहीं है, जो जनरल बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और ये सब टूल की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है। ये तो टूल जो है गाँव के लोगों ने स्वयं अपना टूल बनाया हुआ है, नेचुरल टूल है, और जो नेचुरली आपको उनकी बातों को समझते हुए आप प्रोजेक्ट को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट। पहले भी बात किया है हमने, ये बात मैंने कह दी है, आप इसको आगे बढ़ा दें, नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो मोस्टली आप इसमें देखें, जरा सी इसको गौर से देखें, यहाँ पर ये मोस्टली दे आर द इंजीनियर्स, और जो नीचे पीछे बैठे हुए हैं वो गांव के लोग हैं। वो कह रहे हैं बहुत सिंपल सा सिस्टम हमको चाहिए, बहुत टफ सिस्टम नहीं चाहिए। तो हमारे प्रोजेक्ट में पानी देने में सबसे इजीएस्ट सिस्टम हो सकता है कि हम एक ग्रेविटी सिस्टम, ये पॉसिबल है तो ग्रेविटी सिस्टम लोगों के लिए बनाएं, स्प्रिंग से बनाएं या किसी रिवर से बनाएं, या कोई सोलर पंपिंग स्कीम उनके लिए बना दें। दो स्कीमें मेजरली होती हैं, या ग्रेविटी होगी या पंपिंग होगी। तो दोनों सोलर में भी, सोलर से भी यदि आप स्कीम बनाते हैं तो बहुत सस्ती होगी और उसका मैनेजमेंट करना आसान होगा। नेक्स्ट। अब ये रिफॉर्म करने की जरूरत यहाँ पर है। नेक्स्ट। चेंज, रिफॉर्म मीन्स चेंज करने की जरूरत है। हमको इंजीनियर्स को ट्रेन करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। यदि इसमें क्योंकि पानी का इशू ज़्यादातर महिलाओं से रिलेटेड होता, तो यहाँ पे दिखाया गया कि महिला ही जो है गांव के जो इंजीनियर्स का ट्रेनिंग कर रही है, भाई हमको क्या चाहिए और आपको कैसे करना है। और इंजीनियर्स को तो खाली उसको फॉर्मुलेट करना है, या उसको उसके फंड अरेंज करना है, या उसको डीपीआर शेप में लेके आना है, जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू उसको उस शेप में लेके आना है। बाकी तो डिसीजन गांव के लोग लेंगे, और स्पेशली महिलाएं उस डिसीजन को लेंगी। ये रिफॉर्म की बात है, आपको प्रमोट करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको खाली नीचे बैठ के इसमें दिखाया, ऐसा नहीं, बल्कि प्रमोट करना है कि अब महिलाएं अपनी समस्या को बताएं, और वही एक्चुअल समस्या होगी और वही उसके एक्चुअल सॉल्यूशन भी होंगे। नेक्स्ट। यहाँ पर एक ये पैरेटो प्रिंसिपल है, इसको 80-20 प्रिंसिपल भी बोलते हैं। लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि यदि हम लाइफ में, आप अपनी जिंदगी में ये देखें कि 20% इनपुट जो है 80% आउटपुट देता है। थोड़ा सा आपका एक ध्यान इस जो ऊपर हमने बातें कही हैं, टॉप डाउन अप्रोच है, महिलाओं को फोकस करना है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि सोशल प्रोजेक्ट, इनका ये लगभग 20% है। इसको आप ये ध्यान में रखेंगे तो आपका 80 पूरा प्रोजेक्ट जो है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रोजेक्ट पूरा मैनेज आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको टॉप डाउन अप्रोच को छोड़ के बॉटम अप अप्रोच पे ही ध्यान देखना है। ये पैरेटो प्रिंसिपल बड़ा टेस्टेड प्रिंसिपल है, जिसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं। और 20% कॉन्सिक्वेंस, नीचे ट्रायंगल में देखें, 20% कॉन्सिक्वेंसेस जो है, कॉजेज जो है 80% कॉन्सिक्वेंस को जन्म देते हैं। मीन्स मान लिया आप एक थोड़ी सी गलती कर देते हैं, 20% गलती कर देते हैं, तो वो 80% आपका काम खराब हो जाता है। तो ये इफेक्ट एंड रिजल्ट, 20% आप इफेक्ट होता है तो उसका जो है 80% उसके रिजल्ट्स होते हैं, बेटर रिजल्ट होते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्याओं से हम लोग जूझते हैं। स्टाफ की कमी है, फंड्स की कमी है, इन सब बहुत सारी समस्याओं से हम जूझते हैं। लेकिन उसको हम एक सही तरीके से उसका प्रयोग करें तो हमारे जो है अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, उसको सही तरीके से सही समय पे और सही जगह पे उसको प्रयोग करना, और लंबे समय तक उसके स्थायित्व के लिए हम प्रयोग करते हैं तो वो सर्टेनली उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल प्रोजेक्ट में क्या क्या होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए कुछ आपकी नई स्लाइड्स शुरू होंगी, तो इसको थोड़ा सा हम और ध्यान से देखते हैं।
प्रोजेक्ट एंड एक्शन, कुछ प्रोजेक्ट होगा उसका एक्शन होगा, ये हमारा एक कंपोनेंट होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक उसमें कंपोनेंट होगा। अप्रेजल एंड सम प्रोडक्शन, मीन्स कोई चीज बन रही है उसका और अप्रेजल भी हो रहा है, इस बात का एक उसमें जिक्र होगा। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात करेंगे हम, हमारा 30 साल का प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है और वो प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो 30 साल तक चल सके। प्रोजेक्ट फेजेज में है, हमारे प्रोजेक्ट में 3 फेजेज में ब्रॉडली हमने इसको बांटा है, प्लानिंग फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज एंड ऑपरेशन मेंटेनेंस फेज या पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज। प्रोजेक्ट इंटरफेस अलग अलग, आपके प्रोजेक्ट का इंटरफेस कन्वर्जेंस है बेसिकली, अलग अलग मनरेगा से, 15 फाइनेंस कमीशन से, और जो आपका मिनरल डेवलपमेंट फंड है उससे, एसबीएम से, ये आपका प्रोजेक्ट का इंटरफेस इसमें आपके प्रोजेक्ट में रहेगा। अब अल्टीमेटली प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप उसका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग करते वक्त ये कोई इशू आपको दिखता है तो प्रोजेक्ट को आपको फिर एक बार दोबारा उसके बारे में रीथिंक करना चाहिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, बार बार बीच बीच में जहाँ जहाँ आपको कमियां मालूम पड़े आप उसको दोबारा दोबारा सोच के उसको वो करते हैं, ये प्रॉपर मॉनिटरिंग। और कंट्रोल में आता है कि आपका फंड का कंट्रोल, आपके प्रोजेक्ट का शेड्यूल का कंट्रोल, आपके टाइमली जो सप्लाईज हैं उसके पहुंचने का कंट्रोल, और कॉन्ट्रैक्टर को लेबर मिलने का कंट्रोल, आपके पेमेंट्स जो होने हैं उस पर कंट्रोल, ये सारे कंट्रोल चीजें आ जाती हैं। और उसकी रिपोर्टिंग में कंट्रोल, और लोगों को इन्वॉल्व करने में आप उसका कंट्रोल, ये सारी चीजें कंट्रोल उसमें आ जाती हैं। और फाइनली हम इस सब प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमको एक ही डैशबोर्ड पे, एक ही सामने जो है पूरे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स ये हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वह प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमआईएस सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यदि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के यदि डैशबोर्ड को आप देखेंगे तो उसमें पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वही एमआईएस है। आपको हर चीज एट ए ग्लांस, एट ए टाइम आपके सामने मिल जाती है। एक ही साथ जब सब चीजें मिल जाती हैं, एक ही स्क्रीन पे मिलती हैं, तो आपको निर्णय लेने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। और यही आपको, यही बेसिकली एक प्रोजेक्ट कंट्रोल आप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसी के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपका या तो स्टेट का एमआईएस सिस्टम बना होगा तो ठीक है, उससे आप करिए, लेकिन स्टेट का एमआईएस सिस्टम नहीं बना है तो नेशनल लेवल पे जो हमारा एमआईएस सिस्टम बना है उसके माध्यम से आप अपना प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें जो भी डेटा है आप लगातार उसमें डेटा, जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको फीड करते रहिए, और उसके उस डेटा के बेस पे एनालिसिस होके वो रिजल्ट्स आपके सामने आते रहेंगे। और उसमें कोई पासवर्ड और ये सब चीजें नहीं, ये ओपन टू पब्लिक है। आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक भी देख सकती है, तो आप भी देख सकते हैं, उसी से आप अपना प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा एक ऐप भी बनाया गया है, गूगल में है वो ऐप अवेलेबल है, जेजेएम ऐप करके। उसमें बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं, आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन उसमें मिलेगी और बहुत सारी चीजें अपलोड कर सकते हैं। आपके वाटर सोर्स का, यदि आपने इस वाटर सोर्स का मेजरमेंट कर दिया तो वहां पर उसको तुरंत डाल सकते हैं, उसको जियो टैग कर सकते हैं। आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनको जियो टैगिंग कर सकते हैं और एमआईएस में अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपका वो प्रॉपर रिपोर्टिंग भी उसकी होती रही। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, ब्रॉड पॉइंट्स थे, जिनको हम हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में उसको में शामिल रहता है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये जल जीवन मिशन देखिए, 19.43% जो टोटल फंक्शनल हाउस होल्ड कनेक्शन अभी हमारे उसमें थे, जिसमें आप देखिए अलग जगह पर गुजरात में देखिए 75% से ज़्यादा हैं। तो जो कलर है उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये जैसे यूपी है तो आपका यूपी में है 0 to 10% कनेक्शन थे। तो इस तरह से आप इसका एक ब्रॉड आपको नेशनल लेवल पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट। अब ये जो 19.3% हो गया था, अब ये हमारा 45% पहुंच गया। ये जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था उस समय था। अब देखिए प्रोजेक्ट का, मैं आपको प्रोजेक्ट का फंडिंग पैटर्न क्या है। नॉर्थ ईस्ट के लिए 90-10 है, हिमालयन स्टेट और यूटीएन किसी लेजिस्लेटिव उसके लिए, और 50-50 है अदर स्टेट के लिए, और 100% फंडिंग है यूटीज के लिए। 100% है, 50-50 अलग, जैसे पंजाब के लिए आपका 50% या लेह लद्दाख के लिए 90-10 होगा। यूटी है लेह लद्दाख तो वो 100% वहाँ पर फंडिंग का प्रोविजन है।
और इसमें इंसेंटिव फंड टू प्रोवाइड स्टेट हु परफॉर्म्स बेटर, जो स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। और रिम्बर्समेंट होगा, ये टोटल रिम्बर्समेंट में कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन 5% जो है कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन रिम्बर्स किया जाएगा, जो O&M के उसमें जाएगा। यहाँ पर आप क्राइटेरिया, ये सब क्राइटेरिया जो फंडिंग का क्राइटेरिया वो कैसे निकाला गया, रूरल पॉपुलेशन का 30% वेटेज लिया है, रूरल SC पॉपुलेशन का 10% लिया है, स्टेट्स अंडर DPD ये सब HADP ये कैटेगरी जो हिल स्टेट इनका रूरल का इसका 30% लिया है। पॉपुलेशन जो IMS के हिसाब से उसमें लिया गया है, इनको हैवी मेटल्स जो भी कंटामिनेशन वाला अफेक्टेड एरिया था उसका 10%, और वेटेज फॉर द बैलेंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड कनेक्शन को हमने 20% लिया। ये एक कैलकुलेशन है, उसमें जाने की जरूरत नहीं, उसके बेस पे ये जो फंडिंग पैटर्न इसका निकाला गया है। नेक्स्ट प्लीज। और ये जो है वो हमारी वेबसाइट पे भी ये कैलकुलेशन आपका अवेलेबल है। अब इसमें रिलीज ऑफ फंड कैसे होगा, देखिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने में आपको फंड की जरूरत पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर जो सोचता है, कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल बिजनेसमैन होता है, यदि उसको लगता है कि मुझे इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, नहीं होगा तो नहीं लेता है, चाहे वो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो, ये कितना प्रेस्टिजियस हो या चाहे कितना ही खराब हो। तो बहुत ही बिजनेस माइंडेड वो आदमी होता है। तो उसके लिए मनी, टाइम इज मनी, ये सही समय पे आपको उसे उसको आप पैसा दे देते हैं तो वो आपका प्रोजेक्ट जो है जल्दी कंप्लीट भी कर सकता है। एनुअल एलोकेशन इसमें होता है, विल बी सैंक्शनड 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इसमें देते हैं, आप उसका रिम्बर्समेंट बेसिकली लेते हैं। इंस्टॉलमेंट टू बी रिलीज 2 ट्रांचेस बेस्ड ऑन यूटिलाइजेशन होगा, PFMS के थ्रू पूरा यूटिलाइजेशन सबमिट होगा। रिलीज प्लान टू अवॉइड एनी अंडर पार्किंग ऑफ द फंड, अंडर पार्किंग इसमें पॉसिबल नहीं है। पहले फंड्स ये होता था सेंट्रल गवर्नमेंट से चला जाता था और स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ यूटिलाइजेशन उसका दे देती थी, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ था, वो पार्क कर देती थी कहीं दूसरे अकाउंट में उसको ट्रांसफर करके, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपको सामने आपका खर्च होगा वही आपको मिलेगा भी। ओनली सिंगल नोडल अकाउंट होगा फॉर द JJM फंड, स्टेट का एक सिंगल, बहुत सारे पहले अकाउंट्स भी बहुत सारे बना देते, अब सिंगल एक अकाउंट होगा जो PFMS के थ्रू जुड़ा रहता है, और उसी में जो है जो मोबिलाइजेशन एडवांस है वो सब उसमें रहता है। नो एडवांस पेमेंट विल बी अलाउड, आप उसको एडवांस पेमेंट भी उसमें से नहीं ले सकते हैं, ये ध्यान रखिए। तो आपको पहले रिम्बर्समेंट बेसिकली होगा अल्टीमेटली। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है, नेशनल लेवल पे NJJM है, स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन है। आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाटर होते हैं वो इसके चेयर करते हैं, और कभी कभी सेपरेटली अफसर भी इसके लिए रखा रहता है, मिशन डायरेक्टर इसमें होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन कमेटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करिए, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके इंचार्ज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके इंचार्ज होते हैं, जो पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, वहाँ पर हैंडल करते हैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उनके एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, वो मेंबर सेक्रेटरी मोस्टली आपके निगम से या उससे ही वहाँ पे होते हैं वो ऑफिसर्स, और वो जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और उन लोगों को वहाँ पे हेल्प करते हैं। एक सेकेंड प्लीज। वो तुरंत उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हेल्प से वो प्रोग्राम को करते हैं। वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लगातार मीटिंग लेते रहते हैं, और स्टेट लेवल पे भी मीटिंग होते रहती है। और इसमें एक है ग्राम पंचायत, लोएस्ट लेवल पे ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत है, उसकी सब कमेटी होती है, यूजर ग्रुप है, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी, और पानी समिति उसकी सब कमेटी होती है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही है। तो इसको बहुत सारे लोग समझते हैं कि BWC कैसे सर कर सकती है, और या पानी समिति कैसे हैंडल कर सकती है, तो वो ऑफिशियली साइन भी कर सकते हैं, तो उनके जो साइन होंगे वो भी ऑथराइज होंगे, जो कि बट लेकिन वो सिलेक्शन होगा इसके अंडर में, ये ध्यान रखिए, उसका प्रोसीजर है। आप ग्राम जो पंचायत राज अधिकारी होता है उससे डिस्कस करेंगे तो उसका प्रोसीजर है। लेकिन इसमें ठीक है, पंचायत राज अधिकारी इसमें रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको एडमिनिस्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है।
वो काम करेगा, लेकिन उसको पुश करना, उसको परस्यू करना, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। यहाँ पर ISA एक एजेंसी लाई गई है जो आपको उन सब चीज़ों में मदद करेगी। जाके आप उससे कहेंगे तो वो उस विलेज में, क्योंकि हर विलेज में तो आप बात कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे विलेजेस हैं, तो वो अलग अलग विलेजेस में जाके वो सब इनको परस्यू करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हो सकता है, रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो सकता है, कहीं पर इसको हम यूपी में जल निगम बोलते हैं, उत्तराखंड में पेयजल निगम बोलते हैं, साउथ में सब मोस्टली सभी जगह PHED बोलते हैं, कहीं पर रूरल वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट करते हैं। तो ये, और हम इसमें बहुत सारे पार्टनर है, जैसे UN एजेंसी हैं, जिस UN एजेंसी से जैसे मैं हूँ, यूनिसेफ से हूँ, तो इसमें ये भी टेक्निकल सपोर्ट करते हैं। और इंटरनेट डेवलपमेंट एजेंसी हैं, फाउंडेशंस हैं, टाटा ट्रस्ट है, इसमें बहुत बड़ा काम पूरे इंडिया में टाटा ट्रस्ट ने बहुत सारे विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है, उसमें वो काम कर रहे हैं। उसके लिए उनको कोई पेमेंट नहीं होता, कोई पैसा नहीं होता, वो अपने पैसे से ये सब काम करते हैं। इवन आप अपने स्टेट में भी टाटा ट्रस्ट वालों को एक लेटर लिखिए कि सब हमारे इन विलेज में थोड़ा सा हमारी मदद कर दिए, तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो कुछ मना करेंगे, वो तुरंत वहाँ पर जो है स्टेट की रिक्वेस्ट पे आके आपको बहुत सारे लोगों की टेक्निकल हेल्प कर देंगे, या एज ए ISA वो वर्क कर देंगे, या आपको कुछ टेक्निकल सपोर्ट दे सकते हैं। ये वो करते हैं, वो उनका फिलैंथ्रोपिक वो है। ट्रस्ट हैं, बहुत सारे ट्रस्ट इसमें काम करते हैं, NGO, CBO, कॉर्पोरेट्स हैं, CSR फंड भी इसमें यूज होता है। और ISA जैसे मैंने बोला, ये ISA आइडेंटिफाई किए गए हैं, आप ही के द्वारा ये ISA आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनका काम जो है बेसिकली आपकी मदद करना है और गांव को मोबिलाइज करना है। नेक्स्ट। तो ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? जरा हाथ खड़ा करें तो, इफ इट इज इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग है, चलिए। कहीं पे कुछ चेंज आप और कुछ चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको तुरंत वो बात भी बताऊंगा, आपकी क्लियर चीजें क्लियर होंगी। जितनी ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगी और जितनी ज्यादा आपके काम में क्लियरिटी होगी, नॉलेज में, तो उतना बढ़िया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का आप कर सकते हैं। मैं तो मतलब मैंने भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किए हैं, लेकिन उसमें मतलब मेरा तो फॉर्मूला ये था कि हम इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करें अपने काम को कि एज ए मैनेजर मेरे पास कोई काम नहीं हो। तो मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट मैनेजर है जिसके पास अपना खुद काम करने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उनसे काम लेता है, क्योंकि आपके लिए आइडेंटिफाइड लोग हैं। जो काम आपका नहीं है उसको आप क्यों करते हो? उसके लिए तो आपको परस्यू करना है दूसरे को, भाई ये काम करके दो, ठीक है। स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन का काम है ओवरऑल कोऑर्डिनेशन। कंपोजिट SWSM विल एज पर गाइडलाइंस के लिए बनेगा। इसको भी एक्टिवेट, बहुत जगह पर एक्टिवेटेड है, बहुत जगह पर एक्टिवेटेड नहीं है, ये कम एक्टिवेटेड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन JJM इन द स्टेट उसकी मेन जिम्मेदारी है। सबमिशन ऑफ द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट करना और IMIS में पूरा डेटा फिल करवाना, ये सब उसका है। थर्ड पार्टी ISA, NGO मीन्स ISA, और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी को इम्पैनल करना उसका काम है। ये ISA और TPA जो है आपके एक्सटेंडेड हैंड है बेसिकली देखा जाए तो। ये ISA तो पूरे गांव को मोबिलाइज करना, डेटा कलेक्ट करना, कोई डेटा वेरिफिकेशन करना है उसको करना, कितने लोगों को पानी मिला, कितने लोगों को टैप नहीं मिला, इसका वो करना, वो सब इंफॉर्मेशन लाके आपको देगा। तो इनको आप एज ए अपने एक्सटेंडेड हैंड के तौर पे यूज करिए। बहुत जगह पे मैंने देखा कि इनका प्रयोग वो नहीं कर रहे हैं ISA का प्रॉपरली, कि उनको डर लग रहा है कि पता नहीं इनके पास इंफॉर्मेशन चला जाएगा, ये चले जाएगा। कुछ नहीं, कोई हमारी पूरे IMIS को आप देखेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन JJM की, हर विलेज की इंफॉर्मेशन पब्लिक उस पर है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। कोई भी आदमी चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे वो जापान में बैठा हो, चाहे वो हिंदुस्तान में तमिलनाडु के किसी गांव में बैठा, वो अपने गांव को दूसरे के गांव को भी एक्सेस कर सकता है, सारी इंफॉर्मेशन है। तो ISA से आप मैक्सिमम काम लीजिए। आप आपको इतना बढ़िया प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए कि ISA से आप मैक्सिमम काम। दूसरी साइड थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी, मान लिया पीछे थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी का काम है कि वो आप जो क्वालिटी ऑफ वर्क वो चेक करेगी, ये उसकी जिम्मेदारी है। मटेरियल चेक करेगी, जब आप टेस्टिंग करेगी वो सब इंफॉर्मेशन आपको देगी, और ये उसकी जिम्मेदारी है, तो उसका भी आप पूरा प्रयोग करिए। अच्छा, एक DWSM बना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये DWSM इसलिए बनाया गया है, और वो भी जिलाधिकारी के उसमें, कि जिलाधिकारी एक पावरफुल आदमी होता है,
उसके अंडर में आप सीधे ये काम कर रहे होंगे तो आपके बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन अपने आप ही हो, लैंड के इश्यूज हैं, कोई झगड़ा है वो सॉल्यूशन कर देगा। आपको उनके पास अपनी चीज़ें लेके जानी है। ही इज़ बिज़ी मैन, बहुत सारे मतलब 100-200 कमिटी के चेयरमैन वो होते हैं, लेकिन हर एक आप सोचोगे कि यार हमारे लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं ये हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, तो ऐसा नहीं है। आपको जाना पड़ेगा, सर ये समस्या है, वो खट से सॉल्यूशन देगा। तो ये एज ए सॉल्यूशन मेकर वो वहाँ पर आपके लिए हैं। उनको वहाँ पर आप पीएमयू भी रख सकते हो। कहीं बहुत सारे स्टेट में हमने देखा कि 1-2 लोग उन्होंने डीडब्ल्यूएसएम स्तर पर रखे, वो उनकी मदद करते हैं, मतलब बेसिकली आप ही की मदद वो करते हैं। और थर्ड पार्टी को सपोर्ट करना, उसका पेमेंट करना और ये सब काम जो है डीडब्ल्यूएसएम का। नेक्स्ट, और लास्ट में हम बीडब्ल्यूसी बोलते हैं, बीडब्ल्यूसी पानी समिति या ग्राम पंचायत। इनका बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी फॉर प्लानिंग, डिजाइनिंग, स्कीम इम्प्लीमेंटेशन असिस्टेड बाय द एनजीओ, मीन्स आईएसए के द्वारा वो होगा, लेकिन ये अपने गांव में आईएसए की मदद से पूरा मोबिलाइजेशन करेंगे। इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और उसको प्लानिंग करना, उसका विलेज एक्शन प्लान बना, ये जो है बीडब्ल्यूसी का काम होगा उसमें, लेकिन आप और आईएसए उनको सपोर्ट करेंगे, आप ही के सपोर्ट से वो करेंगे। मोबिलाइजेशन कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, जो भी कंट्रीब्यूशन 10 से या 5% जो भी है अलग अलग स्टेज जगह पे, तो वो जो है मोबिलाइज 10% तो नॉर्मल कैपिटल कॉस्ट पे है, नॉर्मल उसमें, और 5% है हिली और जो और प्लेसेस हैं अदर देन प्लेन, वहाँ पर 5%। फैसिलिटिंग कलेक्टिंग द वाटर टैरिफ, जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन करना है, एक तो कैपिटल कॉस्ट में होगा और एक जो है वो 10% या 5% होगा कैपिटल कॉस्ट में। और उसके अलावा गांव वाले ही बैठ के ये तय करेंगे, आपके साथ मिलके तय करेंगे कि जब परियोजना बन जाएगी तो डे टू डे ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए कितना रुपया आप वो पर परिवार से जमा करेंगे। तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली जगह जगह पे बात करते हैं तो कहीं पर वो 60 आता है, कहीं पर 100 आता है, कहीं पर 160 भी है, कहीं पर वो पूरा साल का एक साथ लेते हैं, अलग अलग जगह के अलग अलग नॉर्म से। तो वो पैसा जो आप लेते हो वो उसके अब बीडब्ल्यूसी के अकाउंट में आपको डालना चाहिए, और वहीं से वो उसको छोटे मोटे मेंटेनेंस करेंगे। और वो भी ऐसा नहीं कि आप वहां से अलग, आप अलग नहीं हो, इसमें एक कहीं कहीं पे मैं देखता है हैंड ओवर की बात होती है। वो हैंड ओवर ठीक है, एक वैसा हैंड ओवर है वो, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। आपको आपने अब वहां पर आप बार बार जाने की जरूरत नहीं, भाई ठीक है 1-2 महीने में जब काम हो गया तो आप विजिट करें, देखें सब ठीक चल रहा है, सब ऑनलाइन होगा, आपके पास सारा डिटेल आता रहेगा, सेंसर बेस्ड सिस्टम लगा रहेगा, आपको सब मालूम पड़ता है। वो एज ए मैनेजर आपको उसे ओवरसी करना है। नेक्स्ट प्लीज। और कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन और ओएनएम भी उनको इंश्योर करना। अब देखिए इसमें एक मेजर कंपोनेंट है एफएससीसी, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। पानी का नल दे देना एक बात होगी, भाई टैप कनेक्शन दे दिया आपने, फंक्शनल तो बोला नहीं, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल वर्ड जुड़ा, मीन्स उसमें पानी आना चाहिए। 55 एलपीसीडी ऑफ क्वालिटी वाटर उसमें आना चाहिए। प्रिस्क्राइब क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मोस्टली वी यूज द टर्म प्रिस्क्राइब क्वालिटी एंड क्वांटिटी का पानी उसमें होना चाहिए। अब वो सवेरे 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, दिन में 1 घंटा हो सकता है, या सवेरे 1 घंटा हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। और लेकिन 55 एलपीसीडी उनको दिन में मिलना चाहिए, और ये डिपेंड कर धीमे धीमे हम वाटर सोर्स को चार्ज करने की भी बात करते हैं, तो उससे भी फायदा होगा। अब आप देख रहे हैं कि क्लाइमेटिक चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, इतने बहुत बड़े बड़े ये फ्लड आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हमें इस पानी को प्रॉपरली रेगुलेट करें। अब स्टेट गवर्नमेंट ये देख ऐसा कोई पॉलिसी बनाए, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करे, तो मुझे नहीं लगता कि पानी का शॉर्टेज होगा। तो इसमें प्रिस्क्राइब क्वालिटी में BIS 10500 को आपको वो करना है, रेगुलर बेसिस पे आपको देना है। नेक्स्ट प्लीज। फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, जो हम बात कर रहे थे, सर्विस डिलीवरी लेवल पे हमको फिजिकल फाइनेंस वो करना है, उसके लिए सिंगल विलेज स्कीम है, पाइप वाटर सप्लाई स्कीम, स्टैंड पोस्ट, सेंसर उसमें लगेंगे, वहां पर आपको विलेज पे सेंसर लगाना पड़ेगा। मैं आपको जैसे पहले बताया था कि 10 पायलट टाटा ट्रस्ट ने पूरे इंडिया में करे, उसके बाद अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100 पायलट पूरे इंडिया में वो कर रही है, जो मॉनिटर करेंगे, ऑनलाइन मॉनिटरिंग सारा होगा आपके मोबाइल पे, आपको आपके विलेज के बारे में, जहाँ के जिस एरिया को आप देखते हैं वहाँ के बारे में सारा डिटेल आएगा भविष्य में। और इसको आप देखना चाहते हैं तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं।
मल्टी विलेज स्कीम में बल्क मीटर लगेगा कि इन विलेज स्कीम तो होगी कि पूरे उस गांव के अंदर ही सोर्स है और वहीं से वो है। ये तो कोई मल्टी विलेज स्कीम है तो बाहर से पानी लाया जाएगा और पानी के उस विलेज के किनारे पे कहीं पे एक स्तंभ बना के वहां से उस पानी को फिर देंगे और उसको हम इन विलेज स्कीम मानते हैं। ये अच्छा, दूसरा फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस IMIS पे आएगी, BAPs, DAPs, SAP अपलोड होंगे, विलेज एक्शन प्लान, डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान, स्टेट एक्शन प्लान वो होगा और फाइनली स्टेट वाइज एनुअल एक्शन प्लान बनेगा। ये एनुअल एक्शन प्लान जो है हमारे यहाँ पे DWSM सेंट्रल लेवल पे ये आता है, स्टेट गवर्नमेंट इसको भेजती है और फिर यहाँ पर इसको डिस्कस किया जाता है, उसमें देखते हैं कि क्या है, उसके बेसिस पे जो है आपका फिर ये अप्रूवल यहाँ से सैंक्शन जारी होती है और फंड की जो पहली किस्त है वो दी जाती है। तो मैं अभी कल भी बात कर रहा था कि इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपकी स्कीम बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होनी चाहिए, सिंगल विलेज लो कॉस्ट की स्कीम होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं है तो वो यहाँ पर आके फाइनली फिर उसमें काट छांट हो जाती है और उससे बचने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत आपने की है, उससे बचने के लिए आपको जो है पहले से ही इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। और फंड यूटिलाइजेशन मॉनिटरिंग फॉर PFMS के थ्रू होगा, वो उसकी ट्रेनिंग सारे PFMS के लोगों को दी जा चुकी है और उसको आपके जो अकाउंट्स वाले हैं उनको जियो टैगिंग होना है, हर एक एसेट जियो टैग होना है, टैप कनेक्शन, आपका ट्रीटमेंट यूनिट, आपका इनटेक है, स्लो सैंड फिल्टर, जो भी एसेट बनेंगे सब के सब जियो टैगिंग होनी है। और वो जियो टैगिंग आपके जो हमारे ये आप देखते हैं IMIS है उसमें दिखता है, उस विलेज में आप किसी विलेज ट्राई करिएगा जब भी मौका लगे तो उस विलेज में जाएंगे तो वहां पर जियो टैग मिलेगा, जो आप ये कोई आपने ये जियो टैग किया होगा तो वो जियो टैग मिलेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग यह है कि हो सकता है मेरी बात से ये लग रहा हो कि ये सब कुछ वहां पर मिल जाएगा, लेकिन यदि आप उसको अपलोड नहीं करोगे, आप उसको जियो टैग नहीं करोगे, आप उस डेटा को उसमें नहीं डालोगे तो वो नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करेगा कि आपने डेटा फिल किया है या नहीं किया। जितना अपडेट आप अपना पोर्टल रखेंगे उतना ही आपका प्रोग्रेस बढ़ता जाए, उसमें प्रोग्रेस भी दिखा रहता है देता है। आपने आज कुछ डेटा भर दिया तो आपका ग्राफ जो है बढ़ जाएगा ऊपर को, ठीक है। और आधार कार्ड लिंक पूरा ये है, आपको जो टैप कनेक्शन देने हैं वो आधार कार्ड से लिंक होने चाहिए। नेक्स्ट, सेलेंट फीचर है, इन विलेज वाटर सप्लाई होगी, ये मैं बात कर चुका हूँ आपको। इंडिविजुअल हाउस होल्ड को पानी देंगे, सब कमेटी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है पंचायत, इन सब की कैपेसिटी बिल्ड की जाएगी। पूरे देश में जो है 104 की रिसोर्स सेंटर आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनका जो कि आप जैसे L1 L2 L3 लेवल पे, L1 करता है सीनियर लेवल पे, L2 करता है मिडिल लेवल पे और L3 करते हैं ग्रास रूट लेवल पे। L3 की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, जैसे कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई, बहुत जगह पे ये ट्रेनिंग कंटिन्यू चल रही है, नैनीताल में चल रही है, लेह में चल रही है, अभी थोड़ी देर में मुझे लेह पे भी करना है, तो जगह जगह पे ये ट्रेनिंग चल रही है। पूरे देश में एक जन आंदोलन ये पूरा चल रहा है और ये मिनिस्ट्री की तरफ से और आपके स्टेट की तरफ से जन आंदोलन की तरफ से इसको आने वाले टाइम पे हर एक आदमी जल जीवन मिशन को समझ जाएगा तो वो इजीली उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, ये अगेन दी अदर सेलेंट फीचर है कि ओनरशिप लाने, लोगों में ओनरशिप लाने के लिए ये 5% कैपिटल कॉस्ट टूवर्ड्स इन विलेज वाटर सप्लाई को रखा गया है, ठीक है। और जो जहाँ पर 50% SC/ST हैं, फॉरेस्टेड एरिया है, SC/ST डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, तो हमें इसको 10% रखा गया है जो कैपिटल, जैसे मैंने पहले बताया था। कम्युनिटी विल बी रिवार्डेड बाय प्रोवाइडिंग, ये इंटरेस्टिंग बात है, इसको जरा ध्यान से सुनिए। Community will be rewarded by providing 10% of the in-village infrastructure cost of the scheme, which will be maintained by the community as revoking fund to meet any unforeseen expenses due to breakdown. छोटा जो खर्चा है, ऑपरेशन मेंटेनेंस का छोटा छोटा खर्चा है, वो तो 5% वो कम्युनिटी डिसाइड करेगी, 100 रुपया 200 रुपया लेके जो भी है वो कम्युनिटी उससे खर्च करेगी। लेकिन जो बड़ा खर्चा होगा वो जो 10% ये ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर 10% जो कम्युनिटी दे रही है वो उन्हीं के अकाउंट में रहेगा और उसको अलग से 10% से रिप्लेस कर दिया जाएगा। मींस कम्युनिटी को अल्टीमेटली देखा जाए तो कम्युनिटी को 10% फिर वापस मिल जाएगा
जो वो 10% दे रहे हैं वो अल्टीमेटली उनको वापस मिल जाए। तो आप देखेंगे 10% तो कम्युनिटी को कुछ देना नहीं है बेसिकली, उनको खाली अपना ओनरशिप बनाने के लिए अभी उनको देना है। और ये जो 10% होगा ये बड़े खर्चे के लिए होगा, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए ये होगा, और ये पैसा 15 फाइनेंस कमीशन, इससे वो पैसा आएगा। तो ये आप एश्योर हो जाइए। ठीक है, कहीं पे कुछ कम ज्यादा होके कभी इंफॉर्मेशन कोई समस्या हो सकती है, लेकिन ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए भी आपके पास अब पैसा है। पहले बहुत जगह समस्या होती थी, डिमांड होता था, आज यहाँ इसका ऑपरेशन कर दिया, कल उसका ऑपरेशन कर दिया, परसों उसका ऑपरेशन कर दिया, ये हम करते थे क्योंकि पैसा नहीं होता था। लेकिन इसमें है आपको सभी का ऑपरेशन करना है, सभी का ऑपरेशन मेंटेनेंस भी आपको इसमें इजीली आप कर सकते हैं, इतना फंड आपके पास होगा। विद द हेल्प ऑफ प्रधानमंत्री कौशल योजना जो है बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग जा रही है, प्लम्बर्स की, फिटर्स की ट्रेनिंग इसमें दी जा रही है, जगह जगह पर ये ट्रेनिंग चल रही है। नेक्स्ट प्लीज। टेक्नोलॉजी प्रमोशन की जा रही, लो ओनएम कॉस्ट की जो टेक्नोलॉजी उसको हम प्रमोट करते हैं, सोलर पावर स्कीम हो सकती है, स्कैटर्ड ट्राइबल हैमलेट्स पे इस तरह की स्कीम बन सकती है। और बाय द वे आपने उसका नाम सुना होगा, रैम पंप। एक रैम पंप होता है, उसको मैंने बनाया भी है, वो रैम पंप मैंने पूरा बनाया है। और आप 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं दिखाता हूं आपको। दिखाऊं? रैम पंप दिखाऊं मैं आपको? ये यस सर। हाँ, ये जी रैम सर, जी पंप सर, दिखाइए। हाँ, ये रैम पंप क्या है कि बिना बिजली के खर्चे से 24/7 365 डेज ये पानी लिफ्ट करते रहता है। ये इसमें पानी जो है, जिस हेड से पानी उसमें गिराया जाएगा उसी का 12 टाइम पानी ये लिफ्ट करता रहता है 24/7। 1 सेकंड दिखाता हूँ, आई एम एट होम तो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कैन यू सी? दिस इज द रैम पंप। ये जो है, ये रैम पंप जो है, यहाँ से पानी इसमें डाला जाएगा इस साइड से, और ये 2 मीटर के हेड से, और यहाँ से पानी ये जो है लिफ्ट हो जाता है ऊपर। और ये बेसिकली वर्क करता है हैमर पे, वाटर हैमर के प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। और जो हिल्स के इसमें वॉल्व, ये नॉन निटल वॉल्व लगा है, एक वॉल्व यहाँ पर लगा है, और इसके ऊपर एक बड़ा सा पाइप लगा रहता है, वो भी बाय द वे मेरा टूट गया है, तो जिससे जो है वाटर प्रेशर बनता है, यहाँ के वाल्व से पानी लिफ्ट होता है। तो इसके बारे में भी कभी जिक्र करेंगे, कभी डिटेल में जिक्र करेंगे इसके बारे में, मैं इसको असेंबल कर लूंगा। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आप कर सकते हो, कोई ऐसा है तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी आप अपने उसमें वो कर सकते हैं। पीपीपी मोड पे लैब चलाने की बात इसमें है। बहुत सारी लैब्स, पहले एक्रीडेटेड लैब नहीं थी, बहुत ही कम एक्रीडेटेड लैब थी, लेकिन हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब है मिस्टर भरताल साहब, उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी अलग से, इसके अलावा कि आप पूरे देश में लैबों को एक्रीडेट करने का प्रोसेस करिए। वो बड़ा कम्बसम प्रोसेस होता, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया है, ICMR की मदद से ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया, और आज की डेट पे कम से कम 2000 लैब जो है हमारी पूरे देश में एक्रेडिट हो गई। पहले लैब ढूंढनी पड़ती थी, अब वो लैब बिल्कुल रेडी है, वो कहीं भी कहीं पे टेस्ट कर सकती है, इवन कोविड टेस्ट, और इसके लिए भी उन्होंने यही प्रोसेस किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट कर देंगे, हाँ। और ये FTK किट है, FTK 5 महिलाओं को FTK टेस्टिंग को आपको सिखाना है, आपके लैब के लोग जो है इस टेस्टिंग को सिखाएंगे। तो दूसरा जो है इकोनॉमी ऑफ स्केल को हमको अचीव करना है पूरी प्रोसेस में, जिसमें इंश्योर स्पीड एंड स्केल, तेजी से हम काम करेंगे और ज़्यादा स्केल पे हम काम कर सकें। टाइम बाउंड मिशन में ये हमारा काम है। रिड्यूस द कॉस्ट एंड सेव टाइम ट्रेंडिंग फॉर, ये है बेसिकली
हम यदि ऐसे टेंडर बनाएं जो आइटम रेट टेंडर हैं, जैसे सपोज आपके एक डिस्ट्रिक्ट में आपने असेसमेंट किया कि 4 तरह के वाटर टैंक हैं, एक 25 केएल का है, ये मैं छोटे से बात बोल रहा हूँ, एक 25 केएल का है, एक 50 केएल का है, एक 75 केएल का है, एक 100 केएल का है। ये 4 ही तरह के वाटर टैंक आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, तो आप उसका स्टैंडर्ड डिजाइन करके उसका एस्टिमेट वो कर दीजिए। अब आपने उसमें क्या किया, उसके लिए टेंडर किया और सबसे जो लोएस्ट कॉस्ट पे बाकी कॉन्ट्रैक्टर्स को भी आपने एग्री करवाया और फिर उनको काम बांट दिया। तो ये उसमें एक पॉसिबिलिटी है। हाँ जी सर, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड करूंगा। आंगनबाड़ी और ये इनको भी पानी फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है। नेक्स्ट प्लीज। सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, उसके लिए हम बहुत जरूरी है कि हम SLSC होती है स्टेट लेवल पे, वो अप्रूवल करती है, फिर वो जो है स्टेट लेवल पे आता है। ये सारे एक स्टेप्स हैं जो अप्रूव, फाइनली वो जो है हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंडिया लेवल पे आता है और वो प्रोजेक्ट आपको अप्रूव मिलता है। नेक्स्ट। अब ये देखिए प्लानिंग फेज, मैं इसको आपसे जिक्र कर चुका हूँ। प्लानिंग फेज 3 से 6 महीने का प्लानिंग फेज होगा। इसमें आपको क्या करना है, पहले मैं आपसे इस बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट। इम्प्लीमेंटेशन फेज है, 6 से 12 मंथ का इम्प्लीमेंटेशन फेज है। इस बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से इस बारे में जानकारी, ये PPT आपको दे देंगे कालिया साहब, इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये हमारा जो है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन फेज है, जो कि 3 से 4 महीने का है और बेसिकली ये दैट विल गो अप टू द जो भी पूरा टाइम पीरियड है इस प्रोजेक्ट का, उस तक ये चलेगा। और इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जिक्र पहले कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पर जिक्र नहीं करूँगा। तो बेसिकली आप देखेंगे कि पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी होना, इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और आपका जो MIS सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, उसमें पूरा डेटा भरने की ज़रूरत है, समय समय पर उसको अपडेट करने की ज़रूरत है और IoT बेस्ड सिस्टम लगाने की ज़रूरत है। लो कॉस्ट, लो ऑपरेशन मेंटेनेंस की प्रोजेक्ट बनाने हैं, जिससे कि गांव वाले उसको बहुत आसानी से मेंटेन कर सकें। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूं और आपके कोई सवाल हैं तो हम सवाल पे बात कर सकते हैं। थैंक यू। ये सब कर चुके हैं हम लोग, पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कालिया साहब, हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, कोई सवाल हो। Yes, sir. You can do the questions. हाँ हो गया, ये तो हमने और चीजें तो बात पहले से कर रखी हैं, तो वो चीजें मैं बताना चाहता था। क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। PPT हटा दीजिए। तो कोई सवाल हो आपका, बोले सर, कोई सवाल आपके दिमाग में आता हो। लेकिन सबके फेसेस देख के मैं समझ सकता हूँ कि अब आपको सारी जानकारी हो गई है। बड़ा अच्छा लगता है कि पीपल नोज एवरीथिंग। और ये देखिए लर्निंग क्या है, इसमें एवरीथिंग भी नहीं बल्कि लर्निंग है, लगातार लर्निंग है। कुछ आप आज हम भी लर्न करते रहते हैं। मैं भी बड़ा, हमारे AS सर बीच बीच में बहुत सारे उसमें वो भी इसी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम लोग उनको सुनते हैं। तो हर बार हमको लगता है कि ये तो नई चीज़ बोल रहे हैं। जैसे अभी कल एक वो हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बात बोली थी कि हर इंजीनियर को जब वो अपने फील्ड में जाता है तो उसके पास एक तो टेस्टिंग, छोटा सा आपने देखा होगा पेन टाइप की होती है, वो TDS चेक कर लेती हैं, pH चेक कर लेती हैं। इस तरह का भी एक वो प्रोग्राम हमारे यहाँ चल रहा है। आने वाले टाइम पे बहुत सस्ते में आपको ये सारे वो मिलने लगे। ये डिज़ाइन चल रहा है, बहुत सारे के 10 स्टार्टअप्स इसमें लगे हुए हैं जो पेन से टेस्टिंग कर देंगे, वो कर देंगे। ये बहुत सस्ती कॉस्ट पे आपको मिलेगा, तब आपके पास ये होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जब आप अपनी गाड़ी में 2-4 कैन रख के चलिए, जिससे कि आप सैंपल वहाँ से कलेक्ट करें और वापस आके उसको लैब में दें। तीसरी बात है कि FT के किट आप गांव वालों को तो दे रहे हैं, लेकिन क्या आप खुद वो टेस्ट कर पाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एक FT के किट भी आपके पास होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। ये जैसे नहीं बात।
बताएं सर, आपका कोई सवाल हो? हिमांशु जी, आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो, कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है। सुमित जी, आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सुमित हाँ। अग्रवाल। नमस्कार सर। तो मेरे ख्याल से सवाल लोगों के अभी नहीं है, काफ़ी लोगों ने लर्न किया है, बहुत अच्छा बात है, क्योंकि पिछले 2-3 बार से तो आप लगातार ये सेशंस कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर आप ठीक समझे तो हम लोग समाप्त कर सकते हैं। कालिए साहब। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। हाँ हाँ, बताएं। ਸਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰ, ਲਾਸਟ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ implementation when all is well, we are हाँ। taking all care of the water quality and even community ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ हाँ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਡੂ ਨਾਟ ਕੀਪ ਦਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਟੂਟੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਖੁੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ 6 ਵੱਜ पानी ਗਏ ਵੀ करना है। ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਪਾਈਪ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਹੈਵ ਦਾ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਆਫ ਥੀਸ ਆਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਭਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ हाँ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ सर, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अभी तक लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, अब आप उनको पानी देने लगे हैं, तो थोड़ा सा मिसयूज तो लोग बाग करेंगे ही करेंगे ना। तो उनको समझाने की बात है। आप कभी जो अपने ग्राम प्रधान के साथ मिलके गांव में कैंपेन चलाइए, साहब इसको नल का जो है बंद करके रखें, ठीक है। और अपने स्टैंड पोस्ट से एक मेरे जो लग रहा है आप बात कहना चाह रहे हैं कि वो टॉयलेट तक अपना पाइप एक्सटेंड कर देते हैं, तो दे कैन डू। हमारे उसमें जो गाइडलाइन है, इस गाइडलाइन में एक प्रोविजन किया गया है कि कोई भी परिवार मिनिमम 3 टैप अपने वहां लगा सकता है। एक टैप उसको सरकार की तरफ से मिलेगा जो उसके प्रोमाइसेज में, और फिर उस टैप को वो एक्सटेंड अपने एक किचन में और एक टॉयलेट में कर सकता है। ये प्रोविजन है। पानी तो अच्छा, इधर आपने जो 55 एलसीडी पानी देना, आप उसको इंश्योर करने के लिए आप उसमें फेरूल लगा दीजिए, ठीक है। और उसको इंश्योर करने के लिए एक वो आता है, फ्लो मीटर आता है, फ्लो कंट्रोल आता है, एक छोटा सा वो होता है, मेरे ख्याल से 200 रुपये का है वो, स्टील का। उसके अंदर एक गोली होती है, जब 5 एलपीएम से ज्यादा पानी वो लेने लगेगा तो गोली अटक जाएगी, पानी उसको नहीं आएगा, तो वो अपना जो टुल्लू पंप भी नहीं लगा सकता। ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं। वो आप अपना डिजाइन करिए, उसी डिजाइन के हिसाब से आपको मिल जाएगा। वो 5 एलपीएम का आता है, 3 एलपीएम का फ्लो कंट्रोल वाल्व आता है, और 10 एलपीएम का भी आता है। तो डिपेंड्स अपन जो आपके प्रोजेक्ट में जो जरूरत है वो लगा दीजिए उसमें। और ये provision ਮੇਰਾ आप ਮੇਰਾ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਪੈਨल्टी। हाँ, एक्ट भी बना सकते हैं। वो तो देखिए, विलेज वाटर सैनिटेशन कमेटी अपना एक्ट बना सकती है। मैंने ये इंसिडेंट देखे हैं कि मैं टोटल सैनिटेशन के ओडीएफ की बात कर रहा हूँ, कि जैसे जो ये था भाई, ओपन में डेफिकेशन नहीं करें, फिर भी लोग सड़क के किनारे बैठते थे, तो गाँव की महिलाएं डंडा लेके दौड़ती थी उनके पीछे, और उनके जो है डंडा लगाती थी। तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, हिल्स का एग्जांपल है कि वाटर सोर्स कैचमेंट प्रोटेक्शन की बात थी। तो उस जहां पर वाटर सोर्स था उसके अपस्ट्रीम में लोग बाग डेफिकेशन के लिए चले जाते थे, या अपने गाय भैंसों को ऊपर चरा देते थे पहाड़ पर। तो उन्होंने क्या किया, बड़ा मना किया, बहुत मना किया, कोई नहीं माना। तो एक दिन उन्होंने पूरी गांव की मीटिंग बुलाई और कहा कि ये ऊपर का जो वाटर सोर्स के ऊपर का जो जंगल है, उसको हम हमारे लोकल देवता, कुल देवता को डोनेट करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जा नहीं सकता,
कोई उसमें डेफिकेशन नहीं कर सकता, यदि ऐसा कोई करेगा तो उसको जो है कुल देवता दंडित करेंगे। तो ये सोशल तरीके भी लोग बाग अपनाते हैं, तो बहुत सारे तरीके उसके अपनाते हैं। तो ये ओपन है इसमें कि आपके दिमाग में जो भी इनोवेशन आता है वो आप गांव के लोगों से डिस्कस करके आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Thank you, Dupula sir. थैंक यू सर। I think we have now the next speaker. हाँ हाँ Thank you श्योर। very much, Dupula sir. आपके जो बताया आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर कैसे उसका एम्फेसिस करना है, तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे। राइट सर, थैंक यू। तो आई नाउ वी हैव द नेक्स्ट स्पीकर। हमारे अग्रवाल जी ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है एंड ही विल गिविंग ए ओवरव्यू ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। So not taking much of time because we overshoot that time. And now I request Sudhir Agarwal ji to please start the presentation. Thank you, Dr. Saab. Thanks for giving me this opportunity. I think now I can share my presentation, so I will do that. Good morning, everyone. Sir, can you see my screen? Yes, yes. Yes, yeah. So good morning, everyone, and thanks for this Good opportunity. morning. So, I think I will try to finish this in maybe in 40 to 45 minutes because the time paucity. I will try to do that. सबसे पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी बात मैं करूंगा वो मैं इंग्लिश में करूंगा, तो आई होप इट इज़ ओके विद यू। निश्चिंत ही पंजाबी तो मुझे नहीं आती है, तो वो मेरी आप कह सकते हैं कि आई कांट डू दैट, और मैं गलत भाषा तो बोलूँगा नहीं, लेकिन हिंदी इंग्लिश में बात करूँगा आपसे। और जो हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ नो रॉकेट साइंस। ये बड़ी कॉमन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कॉमन है हमारी लाइफ में। तो हम वी विल टॉक अराउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, और जो भी मैं बात करूँगा you may find that there may be overlap between what I'm talking and what my earlier speakers have spoken. So just bear with me. Anyway, I won't be spending too much time on each of these topics. What I've done, all my officers, I have also broadly studied the program, and I have captured some of the critical components which from project management perspective are very critical. So one of the thing is a sense of ownership. Basically what we are saying, we have, जो अभी हमारे previous speakers भी बात कर रहे थे, we have to bring the sense of ownership among everyone. चाहे वो आप अफसरान हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या इसके जो बेनिफिशरीज हैं, everybody if gets into the sense of ownership, that is the first rule of project management, कि जहाँ पर आप you are not doing like a job, कि भाई हमें ये काम दिया गया है तो इसलिए हम कर रहे हैं. If we carry the sense of ownership and we align ourselves, तो प्रोजेक्ट की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है. और सेम तरह से अगर हम वो सेंस ऑफ ओनरशिप हम स्टेक होल्डर जो बेनिफिशियरी है उसमें भी क्रिएट कर पाएँ कि वो इसके ये उन्हीं के लिए है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इसका. दूसरा, इसमें अगर आप देखें तो फंडामेंटल चेंज आप लाना चाह रहे हैं, जिसमें आप बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि कैन वी चेंज द कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूटिलिटी बेस्ड अप्रोच to the infrastructure creation and service delivery. So whole basically बात वही है, लेकिन हम उसका कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं. तो ये सब चीज़ें जो आती हैं ये मोस्टली चेंज मैनेजमेंट के अंडर में आती हैं, जहाँ पर माइंडसेट चेंज की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एग्जीक्यूशन के जो मेथोलॉजी होती है उसके हिसाब से हम बात करते हैं. तो अगर आप देखेंगे तो इस शीट पे हमने ऐसे ही कुछ पॉइंट्स कैप्चर किए हैं. और जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स में जो होते हैं चेंज मैनेजमेंट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सॉफ्ट स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है. एंड अफसरान मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ कि सॉफ्ट स्किल एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैंने सेपरेटली मैं इस पर काफ़ी काम करता हूँ और मैंने इस पर लास्ट ईयर कॉपीराइट भी अचीव किया था.
तो सॉफ्ट स्किल जो है बहुत सारी चीज़ें जो हम हार्ड तरीके से प्रोसेस के प्रोसीजर के तरीके से नहीं कर सकते, वो हम सॉफ्ट स्किल्स के एग्जीक्यूशन से कर सकते हैं। और हम इन कुछ चीज़ें जो सॉफ्ट स्किल्स को लेके उसमें आगे आगे बात भी करेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है डेटा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो आप रियलाइज़ करेंगे, और आपने पहले भी रियलाइज़ किया होगा, आप सब एक्सपीरियंस अफसरान हैं, कि डेटा जो है ना आज की तारीख में लोग कहते हैं डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज न्यू करेंसी, डेटा इज न्यू गोल्ड, तो डेटा इज न्यू वाटर। तो डेटा जो है इज द बिगेस्ट थिंग दैट कैन मेक और ब्रेक। और डेटा डेटा ही है, जब तक वो यूज़ ना किया जाए, उसके स्टैंडर्ड डैशबोर्ड बना दिए जाएं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। आजकल जो हमारा डेटा का यूटिलाइजेशन है वो हमें पावर देता है कि व्हाट मोर वी कैन डू। और इसका जो पॉइंट मैं खाली रजिस्टर कर रहा हूँ इस टाइम पर, आप जैसे हम बात करेंगे आगे तो यू विल ऑब्जर्व कि द रेफरेंस ऑफ डेटा की वेयर एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और बहुत ज़रूरी है इसमें कि इस तरह के प्रोग्राम को वी हैव टू मेक इट इंक्लूसिव। इंक्लूसिव इन द सेंस, जो हम पहले हमने एक बात की थी ओनरशिप, कि ओनरशिप को अगर हम लाते हैं तो हम इफ़ वी मेक एवरीबडी इंक्लूसिव इनटू दिस, और वो कैपेसिटी बिल्डिंग से होता है, चेंज मैनेजमेंट से होता है। और तो जो इंक्लूसिवनेस है वो बहुत ज़रूरी है इसमें। और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वो होता है आई, मी एंड माई सेल्फ। इट इज़ वेरी इजी टू से कि ये उसने करना, ये उसका काम है, उसको करना चाहिए, ये उसने नहीं किया, वो कर सकता था। लेकिन अगर हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखें और हम ये कहें कि इट इज़ ऑल अबाउट आई, मी एंड माई सेल्फ, माई ऑफिसर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू reiterate here, I, me, and myself. If I can focus on what I can deliver, what is within my ability, capability, and what is, what lies with me, if I can just do it, and, if I have challenges, if I have issues, I can bring them to the table. So instead of, we are basically changing the conversation कि उसने और आपने नहीं किया to what I could have done and I didn't do that or I can still do that. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो असूल है वो ओनरशिप जो हमने बात की, और उससे लिंक्ड होता है आई, मी एंड माई सेल्फ। इट इज़ वेरी इजी टू रेज फिंगर्स एंड देन ट्राई टू गेट अवे, but it is a little difficult. But then if you get into the mindset of I, me and myself, trust me, it helps a lot. मैंने जैसे कहा कि मैंने आपका ये प्रोग्राम को थोड़ा सा स्टडी किया है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में, उसके पर्सपेक्टिव में, उसकी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये एक स्लाइड बनाई है अपने थॉट्स को शेयर करने के लिए, एंड होप यू विल एग्री विद दिस। कि इसमें आप देखिए एक दो तीन तरह चीज़ें हम ला रहे हैं। एक तो इसमें अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ग्राम पंचायत एंड देन द एंड बेनिफिशियरी। तो अगर आप देखेंगे तो वर्टिकल जो है ये इंटीग्रेशन है या वर्टिकल हायरार्की है जिसको हमें मैनेज करना है। दैट मीन the information will flow from center to gram panchayat to reach beneficiary, and also it will move from gram panchayat to center based on engagement with the beneficiary. So there is a vertical integration or aspect which is there. Then you will see the horizontal aspect. If you will see on the right hand side the five blue boxes, that your state water center, you have so many state level, district level missions, which you have to integrate in the overall plan, in the overall perspective. So it is not as simple as think we, what we may think, what has come from center as a program, we have to roll it out. We have to also integrate our own existing programs into this, so that ultimately, we get a big picture and everything is integrated well. Then it also, invite when you have to co-opt your experts, your subject matter experts, you have to co-opt your community. So if you really look at this, and then below if you see some of the program, so if you see, there are so many programs, so many entities, so many components which have to now work together. Now, how does it happen? If we follow the methodology, the whole philosophy of project management, उसका पर्पस ही सिर्फ इतना लिमिटेड होता है कि what all you have, you bring it to the table, put in a perspective, bring them on the same page, so that everybody, everything is brought to table in one context, and then everybody involved is on the same page. So if you really see in spirit,
this is the whole purpose of project management, that instead of leaving things in bits and pieces or in isolation, how we can bring them together. And because bring them together का challenges वगैरह जो हैं वो हम आगे slides में cover करेंगे. तो this is one context setting I have done, because we have multiple programs, we have multiple entities, we have multiple stakeholders, then we have multiple horizontal and vertical kind of players into this, programs into this. So that is where the challenge is humongous. But program management, project management can help you neutralize the challenge. It will never eliminate the challenge, it will neutralize the challenge. So what are the key characteristics if we look at it? One of the very important thing is we have to do the horizontal and vertical coordination. Now, coordination is one of the bigger challenge in terms of defining what is the horizontal and what is vertical, and where are the linkages between horizontal and vertical. So this is one of the characteristics of such a program where you have horizontal and vertical coordination. Then intra and interstate competition. I don't know to what extent you all will agree with me, but I would think in today's world, it may be a good idea to have the spirit of competition, that within the state, when you have so many districts and gram panchayat, can we create a spirit of competition, and then likewise among vis-a-vis the other states. So project management again helps you, because project management always helps you to put everything on the top of top of it, in terms of who is where, doing what, doing not what. So I will urge that if you already have this competition spirit, project management gives you that energy and that platform to create competition among yourself. My office's innovation is very, very important in today's project to achieve the to make the project future proof. Now, why we are saying, now you might say what innovation has to do the project management. Now, why? Because project management gives us the full perspective, and then if we have to look at innovation, it helps us identifying the areas of innovation in the overall scheme of thoughts, and then also help us monitor that is that configured, is it getting configured well, and is that is it getting integrated well within the whole scheme, and when and where we take a call that whether this innovation will go forward or we have to hold it back. So project management continues to help you to monitor create new initiatives and monitor the progress of those. For such a big program where we have vertical and horizontal integrations, it is always we have to work within a given framework of the program, of the policy, of the procedures. So project management का जो सबसे बड़ा रोल है वो एक बहुत important रोल है, वो हमें हेल्प करता है कि हम do we stay compliant with the our program policy and procedures. क्योंकि काम तो हम करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी जब हम काम करते हैं तो we certainly start missing on the some of the elements of program, elements of policy, element of procedure. So basically project management, what it does, because the next point is reviews. So one of the next point is reviews. So it helps us during our reviews to see that whatever we are doing, we may be achieving wonderful results, we may be achieving the best of the result, but we may be missing on some of the compliances. And इनके जो challenges होते हैं वो आप मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं अफसरान, कि at a later stage we would realize that we have not put certain fundamentals in place. So project management helps us also stay compliant. Project management also helps us the concept of punish and reward. Punishment तो हम हमेशा ही मानते हैं, at least we know कि intermediately but periodically that what is not going right and what is going right, and then also it helps us because everything becomes measurable, yeah, and is shareable among all the stakeholders. So can we also like competition, can we also have a concept of punish and reward, because now things can be measured, things can be projected properly. So आप सब I hope all of you will agree कि ह्यूमन जो फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज इसमें बहुत क्रिटिकल है.
So, and also human being, the way it works, like a human being works very differently in the morning sometime, and it works very differently in the afternoon. So how to, make people work together? Project management again plays an important role from 2-3 perspective. One is that it clearly defines who is supposed to do what are the dependencies of people on each other, and it also helps us manage our people management. That it helps us track, okay, where are we losing because of people, because of process, because of other challenges. So it helps us manage the people factor very clearly. As we said, there are multiple agencies, multiple programs, so obviously dependencies are there. So basically it helps us identifying who is supposed to do what, when, how का project management में relatively कम होता है, लेकिन who is supposed to do what and when, and which are the milestones. So those are the things. Multi-agency की जो dependencies होती हैं, project management helps us periodically to bring them on the same page, and then also monitor. You will find couple of things are getting repeated, but I'm trying to re-emphasize those elements because they are very critical. Then project management also helps कोई भी आप project देखेंगे, we will always have factors which are controllable, which are uncontrollable. The factors which are known, which are unknown, but they crop up. Now, हमारे सबकी जिंदगी में we all know that corona cropped up. Now, sometime maybe excessive rain may crop up. Now, sometime because of some kind of even political resistance, dharnas and all that they come. So natural and man-made, both kind of, which are controllable, uncontrollable, known, unknown, predictable, non-predictable factors आते रहते हैं. तो basically project management, because किसी भी stage पे हमारा पूरा blueprint होता है, तो we know when anything lands into us, then we know. We put it on the whole project management schedule, and we see what are the implications, what are the potential challenges or the delays or gains, what we can have out of this. So it helps us to bring those controllable, uncontrollable, known, unknown factors onto the table and then look at them in a holistic manner. Because project management की सबसे अच्छी जो feature है वो है measurable. Because everything gets, by far everything gets quantifiable, so it becomes measurable. Because you are able to pinpoint who is supposed to do what, when, so accountability आ जाती है. Traceability is very important because over time, what happened when, who did what, traceability इसलिए बहुत जरूरी है because people also keep changing. Dynamically things keep changing because of various factors. So traceability हमेशा हमें help करती है कि how we have progress on the project. Now and obviously ownership, because when everybody has been told like who's supposed to do what by when, so ownership आती है. And project management ऐसा नहीं है कि बिना project management tool के या बिना project management concept के ये सब चीजें नहीं होती, but they remain in the minds of people. What happens when we use some tools like project management tool, they come on the same table, and everybody knows who is the visibility to everyone, for yourself and for others. So that's very critical component. Now you might see this slide as a what is the relevance and context of this slide. So my officer friends, last year I actually also achieved a copyright on a concept called a manager always a CEO. और उसमें पूरा जब मैंने प्रोजेक्ट इसको कॉपीराइट अपना अचीव किया तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही मैंने एग्जांपल लिया है. तो मैं इस पे एक पॉइंट को एम्फेसिस करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि आप चाहे प्रोग्राम मैनेजर हैं जहाँ पर आपके नीचे 10 प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और आपकी मे बी 500 लोगों की टीम है, या आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं जहाँ 50 लोगों की टीम है, या एक प्रोजेक्ट लीड है या टीम लीड हैं जहाँ पर 2 लोगों की टीम है, 5 लोगों की टीम है. आप देखिए, चाहे आप किसी भी रोल में हैं, आपका किसी भी संदर्भ में अगर आप देखें तो यू आर नो लेस देन अ सीईओ. You are supposed to do everything what a CEO does. अब मेरे पास क्योंकि टाइम की कमी है तो मैं निश्चित ही स्लाइड को ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकता हूँ, but I actually do a 3 to 6 hours program on this, where basically I say कि as project manager, a project program manager, a team lead, a project lead always should carry a mindset of a CEO, because
once you get into the shoes of a CEO, then everything is you see very differently, and a lot of ownership comes, a lot of command comes within yourself. So this is a separate topic, but I thought I will just touch upon. And two things are very important you will find here: one, the green; one, the growth. Now we might say what I am supposed to do with respect to growth in my project, but अगर हम इस project को really we have to make it future proof, that how do we bring growth factor into that. And profit आप अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि even if we save time, we save resources, that is a profit to the project, and we can do a lot of things out of that. So what is project management? जैसे मैंने पहले ही कह दिया है कि ये कोई rocket science नहीं है, it's common sense. It is very easy easily I define the project management is science and art. Why I'm saying science and art? Because when we define the project on a blueprint, this is all about science. We have to follow certain processes, we have to follow certain guidelines to define the project in terms of what are the various activities, who is supposed to do what, and blah blah blah. So that is all about science. There is a mechanism. Within that mechanism, we are supposed to do that. And why it is art? Because as we execute the project, no project is ever completed, even by the best of the person on the earth, without tears. So art, why do we call it art? That every time as we go forward, for whatever the reason, when we face challenges, we face interruptions, we face disruptions, we face interventions. So how do you manage that? How do we manage that? That is the art part. So project management is all about science and art, and project management is all about a mindset of a CEO, as we just saw on the previous sheet, is a mindset of a CEO. Project management is always seeing beyond, because once you know that the entire project plan has been created, now you know who is supposed to do what, by when, what are the dependencies. Now project manager is supposed to see beyond. Okay, what contemplate what can happen, what we can do better, how can we expedite this, blah blah blah, from various perspectives. So project management is always seeing, not about monitoring what has been scheduled, what has been planned. Project management is all about seeing beyond, because जो आपने define कर दिया वो तो we can assume that this will happen, but now it's more about can I see things beyond, and we can work upon that, whether it is from a profitability perspective, whether it is from effectiveness perspective, whether it is from timeliness perspective. Perspective could be any, but basically seeing beyond is project management. Project management is all about risk management. As we said, known, unknown, controllable, uncontrollable, various risks will arise in the project. So once you know what is the overall, our framework of execution, whenever anything crops up, then we know, how do we work upon this? And as we work upon this, we know what are the dependencies. इसको यहाँ पर छेड़ने से कौन कौन से बाकी तार छिड़ेंगे, कौन कौन से जगह पर बाकी इम्पैक्ट आएगा. तो उन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो होता है वो रिस्क मैनेजमेंट. तो रिस्क मैनेजमेंट दोनों चीज़ हो गया, आइडेंटिफाइंग द रिस्क एंड देन रिस्क मैनेजमेंट. उसको अब रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जो होती है वो रिस्क मैनेजमेंट में आ जाती है. तो हैविंग डिफाइंड एवरीथिंग, project manager gets a lot of time now, because people have been, people are doing their work as per the schedule. Project manager, program manager gets the time, get the bandwidth, get the mindset to work on, to look at what could be the potential risk and how do we create a risk mitigation strategy. No surprises. Project management is all about plan, execute and monitor. It is easier said than done, ये मैं आपको कह सकता हूँ, because प्लान बन जाते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, बट उनको मॉनिटर करने के लिए हाउ डू वी डू इट इफेक्टिवली, that's again the science and art part. Project management is all about 360-degree perspective. Project management is not about what we see like this. Project management is seeing beyond. So 360-degree perspective के चाहे वो human aspect है, चाहे वो process aspect है, चाहे वो आपका deliverable aspect है, चाहे input aspect है, output aspect है, anything what you say, is a 360 perspective. So project manager has to look things beyond and capture early in the stage.
Project management is all about hard and soft skills. Hard skill because project management के अपनी methodologies हैं, अपने processes हैं review के हर चीज के, तो वो hard part हो गया. लेकिन मेरे हिसाब से मैं कहूँगा कि 70% of project management is soft skills and 30% is hard skills. And it also gets connected to your same point in project management in science and art, because science defining is something, you know, is up to me is 30%, but execution is about 70%, which is the soft skill part. इंसान से काम कराना, इंसान के संग जोड़ना, इंसान के संग you know 1 और 1 का 11 बनाना, you know, that is all soft skills part. Crisis आएंगे, उसको how do we handle that? That's again the soft skills part. Challenges आएंगे, लोगों के personal challenge आएंगे, interpersonal challenge आएंगे, process के आपके challenge आएंगे, जब process conflict होंगे, तो that is all about soft skills. So just to share with you, Afsaran, even last year I achieved another copyright which is called Soft Skill Leads to Wisdom. But soft skill is more important in project management ever than so much about the hard skills, because मल्टी टाइप के चैलेंजेस आते हैं प्रोजेक्ट में जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, और कोई इवन सेम चैलेंज अगर आपके 2 डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, तो you may not be able to solve with the same you may not have the same answer. You might have to do it differently because people are involved, process involved, local conditions are involved. And project management helps us with the impact analysis. कि जब भी आप प्रोजेक्ट में कोई ट्विकिंग कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चाहे वो नोन है, चाहे वो अननोन है, चाहे वो आप बाय डिज़ाइन कर रहे हैं या वो बाय सिचुएशन कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके पास ब्लूप्रिंट है, उसमें आप देख के जब कोई चेंज लाते हैं, तो इट हेल्प्स यू कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, चाहे वो कॉस्ट का इम्पैक्ट है, चाहे वो टाइम का इम्पैक्ट है, वो रिसोर्स का इम्पैक्ट है, डिलीवरेबल का इम्पैक्ट है, क्वालिटी का इम्पैक्ट है. देयर कुड बी मल्टी डायमेंशन टू द इम्पैक्ट, but it helps you because you can see a big picture at any point in time, and you can see this particular change where all it may cause some kind of disruption or reflection. So it helps you, you know, doing the impact analysis. Afsaran, we are almost midway. Is that okay so far, or you think it is it making sense, or you think it's very rudimentary and, you know, it's going out of context? Is that okay, sir? Please share your give a feedback. It's okay. हाँ जी, आप continue, sir. Okay, thank you, sir. Thank you. अब ये स्लाइड मैं इसलिए मैंने क्रिएट किया क्योंकि ट्रेडिशनली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो हमेशा से रहा है, बट विद द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जिस तरह की डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आजकल आ रही हैं, तो दे आर एक्चुअली चेंजिंग द फैसेट्स ऑफ यू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, like mobility. Like mobility today is so much you can do with the mobility in the project management, right from taking a click, taking a video, uploading with geotagging, and, you know, being on the top of it, you know, to the accuracy to the nth level. Then mobility is sort of like communication. Whenever you have to communicate some message either in the push mode to selective people or to everyone, you know, you can do that. Whenever suppose there is an alert happening in the field in the project execution, the alerts can be sent to the people, you know, absolutely instantly, so that some people can take you know, action. Even alerts before something goes wrong can happen based on certain, you know, so if the tolerance has reached up to 80%, even then the triggers can be done. Then escalation, even in creating escalations, mobility has a huge role in term, including you know, we getting a visibility in a live environment to what is happening in the project. So mobility, traditionally it was not so much, but now with the smart devices coming in and mobility, the kind of connectivity we have, the kind of tools we have. So what I'm trying to say in project management, our mobility is a very, very important role. Artificial intelligence, machine learning, why I'm saying, because a lot of things what we think as human being, we always do it within our you know, capacity, within our limitations, and within our what we can do, what we can think. But artificial intelligence and machine learning helps us. इसके 3 रूल होते हैं मेरे हिसाब से, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है. AI ML helps us, you know, connect the dots, connect the unconnected dots, connect the unrelated dots.
जो डॉट्स हमने रिलेट करते हैं वो समटाइम आज मशीन लर्निंग रिलेट करके हमको उसका रिफ्लेक्शन देती है कि this is what is happening and this may possibly happen, so you may want to watch it, or you can achieve you can do this more with this combination. So artificial intelligence, machine learning, if we build these concepts in a project, they help us. पहले जमाने में होता था, पहले टाइम में कि हम उसको बोलते थे नॉलेज मैनेजमेंट या उसका कंसोलिडेशन ऑफ डेटा, बट नाउ विद डेटा, इफ यू नोटिस इन अमंग द फर्स्ट स्लाइड वी सेड डेटा. So data can help us results from artificial intelligence machine learning perspective, which can help us look at beyond. Again, one of the role of project management is to look beyond. So AI ML helps us see sometimes things beyond based on certain patterns which are emerging. And again, AI ML may give us a very different results for a particular district vis-a-vis another district, because conditions may be different. The climatic conditions may be different, people condition may be different. So based on multiple factors, and as I said, unrelated dots, that is where AI ML helps us. So please just see like where and how you can look at some. Sorry, sir. No problem. So, and then obviously we just said, event-based reporting, because of mobility, because of AI ML, now we can have a much better event-based reporting, coming out of by using the technology. Predictive analytics, because once we have applied tools like AI ML, they help us, get the predictive analytics both in on real-time basis and even on based on the data. Configurable dashboards. The days are gone when the dashboards were fixed by the IT people. That today the dashboards are configurable by the end users, so they can see, like a particular project manager can see, then for this particular district X I want to monitor these 3 things, and for district Y I want to monitor these 3 plus 2 things, because they see a different potential or challenges there. So configurable dashboard which are done by the end users by far, this is very important. And a lot of application integration happens, and collaboration and cloud-based solution where your capacity of in good old days, whenever we had to do something, we used to take months and years together to procure the hardware and all that, especially server sides. Today with the cloud-based, you can just like your water, or just like water tap you subscribe to, or electricity connection you subscribe to, you can subscribe to cloud-based resources. And obviously the collaboration, because project management is all about collaboration. Today you have best of the tools available where you can collaborate, you can do the document sharing, all of you, multiple people can work on the same document at the same time. So those are some of the functionalities which are available today. And without losing the integrity of the data, or the who has done what, with a facility like rollback and all that. So collaboration tools are available for effective project management. So these are some of the new perspective you will find with the evolution of technology which are emerging. I will just now move faster because what we are talking here, what project management covers. Project management must cover goals and objectives. Now, goals and objectives, I will call it in letter and spirit, because in letter is what is written, but then when we create project plan, when we create program plan, project plan, and then project activities, the goals and objectives should be seen in spirit there. You will find a difference the moment you start putting your entire project on a project management tool. Initially we may even struggle to fill those, but if we are going top down and through our goals and objectives, it certainly helps. And I'm saying so because I have personally worked on a couple of projects and programs myself when I was with HCL for 17 years. So I have seen that, when we have used tools, how do they help us? Program management. So one is project management and one is program management, because when we look at multiple projects and then, when we look at a consolidated picture, so that's where we see a program management. Then our project management activities and milestone. Here the focus is milestone. Activities we can define, but we also define certain milestones, and milestones mean they are non-negotiable. Milestone means like if we are missing on milestone, that means it has a much far-reaching impact on the overall project than what any small miss or a particular miss can have.
So milestone is very important in project management, to identify right milestones and monitor those milestones, that how we are working towards them, because milestone normally will be related to will have dependencies of multiple activities related to multiple teams. So when multiple teams do their multiple activities, then you achieve a milestone. So missing a milestone could be because of anyone. So it helps us defining and monitoring those milestones. So milestone is the focus here. Project timelines, the science, project deliverables. Now the difference here is one, why we are saying deliverable. Deliverable, that means we are able to quantify without, when we don't use tools. We deliverables are mostly defined in a particular manner, but project management tool helps us detailing the project deliverables, so that they are linked to the different timelines, so that they are linked to various project activities, so they are linked to various project timelines. So that is where project deliverables, when we use project management tool, it helps us doing a micro definition of the project activities, project timelines, and what deliverables are. Resource management, my Afsaran, is very important component, because normally we have seen, I have experienced myself, I'm sure all of you would experience yourself, a lot of time we struggle for resources. And I don't know if you have experienced, a lot of time people also get possessive about resources, and even when the job is done, whether it's a machinery, whether it's a human being, we tend to hold back the resources to us, close to our chest. कि देख लेते हैं यार, जरूरत पड़ेगी, क्या क्या जरूरत है. तो प्रोजेक्ट जो रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अफसरान, कि ये बहुत सबसे बड़ा जो वन ऑफ द की एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल का होता है, रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, कि हम राइट टाइम पे राइट रिसोर्स को एलोकेट कर पाएँ, रिलीज कर पाएँ. इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिसोर्स की मोटिवेशन पे भी होता है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि इफ पर्टिकुलर रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग इज लाइंग आइडियल इन अ प्रोजेक्ट, इट हिट्स द मोटिवेशन लेवल ऑफ अ पर्सन. vis-a-vis the person is released at the right time and then given to the other task. So resource is all, whether it's machinery, whether it's people, it's all your hard money. एंड मैं, क्योंकि हम ह्यूमन फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है बहुत स्ट्रांगली, सॉफ्ट स्किल्स का इसलिए हमने शुरू में बात किया था. रिसोर्स मैनेजमेंट is one of the very critical aspect of project management, which tells us what resources is required by which activity, in which task, which team, when, for how long, and when resources can be released. So trust me, resource management is one of the very critical aspect of project management. When we use project management tools, it certainly helps us. Then roles and responsibilities are matrix, because without having tools like this or using project management methodology, the roles and responsibilities in our minds, dependencies are not shown very clearly. They are understood. But when we do the project management, preferably using some tools, we are able to clearly define the roles and responsibilities of people and their matrix, the dependencies of theirs. Now, this is easier said than done. कहने में बड़ा आसान लगता है, पर मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, because I have done project management myself, कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट के संग जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डेफिनेशन है, डिफाइनिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज एंड रिस्क, कि प्रोजेक्ट डिपेंडेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं एक टीम की दूसरी टीम पर, एक एक्टिविटी की दूसरी एक्टिविटी पर. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हेल्प्स अस identify those dependencies and any potential risk, and then managing them timely, proactively. Some of the critical success factors of project management. One is the project comprehension. Normally what happens if we are not using project management methodology, we do, yeah, we have understood. And it remains in our mind. And then as people change, even when if people don't change, it remains in our mind. But macro and micro level comprehension and defining, that is very important. So project management की जब methodology use करते हैं, it helps us translate our mind, what is in our mind, into what is can be definable. So that like resource management, this is very critical to the project management. Okay, project comprehension with macro and micro activities. And आज जो macro है वो every maybe
30 days, 60 days, 90 days, they continue, the macro start becoming micro, and micro gets completed. So defining project activities in a macro and micro manner comprehensively, that is very, very important component. All stakeholders with shared vision. मेरा emphasis यहाँ पर है shared vision, क्योंकि एक तो होता है कि हमारे माइंड में होता है, तो जब हम प्रोजेक्ट कॉम्प्रिहेंड कर लेते हैं, वी हैव डिफाइंड द मैक्रो एक्टिविटीज विद deliverables, with activity responsibility matrix, so all the stakeholders know who is supposed to do what, किसकी डिपेंडेंसी किस पर कितनी है, किसकी डिपेंडेंसी दूसरों की एक्टिविटीज पर कितना इम्पैक्ट डाल सकती है, वो सब क्लैरिटी आती है. एंड शेयर्ड विजन, it is important to have everybody, you know, on the same page, up to the level of clarity it is required. कहना बड़ा आसान होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि for whatever the reason, creating a shared vision is not that easy. But अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, वो नेचुरली आप देखिए वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि जब हर चीज जो हमारे माइंड में है वो पेपर पे आ जाती है, टेबल पे आ जाती है, एक फ्रेमवर्क में आ जाती है, इट बिकम्स वेरी नेचुरल. इफेक्टिव पीरियोडिक एक्शनेबल रिव्यूज, यहाँ पर एम्फेसिस है एक्शनेबल रिव्यूज एंड रिलीजियस. मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से कि रिव्यूज होते हैं, बट उसका कितना मतलब उसका फॉलोअप होता है या उस पर एक्शन होता है, उसके प्रोएक्टिव ट्रिगर्स होते हैं, आई एम नॉट टू श्योर. ये हर इंडिविजुअल का अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा इतना एक्सपीरियंस जरूर है, व्हेन वी यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, वो टूल ही अपने आप इतना बोलना शुरू कर देता है, वो हर चीज टेबल पे लाना शुरू कर देता है धीरे धीरे, कि हम चाह के भी वो हम कोई चीज को इग्नोर नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पाते. बट पीरियोडिक रिव्यू एंड एक्शनेबल रिव्यू, व्हाट इज इंपॉर्टेंट? एक्शनेबल. कि every review, you know, there are actionable and then actionables are followed up. Afran, communication, verbal and documentation. Again, it is easier said than done, but communication जो है वो project management helps us create communications कि भाई ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये ऐसे हो सकता है, ये you know challenge है, ये success है. तो कम्युनिकेशन नॉर्मली सिलेक्टिवली होती है, बिना टूल्स के, बिना मेथोडोलॉजी के नहीं होती है, कम होती है, कभी कभी वो अच्छी भी होती है, बट वो चैलेंज रहता है उसका. लेकिन अगर हम इस तरह के टूल्स यूज कर रहे हैं तो वर्बल एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिटन कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू हैव टू डू आवर यू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इफेक्टिव. एस्केलेशन मैनेजमेंट टूल अपने आप, मेथोडोलॉजी अपने आप हमको एनेबल करती है बहुत हद तक. आई डोंट नो अफसरान कि आप मेरी बात से एग्री करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ह्यूमन फैक्टर की वजह से हम बहुत जगह एस्केलेशन जो है हमारे वो हम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, या बिकॉज ऑफ यू नो वी डू इट बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड वी डोंट डू इट बिकॉज ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप. समटाइम वी डोंट इवन कैप्चर देम, समटाइम वी कैप्चर देम बट वी डोंट टेंड टू डू दैट फॉर व्हाट ऑफ द रीजन. बट मेथोडोलॉजी और टूल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो इट मेक्स थिंग्स पीपल इंडिपेंडेंट एंड प्रोसेस डिपेंडेंट. तो अपने आप जो है टूल, क्योंकि उसमें डेटा आ रहा है, उसमें मेजरमेंट हो रही है, वो मेजरेबल है, तो वो अपने आप यू नो प्रोएक्टिवली बेस्ड ऑन द ट्रिगर्स दैट यू हैव सेट इन द सिस्टम, वो escalation doesn't mean negative escalation is also for you know call for our attention. Not escalation is not negative alone, but it helps all that. Obviously, there are set of serial and parallel activities. It helps us define what can be done serial, what can be done parallel. And जो नीचे 2 पॉइंट लिखे हैं उसमें बहुत जरूरी है. एक है वीक लिंक. अफसर्स मैं आपको बताऊं, ऑफिसर्स के जो चीज हम एज्यूम करते हैं कि ये तो गिवन है, दैट बिकम्स द वीकेस्ट लिंक यू नो इन द एंटायर प्रोजेक्ट. मैं आपको अपना एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बिड बनाए, एक रियल केस है कि बिड बनी, वेरी कॉम्पिटिटिव बिड, वी शुड हैव वन दैट बिड एंड इट वाज अ ह्यूज बिड. पर इसमें क्या था, जो हमारा ऑफिस बॉय था जिसने ये जाके सबमिट करनी थी, उसको ये नहीं संभव बताया गया कि 2 बजे तक सबमिट करनी है. वो ट्रैफिक जैम था, वो लेट हो गया और हमारी बिड सबमिट नहीं हुई. और ये रियल केस है. अब इसमें हमने देखा जाए तो एक्चुअली जो ऑफिस बॉय था, दैट बिकेम द वीकेस्ट लिंक, बिकॉज हमने उसको शेयर्ड विजन में, जो हमने पहले बात की, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर शेयर्ड विजन, ही वाज नॉट पार्ट ऑफ आवर कम्युनिकेशन, प्रॉपर फुल कम्युनिकेशन, एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन. तो
शेयर्ड विजन मतलब वी हैव टू सी कि प्रोजेक्ट में वीक लिंक कौन से हैं, और जितनी चीजें हम एज्यूम करते हैं ना, आप ये समझ लीजिए वही हमारे वीक लिंक होते हैं। एंड दोज वीक लिंक्स कॉजेस, जिनको हम बहुत ट्रिवियल समझते हैं, बट दे कॉजेज द बिगेस्ट चैलेंजेस एंड बिगेस्ट डिसरप्शन इन द प्रोजेक्ट्स। प्लीज लुक बैक इन योर ओन प्रोजेक्ट, यू विल फाइंड कि जिस चीज को हमने एज्यूम किया वही हमको सबसे भारी पड़ी। तो इट इज गुड टू आइडेंटिफाई द वीक लिंक्स. That is a very critical success factor. And Vanguard is again a copyright which I've achieved, what I'm not good at. Project management में ये बहुत जरूरी है for everybody to know कि when I'm supposed to do certain things, I'm supposed to be the project manager. It is important to know, it is a part of soft skills, what I'm not good at. So that once you know in a project that what I'm not good at, it helps you look for people, technology, other resources, process, other resources to fill in the gap, to fill in for that, what I'm not good at, to make sure that, because being a best of the project manager doesn't mean that I know everything. I'm good at everything. I may not be a good negotiator. I may not be a good documentation person. I may not be a good escalator, whatever it is. So it is again a part of soft skills. What I'm not good at, for everybody to know in the project, so that people can call for support, call for resource, call for help, and fill that gap, and doesn't let that become a weak link in the project. Some of the terms you will often come across in a project management is about, people will say, you define the task, milestones, as we said in the beginning, the start date, end date, resource allocation and release, baseline, link task, schedule revision, tracking, traceability. So these are very commonly used terms: project cost, overruns, change management, deadline, project profitability, dependencies, per chart to depict data, because project management is all about data and process. These are some of the tools you will find, which are some of the project management tools which are there in the market. They're selective, illustrative and selective. It's not a comprehensive list, but there are a lot of tools. If anybody wants to refer to some of these tools. And these are some of the links. These are some of the links. If any one of you may want to visit some of these links to, get access to some of the concepts and more about project management, you all are, feel free to do that. This is what my officers I wanted to share today, and I'm not too sure of. Just a minute, I have to stop sharing the screen now. Stop share. This presentation is there with the institute. As I had said in the beginning, that project management is common sense, is no rocket science, is fundamental to project management, is all about science and art, is more about soft skills rather than hard skills, is more about always seeing things beyond what everybody can see. Can we see things beyond? Because we have transformed, we have translated a lot of information, data, what we have in our minds to the table. So it's all about that, project management. Officers, I'm available if you have any specific comment, specific question. If any one of you want to engage with me offline, I'm more than happy to do that. I have tried completing within time, because one of the thumb rule of project management session is to complete your session within time. So I started at 12:50. So I thought I will complete 11:50. So I thought I'll complete within my 1 hour, less than 1 hour. I'll try to complete. Any question? Thank you very much, Sudhir Agarwalji, for deliberating on project management. Any question to? Any comment, any question is more than welcome. So if some of you want exposure to tools, then though I have spoken to you as Sudhir Agarwal, but as Microsoft, I can introduce you to some other, I can get you some exposure to this project management tools of Microsoft. That is least of a challenge.
Thank you, Agrawal sir, for sharing your thoughts. Dear friends, we find a lot of our participants are still not, they have not cameras, and I don't know, even in spite of our repeated requests informing that the states are asking us for their status, whether it has been kept or not, but still our request has not been considered. So once again, I make a very humble request to all the participants. Let's give a serious thought to the training module. There is a lot of efforts gone behind organizing such training programs from the resource persons also, as well as from the organizers also. So my request to all the participants is please switch on your video cameras and have an interactive session. With this request, dear participants, before we start our next session, and I would, with a very heavy heart, I would like to inform you all regarding the sad, untimely, sudden demise of one of our resource person, engineer Sukhvinder Singh ji. Engineer Sukhvinder Singh ji was with us day before yesterday. He delivered 2 of his lectures on participatory planning post-implementation phase. Unfortunately, we lost him yesterday. And Engineer Sukhvinder Singh ji contributed very significantly in framing, in formulating this training module. Right from day one, when we started designing this training module, he was instrumental. He contributed very significantly. And as a person who was very much involved in these training water supply projects, and to me as a personal person also, because I was associated with him right from the day one when we conceptualized this training module. So it is very sad that we lost a eminent expert in water supply solution who brought 24/7 into Punjab. Not only Punjab, that was a role model for all of India. In mark of respect to the departed soul, and I would request all the participants, please pay a 2 minutes homage. Let's be silent at your own places and please attend it. This is my humble request. Let's pay respect, 2 minutes silence to pay respect, homage to our engineer Sukhvinder Singh.
Thank you very much, all of you, for paying homage to the departed soul. May Almighty place him, his soul, in eternal peace. Rest in peace, Engineer Sukhvinder Singh. Thank you. Now, as they say, the session will continue, and now we will have a session, next session, from Engineer J.S. Chahal. Chahal Sahab has already joined us, and I request now all the participants once again before he starts, please switch on your. We are going to have a very interactive. Engineer J.S. Chahal has last time also has exhibited practical how the project management, specifically with the reference of water supply schemes, is being done. So over to Engineer J.S. Chalji to have a presentation on project management and rural water supply. Thank you very much. Good afternoon, Dr. Sir. Good afternoon. Am I audible? Yes, very much audible. Yeah, I'm sharing my screen, sir. Is it visible, sir? Yes, visible, yes. Okay. Good afternoon, officers. I'm J.S. Chahal. I'm SC DWSS Punjab. I will be discussing project management in rural water supply sector. The agenda for today's discussion is what is project management, why it is important, and project management in rural water supply sector. Learning objective is, it is hoped that after completing this session, the participants shall learn project management and its key components, and it's hoped that they shall apply the gained knowledge in the rural water supply sector as well as their respective fields. As I guess there is more than one organization in this session. First of all, I acknowledge all the national and international institutes from where I have learned project management and gathered the course material. It's Project Management Institute, USA, Adelaide University, Australia, American Association of Civil Engineers, Jal Jeevan Mission, Ministry of Jal Shakti, UNICEF, of course, DWSS Punjab. Most of content has been captured from these sites. Intent was only for educational purpose, not any commercial or other purposes. Before jumping right into project management, let's define what the project is. A project is a temporary endeavor. It creates a unique product, service, or result. It must have a definite date of start and date of end. On top of it, any project must complete its or deliver its intended objective. To simplify this definition, let's take example of our rural water supply scheme. Suppose we are implementing a rural water supply scheme. It's a temporary endeavor. It has a start date and it has an end date, and it is creating a unique value by providing potable water, clean water to the rural residents. So once this project is completed, then it's no more a project. It goes to operations. That comes under operation and maintenance management. Why projects are required? Projects are basically undertaken to satisfy 4 requirements or needs. First of all is to meet regulatory, legal, or social requirements. Like if we are augmenting our water supply system to deliver 55 or 70 LPCD, then it's our social obligation. If we are undertaking a sewage treatment plant so that discharge from it comes well below 10 BOD, then it's a regulatory requirement imposed by National Green Tribunal. Then comes to satisfy stakeholder needs.
Suppose I am implementing a new water supply system, then I am undertaking this project to satisfy stakeholders' requirement for having a clean drinking water. So I might also be designing a project to design more fuel efficient cars, electric cars. Then comes technological change also drive requirement for implementing a project. Like we are developing solar cells to generate electricity, to create, improve or fix any process, product, or generate more sophisticated or improvised version of a project. Projects are also being undertaken. Like we are developing high-speed planes, high-speed trains. We are taking up processes to improve productivity, and we are also implementing projects like our requirement to have a more faster internet, like 5G services. So when the idea of project management comes to our mind, basically we are driven towards three components like Gantt chart, PERT chart, or critical path method. But this is only one piece of puzzle. This is not the complete picture. Actual project management is much more complex and complicated subject. Most of international institutes have started teaching a full-fledged 4-year degree program in this. So this is only one piece of puzzle. Critical path method, PERT, CPM, Gantt chart, it's not the complete picture. It's only scheduling or scheduling tool, whatever we may call it. To understand the concept of project management, program management, operation management, portfolio management, let's look at this big picture. And this is beautiful diagram adapted from Program Management Institute of US. Organizational strategy drives program management and project management. Let's take an example from our own context. Objective of Government of India as well as Government of Punjab is to provide clean drinking water at the doorsteps of each and every household. So this is organizational strategy. Under this strategy, Government of India as well as Government of Punjab is launching many programs like Jal Jeevan Mission is a program. World Bank supported or funded projects are also comes under one program. NABARD assisted programs also comes under one program. Under these programs, we are implementing various water supply schemes. Those are called projects. Once these projects are complete, then we move on to operations. Operation and management is part of operations management. Complete end-to-end solution, right? Starting from organizational strategy to the operations comes under the portfolio management. So let's build our definition, what we have learned so far. Project management is the application of knowledge, skills, tools, and techniques. Going by this definition, what comes first? Knowledge. Then comes skill set. So knowledge and skill sets are the basically most important ingredients of project management. Any tools, techniques, those comes at the later stage. And these are not as much important as the knowledge and skill set of project management matters. So we are implementing these tools, techniques, knowledge, skills to the project activities in order to meet our requirements of project, in order to deliver a project on time, within schedule, and within the cost allocated. As I earlier said, project management is not only schedule management, not only PERT chart. It is basically comprising of 12 key components, which are equally important. So the first is the environment in which the project operates or project is being implemented. Then comes role and skill set of project manager. This is the most crucial topic or subject. Then comes project integration, scope management, schedule management, then cost management, quality management, resource management,
communication management, risk management, procurement management, and stakeholder management. All these 12 components constitute complete picture of project management. Let's go one by one. The environment. Environment is quite hostile nowadays for project management. We are referring project management as PM. He has to work in shorter timelines and stricter deadlines, tighter budgets. Then there is a scarcity of resources. More accountability and transparency is implemented in the system. Rapid technology advancement also drives stress as well as time. Technology is changing at very rapid pace. Then comes the internal forces within the organization, internal cohesion, internal frictions, internal processes, internal sanctions processes. Then comes external forces like more demand from the stakeholders, more transparency, more know-how. Then comes scope change. All these are exerting lots of pressure on the project manager. He will be skillful enough to navigate all these challenges. Then project manager must choose all the inputs, processes, tools, techniques, outputs, life cycle phases in appropriate combinations from various fields, various aspects in unison in order to deliver a project on time within the cost and within the approved scope or with intended objective, so that project is a success. This is the very famous talent triangle. This is skill set. These skills are required from a project manager to be successful. And these comes under the umbrella of technical expertise, strategic as well as business management. Then comes leadership. If any of these these ingredients is missing, then that person is not a fit for project manager's job. If such a person has assigned the job of a project PM, then that project will not be very successful. It is definitely going to overshoot the cost, overshoot the time, or there will be other concerns also. So let's demystify these skills. Among technical skills, PM must have strong technical expertise in his domain. He must be able to read bid document specifications. He must be conversant with legal regulatory requirements of the project. He must be able to control the scope of the project, the work to be done. He must be efficient time controller, cost controller, quality controller. On top of it, he must be able to direct his teams to deliver intended results so that project teams can be mobilized. Among strategic as well as business management, the PM must not only be restricted to his own project. He must be aware what's happening in the organization, what's happening in the industry as a whole, what's happening in the finance sector. Is any new regulation or new ordinance is coming into picture, how it's going to affect the project, what innovations are happening in the field, how my project is going to be a success in the operations, will it be a costly affair, or any technological toughness or robustness is required for operations. He might be a long-term visionary leader. He must able to deliver or achieve organization's objectives. He must possess very, very strong leadership skills. He must able to guide his teams. He must satisfy concerns from all the stakeholders. He must be capable of building trust among not only his team members, but external stakeholders, external agencies also. He must be able to influence to get the results.
He must be able to motivate each and every member of his team. He must possess strong negotiation skills, strong communication skills. He must be a very, very efficient conflict manager. He must be a problem solver, a critical thinker, and must possess strong interpersonal skills. So there are hundreds of tools and techniques available in order to achieve these objectives. Next component is the project integration. It's the role of project manager to integrate seamless all the key components, all the activities, all the deadlines, all the resources available in such a fashion that they work in unison, in sync, so that project is not affected. He must also able to join any loose ends. He must also able to impart cohesive leadership among various teams, like civil team carrying out civil construction works. Then there is piping or plumbing team. Then there is an electromechanical team, which is also executing the work. All these activities are influencing or interfering with each and every other activity. So Project Management Institute has identified 49 project management processes which project manager needs to be able to integrate. So this is life cycle phases of a project, starting from initiation, then comes planning, then execution, controlling the project, then comes closing. Then comes project scope management. It is the most crucial duty of a project manager to understand needs from all other stakeholders. What is required? What work is required to be done? Since project delivery, a project result, each stakeholder will mean differently to each and every stakeholder. Each stakeholder has very, very different view of what project is and what it will provide. So all the requirements will be captured in this definition of the work required to be done. Some work is unavoidable. The scope will increase in the end. So role of project manager is to manage those scope creep in within the manageable boundaries. Let's have a very, very crude example of it. Suppose we have hired a painter to paint our house. The rate to be paid is per square feet. So once the work is complete, the painter is asking for the end-to-end payment from wall to wall, while we are forcing him to deduct the payment from the doors and windows which he has not painted. So each stakeholder has very different view of the project. So there must not be any confusion in order to be successful deliver the project. Then comes schedule or schedule management. What we see in this picture is a beautiful wristwatch. On the face of it, it seems to be very, very simple activity. When we remove the dial, we see thousands of moving parts under its dial gauge, which are constantly moving, constantly working, constantly in sync with each and other part in order to show the time correctly. Likewise, a project on the face of it seems very, very simple. When we break down project activities called work breakdown structure or called work activities, we got thousands of activities which are competing with each and every other and requiring project manager attention. These there are dependencies called work dependencies. These activities must be in sync with all other activities. Let's first go to an example.
Suppose we are implementing a water supply scheme. We are implementing, suppose a tubal waste water supply scheme. Let's have a 4 component for the sake of simplicity. A tubal as a water source, then comes water treatment plant, maybe waterworks. Then comes pipeline is to be laid to distribute water to the consumers. Then we need to install household connections. Suppose 12 takes 30 days, construction of water treatment or water works takes 180 days, pipeline will take 120 days, and house connection will take 130 days. So we cannot start construction of water treatment plant or waterworks once we have a safe established source of water. We have installed a tube well which has been tested. So after construction of water treatment plant and laying of pipeline can only be taken up once tube well is installed. So there is a dependency of waterworks as well as pipeline on tube well. These activities can only be started once activity of installing or construction of a tube well is completed. Then comes house connections. House connections can be installed only once pipe is installed, it's tested. So of course, there it can be started with a lag of say 10 days or 1 week once pipeline is developed. So house connection has 2 dependencies on pipeline as well as on tube well, whereas pipeline has 1 dependency on tube well. Going by, let's assume that all activities will go as per planning. So the project will take 30 days plus 180 days to complete the project. Whereas pipeline is taking only 120 days. So any delay in up to 60 days in installing or laying pipeline will not delay the whole project. Similarly, household connections can be delayed up to 50 days in order to deliver project within 210 days. So these are the process. What we have learned so far is we have planned, we have a system called, we have a project called water supply scheme. Then we have broken down all the components into 4 components for the simplicity. Whereas installation of tube well still has multiple activities. Then we have defined these activities. Then we have placed these in sequencing, in perfect sequence. Then we have estimated the duration. Then we have developed a schedule. Then our next job is to control and monitor the schedule so that each and every activity will start as planned. These activities, planned activity, will be called baseline activities. But in actual ground, as per actual ground conditions, work never goes as per planned. So there will be some delays. Those will be compared with the baselines, and it's duty of project manager to manage those delays, manage those hindrances so that project is completed well within the time. Cost management is also one of the important ingredient or key component of the project. Objective of this cost management is that our intended benefit, which is to be derived from the completed project, should be more or should outweigh the cost which we are incurring on the project. And the second objective is that completed project must be within approved budget. Of course, any scope creep in or other demands or other which are uncontrolled factors, some cost can be increased. But it is the duty of project manager to keep the project within the approved budget. Quality management is most crucial component of the project management. If the completed project is not as planned as per specifications,
mentioned in the bid document, not as per our requirement, or it is not fit to use, then that product cannot be put to use and the product is a failure. So we need to very cautious to manage the quality of a product during the construction itself. Because in civil construction, if anything goes wrong, it's very difficult to rectify it, to remove the defects. Like if we are pouring a concrete, we have cured it for 28 days. Then the sample is not as per the required standards. We need what we can do. The only option we have been left with is to dismantle the whole work and is to relay or reconstruct the things. It's very costly affair. So quality is a very crucial factor to be monitored. So there are three critical issues by which three critical tools, techniques by which we can control the quality. First is the prevention is the best cure. We must prevent any defect to rise. We must be very quality conscious. What is being laid, we must check during the construction itself. Second is we need frequent inspections to be carried out in order to achieve the desired quality standards. Then sampling can also be done on large scale so that intended any material, any finished product is as per required specifications or standards. Resource management, like Mr. Sudhir Agarwal said, is most crucial aspect of a project. It's like, let's have an example of a cricket coach. A cricket coach, in order to play a team, must have a cricket team. And cricket team players in turn must have bats, balls, gloves, protective gears, and pads, boots, etc. in order to play. Likewise, a project manager must have a strong and dedicated project team, and project team in turn must have all the resources like manpower, materials, machinery, and money, maybe funds, which he must able to assess, acquire, and mobilize in order to achieve success in the project. So it's a duty of project manager to ensure that all the required resources, maybe manpower, machinery, money, or materials, are available at the right time. So he must identify all the resources, and not only identify, he must be able to acquire those resources well within time, and then comes management. If our sources, since there are enough resources like in large projects, lots of manpower is available at the disposal of project manager. He must be efficiently use those resources. If any step missing in resource management will severely affect the project delivery. Then comes management. Developing and mobilizing teams is crucial for project management. He must be able to motivate and guide his team members so that project is delivered on time. Conflicts are unavoidable during large projects as well as during small projects as well. Conflicts within the workers, conflicts within various project teams, conflicts within the stakeholders versus management. So project manager must be efficiently able to navigate all the conflicts and solve the problems which arises during the construction of the project. And project teams as well as project manager must be emotional intelligent enough. That is a latest research from the Harvard, and what they have predicted is that emotional intelligence is twice important than the our general intelligence. Teams must be
organizing. They must be able to work without any much guidance. So such a team, if have been put on a project, will deliver a project not well within the budget, but will have least defects, and they will be delivering those projects on time. Project manager must be a great communicator. He must be able to he must be a communicator. If he, as we are listening to a commentary from cricket or hockey tournament, what's happening, without seeing or without watching, we are able to decipher what's happening on the ground. Likewise, a project manager must be a great communicator. He must appropriately transmit right message to the right people at the right time. And he must only not limited to use of formal language, or he must convey informal, written, oral, text, electronic, any medium which is available to him. He must communicate with those modes so that all the stakeholders have been apprised well within time what's happening, what's required. He must not able to communicate only with his team, among his team members, but he must communicate the project progress and other requirements with top management as well as with his peers, what's happening among other projects, in order to learn what's happening in their projects and what are the key learnings, what are the key setbacks, how to address those issues well within the time. So communication should not only be limited to the information and ideas, but attitudes among team members should also flow very, very freely. So communication must be intended to bridge a gap between internal and external and all other stakeholders among the key project areas. The more the project is complexity is, much sophisticated approach is required for the project delivery. Then comes the risk management. Risks are unavoidable or unavoidable part of the project. Risks are uncertain events which may happen at any life cycle phase or at any time of the project. It may have positive or negative effect on one or more parts of a project or on the project as a whole. So project manager must be able to navigate those risks clearly. He must be able to mitigate those risks. He must be able to transfer those risks, or he must be able to manage those risks so that impact on project is minimized. An efficient project manager is who will reduce the impact of negative risks and increase the probability of happening of positive events. These are the 7 processes outlined for risk management: planning for risk management, identifying risks, then performing qualitative risk analysis, the magnitude which a risk will impact the project. Then comes quantitative, how many number of times a risk or an event can happen. Then planning our strategy accordingly. Procurement management is the most crucial part of the project management. Project management often needs to procure works, services, goods from other agencies, other stakeholders, other vendors in order to complete those projects. In alone or in unison, he cannot do anything. He is to procure materials, he is to procure machinery, he is to procure manpower. So he must be, in that sense, an expert in buyer and seller relations. A project manager must have to deal with the complexities of contracts, purchase orders, memorandum of agreements, service level agreements. So he must be able to know between the lines
what contractual obligations are, what are the legal provisions attached to that project, or what are the regulatory requirements, what are the local conditions, what are the law of lands. The skill set required for project procurement is technical, financial, legal, and negotiation skills. What we see in this picture is the onlookers or sports fans are cheering up at some happy event. Going by this picture, we can easily decipher that sports fans are also stakeholders for the team. Because why? Because they have purchased tickets, they have spent their money, they have spared their time. So it's the duty of sports team and coach that he must keep all his fans satisfied. Likewise, a project manager, a project team must keep its all stakeholders satisfied at all phases of the project. Otherwise, trust will broken. The stakeholders will not be satisfied. So who are the stakeholders? Stakeholders are any person, any group of person, any organizations who have an interest in the project or who can impact the project, or in other sense, the project can impact them. Like suppose we have to procure a land, acquire a land, or purchase a land. There is already a habitation there. Suppose labor huts are there. So that labor may be removed from the site, but those are also their stakeholders until those has been duly compensated and alternate residential arrangement have been made for them. So stakeholder analysis is a continuous process. Like new stakeholders will be entering with respect to the phase of or cycle of the project, and old ones are eliminated. Like once this brickwork is over, then brickwork vendors' role is over. Suppose we have to now procure the painting job. Now painting vendors comes in as our new stakeholders. So we need to understand what are the stakeholders, what are new stakeholders entering at various stages, and understanding what level of engagement we require and anticipate, understand their expectations. We need to manage these stakeholders very, very effectively in order to satisfy the project delivery. So coming to our core concept, a project manager's role in the rural water supply sector. Rural water supply sector poses a very, very unique and more complex challenges to project manager in order, apart from what we have already discussed, due to various factors listed in this slide. So rural population is very less or less aware about ill effects of drinking a contaminated water. A comparative low income discourages them to pay for water bills, lack of skilled manpower in rural context, lack of resources. On most crucial is we have large number of small water supply systems scattered over a vast area of works. Like in DWSS, we are implementing service improvement projects under 2A1 component of what World Bank aided project, where very, very small small value works are scattered over over a block or over a district. Then comes splash mindset of rural persons that water is abundantly available. We can splash or as much as we can. Then easy and free availability of water from other water sources, lack of managerial skills, inadequate infrastructure, all these pose very, very unique and challenging environment for project manager. So this diagram has been adapted from UNICEF. On the core of it is a group of persons or villages as community as a whole. They are gathering information. We are informing them
about ill effect of water, drinking contaminated water from Anganwadi workers, from ASHA workers, from health aware workers, from our own social staff, from TV, from various other channels. So they become informed. Then what is option available with them? They go to village panchayat or village sarpanch in order to have a more safe source of drinking water within their premises or within their reach. Then there was, based on that demand raised by the community, concerned village sarpanch or village panchayat approaches public health engineering department or DWSS. Then there is, let's discuss the first barrier. First barrier is when these group of villages approaches the Sarpanch or GPWSC or Gram Panchayat, then there is no response from the Sarpanch or there is a delayed response. If anyway the Sarpanch manages to approach the PhD, then PhD also takes its own time. There is a delayed or no response at all. What are the options left with this community? Either they have to choose the unsafe source or they will be drinking or fetching water from the faraway sources. So we need to break these barriers in order to achieve our objective within the time constraints, or we have implementing scaling up our efforts in providing clean drinking water. So this is the beautiful diagram of a accountability framework in a rural context. So we have rural communities, we have policymaker called DWSS, then we have service providers called contractors or other stakeholders, then there is a regulator called government in the middle. Each and every stakeholder must be accountable to each and every other member so that this implementation of water space schemes can be fastened or scaled up. Like this service provider is accountable to the community to provide clean drinking water. At the same time, the community or users are also accountable to the service provider for payment of the services or payment of the user charges. The service provider is accountable to the policymaker called DWSS. At the same time, DWS is also accountable to the service provider to listen to his requirements and regulate his services. How to engage the community? So we need strong advocacy, strong IC campaign in order to engage rural communities. Then to break the barriers among for procurement, we must use low cost technology suitable for rural context, technology which will have in the end low operation and maintenance cost, and we can have grouped together or bundling smaller value works for procurement purposes so as to attract more bidders from the nearby areas or nearby districts. These are crucial steps. We must communicate with the communities on a regular basis. We must import credible, reliable, and relevant information about water-related issues. We must be able to build rapid as well as trust with the rural communities in order to convey our message. We need to build their capacities as they are to handle operation and maintenance of rural water supply schemes once these schemes are completed. Then community participation at each and every stage of the project, every phase of project is also important. A consistent hand-holding, transparent communication, and efficient, effective grievances addressal system is the crux. Once we are addressing and listening to their grievances, then it directly translates to the building rapid with the rural communities. Then convergence with other stakeholders like PRIs, ASHA, Anganwadi workers. I have identified at least 16 stakeholders in the rural water supply context, which are influencing the implementation of water supply schemes. We must be able to manage
must be able to mobilize these stakeholders. Once these stakeholders have been mobilized, our results will be manifolds. These quickly go through the stakeholders, then user groups and community itself, then their village water supply and sanitation committees, Pani Samitis, Gram Panchayat, GPWSs, Department of Water Supply Sanitation, Government of India, Government of Punjab, donors or funding agencies like World Bank, NABARD, Department of Panchayati Raj, Department of Health, Education Department, District Administration, NGOs, elected represented. Then comes key opinion makers in area. Most of the time, these key opinion makers are more influential than the concerned Gram Panchayat or Gram Sarpanch. People listen more to them and obey their instructions. Then service providers are also our stakeholders. Financial institutions like banks also opening our accounts, they are also our stakeholders. Electricity and irrigation departments are also our stakeholders. Coming to the end, project management is a management. It's not a science. In management concept, the key underlying question is what an idea is. Is that idea is working? Is that process is working? If it is working, it's fine. Whereas in science context, the underlying premises must be always true. If a fact is true, it will be true in any context and it will be true in anywhere. So this is a famous quote from Mark Twain, which I have learned while learning neural network programming. A cat who once sat on a hot stove will never sit on a hot stove again, and on a cold stove either. That cat just doesn't like the stoves. The key takeaway lesson from this slide is that when we have an idea, a process or method which is working very, very fine, which has worked very fine in the recent past, we are blindly following, adapting those ideas, processes, or methods for implementing our future endeavors. Once an idea which didn't work very well in the recent past or in the past, we just discard those ideas. Whereas it might work in our future endeavors, it might work very well in future projects. So there is no right and wrong methods, no right and wrong ideas, no right or wrong processes. It is the skill, it's the skill set, or it's the knowledge, it's the experience of project manager which works. So project management is basically people's management. Since PM is always dealing with the persons. So this is the crux or the key underlying concept. Project manager must be able to manage his peoples, his teams very well in order to deliver the project on time, within the schedule, within the budget. Thanks for learning. That's from my side. And sorry being a bit fast due to time constraints. Floor is all yours, Dr. Kalia. Thank you very much, Jal Sahab. I would just request any of the participants, any concern or anything they would like to, any sort of issue which they would like to address to Jal Sahab, to deliberate on that. We can understand that we are just close to the lunch hours. It is very difficult to keep you waiting before the lunch. There are two sessions which are very critical. One is before lunch, the second one is after lunch. I appreciate, sir, Chelsea, your efforts that you made everybody equal, and we are having about 25 participants.
But my only concern was that most of them are listening only. They are not visually interactive. So any question, suggestion? No, sir. Very nice session. आप अपने को पंजाब से हैं, थोड़ा सा they can add up anything on that. हाँ जी विनय प्रकाश जी, आप बताइए, आपका हरियाणा से, आप तो वेरी सेशन अच्छा रहा सर, काफी यूजफुल है। प्रोजेक्ट कैसे करना है सर, काफी डिस्क्रिप्टिव और अब अच्छा डिटेल में सर आपने काफी कंप्रहेंसिव में बहुत ही ਵਧੀਆ डिस्कशन हुआ सर। thank you. Good. Any question? So thank you very much, Chal Sahab. You have very elaborately explained what is project management and why it is important and what are the critical components to be considered under rural water supply schemes. And it was very emphatic when you said that project is always a temporary endeavor, but it has a definite beginning and definite end. So I think all our participants must have been enlightened by your talk, by your deliberations. And अगर कोई किसी को अभी question नहीं है or you want to send it on chat, then certainly we would pass on to Chal Sahab, then we can have so that we can deliberate on further also. We will be sharing his presentations also, that you can also go through and get yourself enriched with his knowledge. So not taking any questions here before we close for the lunch. So anyway, thank you once again, Engineer Chair Sahab, for elaborating all those things. And now we will break for lunch, and we'll be reassembling after the lunch at 2. At 2:15, okay, we are going to have a very important and critical discussion on financial management, because this is the one component where we engineers uh, are more involved in our engineering component, but whereas the financial components of the project come, then we only depends on the third party, in the sense your accountants and everything, whatever they put it across to you, that we just blindly do it. And financial management, what are the how the funds are being utilized, उसको recording कैसे करनी है, books कैसे upkeep करनी है, किस book में कौन सा डालना है, ठीक है? तो ये सारा everything will cover up in next session, which will be post lunch at 2:15. And I request all the participants have a great lunch, and then we'll be joining at 2:15. Okay, till then, see you at 2:15. Till then, it's goodbye. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, Chal Sahab. Thank you.
Welcome to all the participants post-lunch session. I request all the participants to please join back. हमारे पास काफी पार्टिसिपेंट्स हैं जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और मेरी गुजारिश फिर सभी पार्टिसिपेंट से यही रहेगी कि अपना प्लीज वीडियो ऑन रखिए। हमने बीच में आपकी हमने फोटोज लेनी होती हैं, तो जस्ट टू इंश्योर द प्रेजेंस ऑफ द इंडिविजुअल, तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट बार बार हम करते हैं कि आप जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपना वीडियो ऑन रखें, कैमरा अपना ऑन रखें, सो दैट वी कैन कैप्चर द फोटोग्राफ्स। मोहम्मद अली मलिक जी तो बहुत रेगुलर है, आई एम श्योर ही विल ज्वाइन, इनका तो है। और भी जो हमारे साथी हैं, गुलशन कुमार जी भी है, आज जी तो हमेशा और रहते हैं अवेलेबल। साथ ही हमारे कई और साथी हैं जो जिन्होंने ज्वाइन करना है, जो बड़े रेगुलर हैं, एंड दे आर ऑलवेज वेरी स्पोर्टिव एंड वेरी इंटरेक्टिव, जिनमें अपने मलिक जी हैं, मोहम्मद मलिक जी हैं, वेरी सुमित अग्रवाल जी ऑन रखते हैं अपना कैमरा। ऐसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। We are going to start our post lunch session. हमारे जो आज के स्पीकर हैं, जो एक्सपर्ट हैं ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, श्री प्रितपाल सिंह जी, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है एंड ही इज ऑलरेडी ज्वाइंड अस। एंड जस्ट प्रितपाल जी, आप आर यू देयर ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Good afternoon. I just introduce to you, dear friends, Shri Pritpal Singh Ji Bawa. He is the Additional Director Finance, retired from Department of Punjab, Government of Punjab, and he has very vast experience in financial management. In fact, he has dealt with the financial management in number of departments, with health also, with excise also, and in Department of Water Supply and Sanitation also. Babaji has handled numerous projects from financial aspect, and इनकी जो आपको आज की जो presentation है, it will definitely add into your, for all the engineers जितने भी हमारे join कर रहे हैं, कि how important is financial management, जो कि एक बहुत बड़ा I would say for engineers it is always challenging. It is always challenging to manage financial, how to keep the books, और कौन से फंड को क्या कहाँ से लेना है, उसकी क्या यूटिलिटी है. So all these things will be dealt with, and now I request, because now we have quite number of participants to join करेंगे. Some of will be joining during in the few time, and with this request to all the participants to keep your camera on. Now I request Pritpal Singh Babaji to start his presentation. Babaji, over to you. Thanks, Kalia sir. Thanks. Good afternoon, everybody. भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जी जो 5 स्टेट्स का वर्कशॉप या कोर्स ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसमें जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाने में फाइनेंशियल एस्पेक्ट का क्या रोल है, और फाइनेंशियल एस्पेक्ट में कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे हैं जिन पे हमने ध्यान देना है, इसके बारे में जो आपका कोर्स चल रहा है। पहले भी बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं वो अपना लेक्चर डिलीवर करके गए हैं। इसी में ही मैं भी आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे अपना जो लेक्चर है उसको
डिलीवर करूंगा। ये क्या है भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जब भी हम फिजिकल बनाते हैं तो उसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि किन किन सी बातें जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट की हमने कीप इन व्यू रखनी है। स्टेट एलोकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने फंड्स इसमें पूल किए हुए हैं जल जीवन मिशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एम है कि 2024 पे 100% हाउस होल्ड कनेक्शन, जो वाटर टैप कनेक्शन है हाउस होल्ड को, उस सभी पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर दिए जाए। मे बी सम डिले ड्यू टू कोविड, क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर ड्यू टू कोविड ज्यादा वर्क नहीं हो पाया, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो स्टिल जो है 2024 है। सभी इसीलिए उन्होंने मिशन में 3,60,000 करोड़ की पूलिंग फंड्स की हुई है। किसी भी स्टेट्स के लिए जो भी फंड्स जितना भी उसको चाहिए, लेकिन वो अपना मैचिंग शेयर पा सकती है, तो फंड्स जो है यहाँ से ले सकते हैं और अपनी स्टेट के लिए जितने भी प्रोजेक्ट्स वो बनाते हैं, जितनी भी स्कीम्स वो बनाते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स का क्या फंडिंग शेयर क्या है, 50-50। 50 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 50 जो स्टेट का शेयर है। खासकर हमारी जो इधरली नॉर्दर्न स्टेट्स है, एक्सेप्ट हिल स्टेट्स जैसे हिमाचल है, जम्मू कश्मीर है, उनके लिए फंडिंग पैटर्न जो है 90-10 है। अदर स्टेट्स के लिए 50-50 सेंट्रल एंड स्टेट शेयर का पैटर्न है। लेकिन इसमें कुछ मनी some of the aspect government of India has kept reserve for sport activity, because at the time of carrying out the projects we are to do some of the actions for the support activities. Suppose कर लो आपने कोई प्रोजेक्ट पे कोई सुपरविजन करनी है, उस पे कोई डिवीजन पे कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर की या कोई किसी और की सर्विसेज हायर करनी है या कोई सर्विसेज ऐसे देनी है, उसके लिए उन्होंने स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए फंड्स रिजर्व किए हुए हैं। ऐसी तरह ही वाटर क्वालिटी एंड मेंटेनेंस एंड सर्विलेंस के लिए भी फंड्स रिजर्व किए हुए हैं। लेकिन उनका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और स्टेट्स का जो पैटर्न है, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 60% और स्टेट जो पैटर्न है 40% है। ऐसी तरह ही वाटर क्वालिटी एंड मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो 60% है, स्टेट का जो शेयर है वो 40% है। इसमें भी सबसे बड़ा एस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया शामिल किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट तभी तक अपनी जो लॉजिकल रिजल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, वो नहीं अचीव कर पाता जब तक कम्युनिटी की उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होती। कम्युनिटी की कंट्रीब्यूशन होने से उसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो जाती है, वो उसे अपना प्रोजेक्ट समझते हैं और अपना प्रोजेक्ट समझने के साथ साथ उसको मेंटेन करना, उसका जो रख रखाव करना है, उनकी जो मेन प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें 10% कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन फिक्स की हुई है कि कोई भी जो भी विलेज, जब विलेज समिति है जीपीडब्ल्यूसी स्कीम लेना चाहती है वाटर सप्लाई की, जिसमें पोर्टेबल वाटर हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया जाना है, उसमें वो 10% कंट्रीब्यूशन देगी तो उसको स्कीम मिल जाएगी। लेकिन 5% कंट्रीब्यूशन उन विलेज के लिए है जहां शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, 50% से ज्यादा है, मोर देन 50% है, उनकी कंट्रीब्यूशन उन्होंने रिड्यूस कर दी है। प्रोजेक्ट कोई भी जब डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन या स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन या पानी समिति या जीपीडब्ल्यूएससी जब प्रोजेक्ट को बनाती है तो उसको पर हाउस होल्ड एवरेज कॉस्ट क्या है उसको कीप इन व्यू करना पड़ता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइंस है, जो बुकलेट्स है, इसमें जल जीवन मिशन की डिटेल्स गाइडलाइंस जो 2019 में जारी की थी, उसमें ये उन्होंने कॉस्ट
हर एक हाउस होल्ड पर एवरेज की फिक्स कर दी है। रेट्रोफिटिंग के लिए 7500 पर हाउस होल्ड फिक्स किया हुआ है। सिंगल विलेज स्कीम के लिए 15,000, सिंगल विलेज स्कीम बेस्ड ऑन ट्रीटेड ग्राउंड वाटर 25,000 एंड मल्टी विलेज स्कीम के लिए 47,000 एंड सोलर बेस्ड पाइप वाटर स्कीम के लिए 7 लाख। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड पैटर्न फिक्स किया हुआ है। इसका क्या है, अभी जब हमने प्रोजेक्ट बनाना है तो इस कॉस्ट के हिसाब से कितने एक विलेज में या एक विलेज समिति में या पानी समिति में हाउस होल्ड पड़ते हैं, और उस हाउस होल्ड से हिसाब से हमारा कितने का प्रोजेक्ट बनेगा, वेदर दैट प्रोजेक्ट इज सस्टेनेबल और नॉट, इसको सबको चेक करने के लिए हमें ये कॉस्ट की प्रोजेक्ट बनाने में इसकी कीप इन व्यू करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3,60,000 जो टोटल शेयर है इसमें बजट है, जहाँ फंडिंग पैटर्न है वो रखा हुआ है। इसमें अब जो 2021 और 22 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 50,000, नियर अबाउट 50,000 है, और स्टेट शेयर जो 42 नियर अबाउट 42,000 है, और टोटल जो हो गया 1 लाख करोड़। इस तरह ही 22 और 23 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है 40 नियर अबाउट 48,000 एंड स्टेट शेयर 35 एंड 292 का टोटल जो 84,000। 23 और 24 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 46 नियर अबाउट 46,000 एंड स्टेट का जो है 33,000, टोटल 80,000 का जो बजट प्रोविजन है इसमें रखी गई है। इसलिए जब हम इसको बनाएंगे तो इस प्रोजेक्ट को, इस कॉस्ट को, इस फंडिंग पैटर्न को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना बजट इस स्कीम में रखा हुआ है, हमारी स्टेट कितना पैसा इसमें से ले सकती है, वो हम एक तो वो जो पहले हाउस होल्ड कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है उसको ध्यान में रखने के लिए हमें प्रोजेक्ट बनाने में उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक आगे गवर्नमेंट ने वेटेज दी हुई है कि कौन कौन सी वेटेज में तुम प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये वेटेज देखो, रूरल पॉपुलेशन के लिए उन्होंने 212 सेंसस के अनुसार 13% वेटेज उनको दी हुई है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन को 10% वेटेज दी हुई है। स्टेट्स अंडर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम जहाँ जरा है हिल स्टेट्स, उनके लिए 30% जी वेटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। ऐसी तरह ही हैबिटेशन अफेक्टेड बाय केमिकल कंटेनमेंट्स 10% वेटेज दी हुई है। बैलेंस इंडिविजुअल हाउस होल्ड के लिए 20% वेटेज दी गई है। भाई जब हमने ये प्रोजेक्ट बनाना है या ये कह लो कि एनुअल एक्शन प्लान बनाना है, तो इन बातों का सभी का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि कौन कौन सी चीज में हम प्रोजेक्ट बनाने में इनसे मैक्सिमम फंड है जो एनी ऑफ द इंडिविजुअल स्टेट ले सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें गाइडलाइंस में ये शेड्यूल दिया हुआ था कि जो जो भी पहलियां जो स्कीमें हैं जो NRDWP में चल ऑन गोइंग प्रोजेक्ट थी, उसमें उन्होंने डेडलाइन दी हुई थी 31 मार्च 2020 उनमें तक कंप्लीट कर दी जाए, और ऑल स्कीम सैंक्शन अंडर NRDP वेयर स्टिपुलेशन कंप्लीशन डेट इज आफ्टर 31 मार्च 2020 will be completed within the originally approved time schedule। इसमें भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम शेड्यूल किया हुआ है, उसमें उन्होंने बहुत सारी टाइम 18 मंथ्स स्कीम का दिया हुआ है, 36 मंथ स्कीम्स का दिया हुआ है, मल्टीपल स्कीम का 36 मंथ और दूसरा 18 मंथ। ये भी लिखा है गवर्नमेंट में, लो सैंक्शन एंड टाइम फॉर एक्सेलरेशन इज अलाउड।
कोई जो एक्शन प्लान हमने बनाना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोविजन की हुई है कि स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन विद द डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन की हेल्प से नेक्स्ट ईयर का अपना एनुअल एक्शन प्लान बनाएगा। उसमें वाटर वाइज कितने हाउस होल्ड को कनेक्शन देने हैं उसको शामिल करेगा, और कितने घरों को कितने कनेक्शन को रेट्रोफिटिंग के जरिए से जो पानी की इम्प्रूवमेंट करनी है वो भी उसमें लाएगा, और उसमें कितनी उसको फंड चाहिए और उसका फिजिकल टारगेट क्या, मंथ वाइज एक्सपेंडिचर क्या है, उसका मंथ वाइज जो है फिजिकल टारगेट्स भी इसको इस प्रोजेक्ट के साथ देना पड़ेगा। ये दूसरा पड़ेगा कि फंड्स कौन कौन से सोर्स से आएंगे, स्टेट शेयर कितना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर कितना होगा, एमपी लेड फंड से कितना शेयर पड़ेगा, और कोई और फंड्स भी है जिसमें से हम इसको लिंक कर सकते हैं, उसका भी डिटेल प्रोजेक्ट सबमिशन करने के टाइम वो देनी पड़ेगी। स्पोर्ट एक्टिविटी का प्लान भी देना पड़ेगा कि स्पोर्ट एक्टिविटी का खर्चा जो एक्सपेंडिचर है किस किस एलिमेंट में किया जाना है, और किस एलिमेंट में कितना करना है, कौन से रेट पे करना है, और कितने टाइम की जो स्पोर्ट एक्टिविटी को एंगेज की गई है, इसकी डिटेल हमने वो लगानी। वाटर क्वालिटी एंड मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस प्लान भी नाल सबमिट करना है कि कहाँ कहाँ क्वालिटी इफेक्टेड एरिया है, वहाँ उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स देना है। जैसे पंजाब में बहुत सारे ऐसे एरिया है वहाँ यूरेनियम, फ्लोराइड या क्लोराइड वगैरह पाया गया है, और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने वहाँ से लार्ज वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की है। जैसे मोगा के नजदीक ददाहूर पिंड है, वहाँ पे 85 विलेज की एक स्कीम गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, और बढ़ाने के बाद उसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, वो इम्प्लीमेंट भी हुई है। उसके लिए सेपरेट उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन की जब उस मैनेजमेंट करने की नोटिफिकेशन डिटेल के साथ जारी की हुई है कि उसको वेल मैनेज करने के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। वो स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या क्या पावर्स है, और वो जो स्पेशल पर्पस व्हीकल को सपोर्ट करने के लिए ब्लॉक लेवल पे कौन सी कमेटी है और विलेज लेवल पे कौन सी कमेटी है, उनकी क्या क्या उनकी जो एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहाँ कहाँ उन्होंने किसने जो लार्ज वाटर सप्लाई कर रही है, जो 85 विलेज की जो स्कीम ऑपरेट करती है, वो पानी किसको सप्लाई करेगी, और जो विलेज में पानी कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसकी रेवेन्यू कलेक्शन जो है, यूजर चार्जेस की गवर्नमेंट ने जो फिक्स किया है चार्जेस, उसको कौन कलेक्ट करेगा, और कौन वो जो लार्ज सप्लायर है उसको वो उसको कौन कौन पे करे, और जो उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, ओएम का खर्चा है, वो वहां से कैसे कैसे मेंटेन किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने उसकी डिटेल स्कीम नोटिफाई की। ऐसे ही नियर अमृतसर के पास भी कुछ विलेज में कंटेमिनेशन पाई गई है, राजपुरा के पास भी कुछ कंटेमिनेशन पाई गई है, वहां भी लार्ज सरफेस वाटर स्कीम डिजाइन की गई है, और डिजाइन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में डाला गया है। ऐसे ही मतलब उन्होंने कहा है कि वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस प्लान डिटेल में देना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें कंटेमिनेशन है, कौन कौन सी हम उसमें ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, कैसे कैसे वो जो कंटेमिनेशन Pitpalji, we have just lost the connection. या You just come क्या back. कहिए सर? हाँ जी, we have just lost the connection. विक्रम जी वो दोबारा प्रेजेंटर बनाया आप कनेक्शन टूट गया। हाँ जी, नहीं दोबारा करना पड़ा वो Pitpal कनेक्शन ji लॉस्ट actually is delivering this lecture from Patiala. So थोड़ा सा इनका connection, we have got the disruption because of connection. So he'll be back soon.
तो अभी तक जो उन्होंने कहा फाइनेंशियल कंपोनेंट के बारे में आपने सभी ने मस्ट बी फेमिलियर विद, बट उन्होंने एम्फेसिस वो किया है जो फंड यूटिलाइजेशन कैसे करनी है, कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक स्कीम के लिए कहाँ पे फंड्स लेना है, व्हीकल्स लेनी है, वेदर दोज आर कवर्ड अंडर विच फंड, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सो ही इज एलिब्रेटेड ऑन दैट. So all is this thing is self-explanatory. Now he's back with Pritpal ji. Are you okay in the sense connectivity wise? Kaleshwar still is not okay. Hello. Hello. हाँ जी प्रितपाल जी, आपका is it audible? Kaleshwar, you are audible. अच्छा जी, ठीक है. Yes, yes. So please carry on. Okay. Why we have lost connection? Now we are back. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस अकॉर्डिंगली फंड्स जेजेएम के जो भी फंड्स है 2 इंस्टॉलमेंट्स में रिलीज किए जाने हैं. 2 इंस्टॉलमेंट्स की फर्दर डिवीजन की हुई है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का थर्ड पार्ट वो 50% ऑफ इंस्टॉलमेंट होगा एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो सेकंड इंस्टॉलमेंट पे 2 पार्ट्स में होगी. फर्स्ट 50% एंड रिमेनिंग जेड़ा है 50%. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे डिस्क्राइब किए हुए हैं उन्होंने कि ये जो एक्सपेंडिचर है तुम जेजेएम में कॉस्ट में नहीं शामिल कर सकते, लेकिन हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम डिवीजन में बिल वगैरह बनाते हैं, फर्स्ट डिवीजन में हमारा फंड पैटर्न कैसा है कि हम ड्रा करने के लिए ट्रेजरी से सपोज कर लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 60 करोड़ किसी भी फंड्स पे दिया है पैसा जेजेएम के अंदर, तो 60 करोड़ शेयर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, 60 करोड़ शेयर जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैचिंग शेयर के इक्विवेलेंट हमें जो फंड्स रिलीज करता है, वो फंड्स अब हमारे सेक्रेटरी के पास आते हैं. सेक्रेटरी हमें आगे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिलीज करता है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो सेंक्शन जारी करता है उस अकॉर्डिंग टू दैट सेंक्शन हम ट्रेजरी से वो 60 करोड़ का फंड्स इक्विवेलेंट टू मैचिंग शेयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर ड्रा करते हैं. तो उस फंड्स को हम कहते हैं एडवांस बिल ड्रा कर दिया गया. कैसे है? एडवांस बिल ड्रा करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एडवांस बिल हमने जो ड्रा किया ट्रेजरी से उसको एसी बिल बोलते हैं. एसी बिल को हमने विद इन 6 मंथ में डीसी बिल, डिटेल्ड एब्स्ट्रैक्ट बिल, उसमें एडजस्ट करना होता है. अगर हम वो एडजस्ट नहीं कर पाते, डिटेल्ड एडजस्ट जेड़ा है डीए बिल क्या है कि जो जो जहां जहां हमने वो एक्सपेंडिचर किया है उसके वोचर और बिल्स जो भी है, एग्रीमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो हम लगा के ट्रेजरी को अगेन अकाउंटेंट जनरल ऑफ द स्टेट को सबमिट करते हैं. We are again got a disruption. These are the challenges when we conduct any online program. Getting connectivity across at all the places is a big challenge. So now I think he's back, Pritpal Singh ji. Please ensure that Patiala
office we should have a proper connectivity. We should avoid such disruptions. Participants का जो flow होता है understanding का, sometimes that get disturbed. So my request would be, अगर कोई आपका technical issues है, please get it addressed. So these are very important information which you are sharing. कि हमने कहाँ पे ट्रेजरी से किस हेड के अंडर विड्रॉ करना है. He is talking with in contest with Punjab, but more or less financial जो practices हैं, those are applicable everywhere. It is in the same fashion. I am audible now to all the participants. Yeah. Me is audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Pittal ji, are you back now? Yes, yes. I am back. Okay. भाई जो हमने एडवांस बिल जो ड्रा किया था उसको एडजस्ट करवाना है, ये हमारी ड्यूटी है. सभी स्टेट्स में यही जो फाइनेंशियल मैंने आपको पैटर्न बताया है, सभी स्टेट्स में ये फॉलो किया जाता है कि ये सीएजी की गाइडलाइंस है. सीएजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ही है, उसके हर स्टेट का कॉम्पिटेंट जनरल अपना अपना होता है, लेकिन जो सीएजी की गाइडलाइंस है वो थ्रू इंडिया जो है एक ही फॉलो होती है. इसमें क्या है कि जो एलिमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हुए हैं कि प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट एक्सेलेरेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी है. टेंडर प्रीमियम कहीं रेट से डिफरेंट रेट आ गया, उसको हम टेंडर प्रीमियम बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट बी है. एंड अदर प्रोग्राम एक्सपेंसेस, इस प्रोग्राम जेजेएम के अलावा कोई और प्रोग्राम है जिसको हमने जो एक्सपेंसेस किया है उसके हम वाउचर बिल में लगा देंगे तो वो भी जो है इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा. दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल according to the government of India guidelines. Salary to regular government employees. Government expenditure like electricity bills भी इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं. Purchase of land, vehicle, stationery and furniture. भाई हमने कहीं भी कोई भी, चाहे वो विलेज की स्कीम बनानी है उसके लिए लैंड परचेज करनी है, चाहे हमें ऑफिस के लिए लैंड परचेज करनी है, चाहे अपने सब ऑफिस के लिए लैंड परचेज करनी है, कहीं भी लैंड परचेज के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया. ऐसे ही हमने जो व्हीकल है वो सुपरविजन के लिए हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए चाहिए, जहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के लिए चाहिए, चीफ इंजीनियर के लिए, किसी भी सुपरवाइजिंग जो ऑफिसर है उसके लिए जो भी व्हीकल चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनका खर्चा रीइंबर्स नहीं करती, स्टेट गवर्नमेंट को उसका खर्चा बियर करना पड़ेगा. ऐसी तरह जो हम कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं उसके लिए जो भी स्टेशनरी वगैरह यूज होगी वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडिचर का बियर करने का नहीं कहा. और जो हम इसको प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए जो हम ऑफिस सेटअप किए हुए है उनका कोई फर्नीचर, कोई चेयर वगैरह, कोई टेबल वगैरह, कोई और फर्नीचर, कोई सोफा वगैरह, उसका एक्सपेंडिचर भी हमें वाउचर इसमें डालना नहीं चाहिए. नहीं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसका भी ध्यान रखना चाहिए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑडिट होता है तो सीएन पैनल्ड है वो उसका ऑडिट करते हैं. जो सीएजी के पैनल सीए है वो रेगुलर इसका ऑडिट करते हैं. इसी तरह ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सीएजी है वो भी इसका जो है ऑडिट कर सकता है. नहीं तो ये ऑडिट पे पॉइंटेड होएगा और इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर दिया जाएगा. सुपरविजन चार्ज हम बाकी स्टेट्स कैसे करती है, चाहे किसी डिपार्टमेंट के बिहाफ पे हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं तो उस डिपार्टमेंट से हम सुपरविजन चार्ज लेते हैं. जैसे मेडिकल एजुकेशन का कोई प्रोजेक्ट हमारे वाटर सप्लाई सैनिटेशन ने एग्जीक्यूट किया तो हम 8% या 7% या 10% जो भी हमारी पीडब्ल्यूडी कोड में जो कॉस्ट बताई गई है उसका हम डिपार्टमेंटल चार्ज ले लेते हैं. वो क्यों लेते हैं हम? क्योंकि हम कहते हैं कि हम इसकी सुपरविजन की है, हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है, हमने इसकी डीपीआर बनाई है, इसके हमारा खर्चा इतना हुआ इसलिए हम उनको लेते हैं. लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें किया हुआ है कि हम नहीं देंगे. कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल, गेस्ट हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कंपाउंड वॉल एंड अप्रोच रोड. किसी भी स्कीम के लिए भी कोई भी अप्रोच रोड हमने सपोज कर लो किसी स्कीम
मेन रोड से 2 किलोमीटर पीछे है, तो 2 किलोमीटर की जो अप्रोच रोड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका खर्चा नहीं देना है, स्टेट अपने पॉकेट से उस अप्रोच रोड को बनाए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस अप्रोच रोड का खर्चा बीए नहीं करेगा। हमने भी कहीं भी कोई कॉन्फ्रेंस हॉल या गेस्ट हाउस बनाना है कोई एम्प्लॉइज के लिए जहाँ और डिग्निटीज जो भी आते हैं उनके लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे ये एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं करती। जेजेएम का कोई भी फंड्स डाइवर्ट नहीं किया जा सकता, ना ही जेजेएम की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट एक बार सेक्रेटरी से अप्रूव करवा ली हमने, उसके क्या कहते हैं हम डीपीआर बनती है, डीपीआर सैंक्शन होती है, उसके बाद हम सेक्रेटरी के पास ले जाता है, सेक्रेटरी उसे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देता है, उसको कहते हैं हम एडमिटेड एक्सपेंडिचर। जो भी एडमिटेड एक्सपेंडिचर हमारा हो गया, उसके एक्सेस जो एक्सपेंडिचर होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर नहीं करे। किसी भी हमने कोई प्रोजेक्ट पे जहां हमारा काम चल रहा है वहां कोई रेंट पे बिल्डिंग ली हुई है, कोई व्हीकल हायर किए हुए है उसकी सुपरविजन के लिए, जहां हमने उसके प्रोजेक्ट की सुपरविजन के लिए टेलीफोन लगाए हुए है, उस सारे का जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसअलाउ किया हुआ है। फ्यूल का, टाइपिंग का, फोटोकॉपी का, सभी ऑल एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो डिसअलाउ की। मैंने आपको एट द स्टार्ट ऑफ द माय लेक्चर बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए इसमें कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन दी हुई है, 10% कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन अलाउ की हुई है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्दर इसमें रिलैक्सेशन दी हुई है कि कम्युनिटी जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो कैश में भी दे सकती है, जहाँ कोई लेबर वगैरह भी दे सकती है, जहाँ वो भी कह सकती है हम ये मशीनरी देंगे, इतनी हमारे ट्रैक्टर होंगे वो जहाँ से सैंड उठाएंगे और वहां से सैंड ड्रॉप करेंगे, ऐसे में भी कोई चीज वो दे सकती है। लेकिन इस जो भी कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है उसका पूरे का पूरा एक लेजर नहीं है, कहाँ से कौन कौन से पर्सन से कितना कितना कैश आया हुआ है, उसका बकायदा लेजर में एंट्री होगी, और किसने कितनी लेबर दी हुई है। सपोज कर लो गाँव वाले कहते हैं कि हम इतनी लेबर प्रोवाइड कर देते हैं, हम खुद काम करेंगे और हमारा तुम एंटर कर लो, तो उन सभी का जो काम करेंगे उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि इस पर्सन ने इस दिन काम किया था और इतने घंटे काम किया था और इसका जो लेबर रेट के हिसाब से इतने पैसे बनते हैं, तो उसका भी हमारा पूरे का पूरा बायोडाटा हमें रखना पड़ेगा। ये एक्सपेंडिचर जो भी है ऑडिटेबल है, सीएजी जब कोई और भी अथॉरिटी कोई भी है ये इसको ऑडिट कर सकती है। कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखनी पड़ेगी, और ये इसको कौन ऑपरेट करेगा, जो सरपंच है और पंचायत सेक्रेटरी है, जो सरपंच है या उसको चेयरमैन है ग्राम सभा का वो, और पंचायत सेक्रेटरी वो ज्वाइंटली इसको ऑपरेट करें। ये कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन है, ये बाद में एजेंसी को और बैंडर को हैंडओवर कर दी जाएगी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये इतना कैश है, इसने दिया है। स्कूल कर कहीं 30 लाख की स्कीम है तो उसने 10% कंट्रीब्यूशन गांव ने दिया और 3 लाख रुपये है, तो उसको 27 लाख जो है प्रोजेक्ट में से क्या करेंगे, हम फर्स्ट बिल ड्रा करेंगे, फर्स्ट बिल पे स्कूल कर लो 30 लाख में से जो वेंडर है उसे 10 लाख का काम कर दिया, हम क्या करते हैं 10 लाख का जो फर्स्ट बिल है उसको प्रेजेंट करते हैं हमारे ट्रेजरी में या हमारे सिंगल नोडल अकाउंट, उसमें उसको 10 लाख का बिल पास करते हैं हम, और उसमें से जो टैक्सेस बनते हैं क्या है भाई, तो अपना 2% इनकम टैक्स, 2% फर्म से इनकम टैक्स, टीडीएस बोलते हैं हम उसको, इनकम टैक्स है ऑन टीडीएस, 1% जो आदमी को एग्जीक्यूट कर रहा है कंट्रैक्टर उसके 1% इनकम टैक्स लेते हैं। ऐसे ही 1% लेबर सेस भी लेते हैं, जितने का बिल बनता है 10 लाख का 1% जो भी हुआ वो हम उसको
डिडक्ट कर लेते हैं। ऐसे में 2% जीएसटी और टीडीएस, जीएसटी और टीडीएस बोलते हैं, वो भी हमें उससे डिडक्ट करते हैं। और जो डिडक्ट करते हैं इसको कीप इन व्यू रखना चाहिए कि जो भी हम टैक्स कर रहे हैं, वेदर की कंसर्न डिपार्टमेंट सब चेक हो रहे हैं या नहीं, ये हमने ध्यान रखना है। इनकम टैक्स की हमें क्या है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अगर हम उसको टाइमली फाइल नहीं करते तो उसको डेली का फाइन है, फिर वो बहुत सारा फाइन पड़ जाता है। इसलिए फाइनेंशियल व्यू से हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो इनकम टैक्स की रिटर्न है हमने क्वार्टरली फाइल करनी है, और क्वार्टरली जो इनकम टैक्स ने डेडलाइन दी हुई है उसमें से पहले हमें उसको फाइल करनी है। और जो लेबर सेस है हमने 1% काटा हुआ है, उसको जितनी पेमेंट ठेकेदार को की हुई है वो लेबर डिपार्टमेंट को हमें ड्राफ्ट के थ्रू ड्राफ्ट अप्रोप्रिएट टाइम पे सेंड कर देनी चाहिए, नहीं तो वो लेबर डिपार्टमेंट बड़ा भी हमें पेनल्टी लेते हैं। ऐसे ही हम जो जीएसटी डिडक्ट किया हुआ है वेंडर से, कंट्रैक्ट से जो जीएसटी डिडक्ट किया हुआ है, उसको हमने एवरी मंथ जो है जीएसटी डिपार्टमेंट है जो उनका, उसको हमने रिटर्न फाइल करना। इसलिए भी ये 3 एस्पेक्ट्स लिए हमने ध्यान में रखे हैं। इनकम टैक्स का क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, जीएसटी की मंथली रिटर्न फाइल करनी है, जो लेबर सेस है वो मंथली भेजना है हमने लेबर डिपार्टमेंट को थ्रू ड्राफ्ट। इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। इनमें से क्या है कि जेजेएम में जो प्रोविजन की हुई है कि हम सेटल शेयर के अलावा एमपी लेड फंड या ड्रिंकिंग वाटर स्कीम फ्रॉम अदर मिनिस्ट्रीज का कोई पैसा है तो वो भी ट्रीट करेगा एज सेंट्रल शेयर। कोई एमपी लेड से हमें एमपी उस गांव के लिए सपोज करो 5 लाख रुपया देता है, या ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम मिनिस्ट्री से अदर स्कीम के लिए पैसा दिया हुआ है, तो ये हम ऐसे नहीं कर सकते कि एमपी Sorry for interruption. आपने तक करेक्ट शेयर how to find this session अभी तक आपको वह आदि आई एम श्योर आपके कई डाउट्स क्लियर हुए होंगे अभी तक रिगार्डिंग फाइनेंशियल, आपने कैसे फंड्स यूटिलाइज करने हैं, कौन कौन सी इम्प्लीकेशंस हैं। हाँ जी बोलिए, हाउस गोइंग और कैसा आपको क्लैरिटी मिल रही है। कालिया साहब। हाँ जी, यस यस प्लीज कंटिन्यू प्रिंसिपल जी। हाँ, ओके ओके ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब क्या किया है कि जो सभी जेजेएम के जो फंड्स हैं वो सिंगल नोडल अकाउंट के साथ, सिंगल नोडल अकाउंट एक स्टेट का सिंगल नोडल अकाउंट होगा, किसी भी शेड्यूल्ड बैंक में स्टेट का सिंगल नोडल अकाउंट खुलवाएगी। तो सिंगल नोडल अकाउंट से सेंट्रल शेयर एंड स्टेट शेयर रूट थ्रू होगा, और वो जो सिंगल नोडल अकाउंट है वो पीएमएफएस से इंटरलिंक होगा। जो भी एक्सपेंडिचर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो उन्होंने शेयर रिलीज किया है, स्टेट ने जो अपना शेयर रिलीज किया है, वो सभी उस पीएफएमएस पे रिफ्लेक्ट होगा। और जब वो पीएफएमएस पे पेमेंट होगी वेंडर को, सपोज कर लो किसी स्कीम में 60 लाख की स्कीम है, तो जब उसका वेंडर ने 15 लाख का काम कर दिया और उसने बिल सबमिट कर दिया अपने कि मैंने मेरी ये स्कीम का इतना प्रोजेक्ट है और मैंने इस प्रोजेक्ट में इतना काम कर दिया है, ये मेरे वाउचर है, तो वो 100 लगा के
हमारी जो एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, डिवीजन हमें बोलते हैं, उसको देता है। वो डिवीजन के हो जो हमारा टेक्निकल स्टाफ है, जो हमारा अकाउंट्स का स्टाफ है, जो हमारे एजी से सीएजी का प्रोवाइड किया हुआ स्टाफ है, उनको चेक करता है। उनके चेक करने के बाद जब उसका बिल ड्रा करते हैं, रनिंग बिल हम उसको बोलते हैं, जब उसका बिल ड्रा करते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं कि जब हम उसमें से वो करते हैं तो हाँ, तो क्या है कि पीएफएन पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि कौन कौन से वेंडर को कितनी कितनी पेमेंट दी हुई है, कौन कौन से वर्क के लिए किया हुआ है। उसने ये भी देखना होगा कि उसमें से कुछ सब कंट्रैक्टर को कुछ वर्क अलॉट किया हुआ है, तो सब कंट्रैक्टर को कितनी कितनी पेमेंट की गई है, और कितने कितने पैकेज में काम हुआ है, किस किस पैकेज में कितनी कितनी एलोकेशन थी, उस पैकेज में के अकॉर्डिंगली उस वेंडर को पेमेंट की हुई है। पीएफएमएस जेड़ा वेब बेसिक सॉफ्टवेयर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसमें से कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई सेक्रेटरी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई सेक्रेटरी, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई चीफ इंजीनियर, कोई भी देख सकता है कि हमारे पास कितना पैसा कब आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मैचिंग शेयर हमने कब उसमें से स्टेट ने रिलीज किया, और कहाँ कहाँ पे वो पैसा एक्सपेंडिचर उस पर कर दिया है। इसलिए और कौन कौन से वेंडर को, ये भी पता चल जाएगा कि कई डिपार्टमेंट कई स्टेट्स में क्या है, ये आम शिकायतें मिलती है, हमें कंप्लेंट्स मिलती है कि पूलिंग हो जाती है, एक ही कंट्रैक्टर को बार बार जो कंट्रैक्ट अलॉट हो जाती है। इसलिए वहां में से पीएफएमएस से डायरेक्ट ही कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी ऑफिसर वो चेक कर सकता है कि कंट्रैक्टर राम सिंह एंड श्याम सिंह कंपनी है, ये सभी स्टेट के सभी कंट्रैक्टर या सभी डिस्ट्रिक्ट के सभी कंट्रैक्टर उसी को अलॉट हुए हैं, तो पता चल जाएगा कि राम सिंह एंड श्याम सिंह को सभी पेमेंट्स हो रही है। इट मीन्स ये है वो पूलिंग की हुई है और सभी के एक ही साथ उसके पेमेंट की जाएगी। इसलिए ये सिस्टम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है वेब बेस्ड पीएफएमएस, बड़ा ही very useful for the states and for the central agencies, even the executive agency उसमें से पता करने के लिए भी है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से अच्छे वेंडर है जिन्होंने काम किया है, वो भी रिफ्लेक्ट हो गए इसमें, और कितनी कितनी उन्होंने काम किया है, कितना कितना उनकी जरी है मैन पावर है, उनकी कैपेसिटी कितनी है काम करने में, ये भी रिफ्लेक्ट वहां से हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि इसको पीएफएमएस को स्क्रो अकाउंट में तब्दील कर दिया है। क्या है स्क्रो अकाउंट भाई? इसमें एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है, एक स्टेट गवर्नमेंट जिसको स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन, एक बैंक शेड्यूल बैंक। गवर्नमेंट कर लो हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ शेड्यूल बैंक का नोडल सिंगल नोडल अकाउंट खुलवाया हुआ है, पंजाब ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ खुलवाया हुआ है। ऐसा किसी भी स्टेट का कोई भी जो है शेड्यूल बैंक हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्होंने गाइडलाइंस की है, अपना जून में इशू की है रिसेंटली। उन्होंने कहा कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट किया जाए, उसमें 3 जड़ियां हैगियां एजेंसीज वो साइन करेंगी, या बैंक करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ताकि जो जो जेजेएम की गाइडलाइंस है वो बैंक भी फॉलो करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी फॉलो करे, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फॉलो करे। अब उनमें से फॉलो करने के इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उन्होंने उसमें आर्बिट्रेशन की प्रोविजन भी की है कि कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन में ये काम नहीं हुआ है, या मेरे पे एक्स्ट्रा पेनल्टी डाल दी है, या मेरे पे एक्स्ट्रा बर्डन दिया है, मेरा पे इतना एक्सपेंसेस हो गया, मैंने ये डेवलप किया है, करता है, तो आर्बिट्रेशन पे जा सकता है। आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके एग्रीमेंट मॉडल एग्रीमेंट जारी किया गया है सभी स्टेट्स को, कि सभी स्टेट्स इस मॉडल एग्रीमेंट पे अपना अपना बैंक के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ
और स्टेट के साथ। स्टेट जब एग्रीमेंट करेगी तो इसमें प्रोविजन है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर रिलीज हो जाएगा तो स्टेट अपना शेयर विद इन 15 डेज में रिलीज करे। इसलिए जो डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंसर्न स्टेट्स में वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की परमिशन लेता है, क्योंकि जो पैसे रिलीज करने हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्टेट्स रिलीज करने हैं। इसलिए सभी स्टेट्स ने जो एग्रीमेंट वहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया है उसको बैंक और सेक्रेटरी के साइन करा के गवर्नमेंट कंसर्न स्टेट ने अपने अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा है, वहां उनकी कंसेंट लेके फिर उसको एग्रीमेंट को फाइनल किया जाना है। उसमें क्या है, अभी उन्होंने क्या किया है, ये अकाउंट जो है ये फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग अकाउंट होगा, नॉट करंट अकाउंट, क्योंकि करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट होगा और जो भी इसमें इंटरेस्ट अक्रू होगा वो क्या है, इंटरेस्ट अक्रू होगा उसको बैंक फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल उसको वर्कआउट करेगा कि कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है और उसमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर पे कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है और स्टेट शेयर से कितना इंटरेस्ट अक्रू हुआ है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट शेयर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 000049 हेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिस्क्राइब किया है 0049 इंटरेस्ट रिसीट हम उसको बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीएजी ने ਵਿਕਰਮ ਕਰੀ ਵੀਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ। Can we? ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀਰੇ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। Sorry for again impression. We are trying to have it from. कर सकते हैं। ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰੋਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ। Pitpal ji, आप are you there now? हाँ बस एक मिनट। हेलो, हाँ जी प्लीज कैरी ऑन। ओके ओके ओके, भाई सभी ऑडिबल है? हाँ जी ऑडिबल है। ओके 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 ओके। कंसर्न बैंक जो शेड्यूल बैंक है जिसमें हमने ये अकाउंट ओपन किया है वो इसको बोर्ड करेगा पीएफएमएस के साथ, ये शो होने के लिए कि किस वेंडर को कितनी पेमेंट्स की है या नहीं है, कब सेंट्रल शेयर आया है और किस किस को पेमेंट्स की हुई है। इसलिए वो कंसर्न बैंक इसको इंटेग्रेट करेगा पीएफएमएस के साथ, रजिस्ट्रेशन करके वहां पीएफएमएस के साथ रजिस्ट्रेशन करके वे इंटेग्रेट हो जाएगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गया। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके जो फंड्स है वो 2 पार्ट्स में रिलीज करने हैं। Prithpalji, if you just allow, then we can run it from here. ओके 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 ओके। नहीं, तुसी आप क्या चाहते हो कि वहां से रन करें आप, पे यहाँ से हम रन करें? नहीं, मैं रन कर रहा हूँ। हाँ जी। ओके ओके ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें वो ग्राम पंचायत और जीपीडब्ल्यूएस के लिए इंसेंटिव भी रखा है। जो जीपीडब्ल्यूएस और ग्राम पंचायत 1 ईयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी रेगुलर इंश्योर करेगी गांव वालों को, और वाटर टैरिफ रेगुलरली कलेक्ट करेगी। तो टोटल कॉस्ट का 10% जो है इंसेंटिव फंड होगा। वो इंसेंटिव फंड को हम रिवॉल्विंग फंड के लिए यूज कर सकते हैं। रिवॉल्विंग फंड के लिए कोई अर्जेंट रिपेयर आगे वहां से मीट आउट किया जा सकता है। इसलिए ये इसमें इंसेंटिव फंड की भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने दी हुई है। स्टेट गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि 5% ऑफ द टोटल एलोकेशन नेचुरल कैलेमिटी के लिए, इंटरनल डिस्टेंस के लिए रिजर्व रख सकती है स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पे, ताकि वो कहीं भी कोई आ जाए सोच कर लो कि टोटल उसने क्या है कि 60 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है तो 5 करोड़ कैपिटल रिजर्व रख सकती है फ्लेक्सी फंड के लिए। इसमें जो फंड पैटर्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है अभी, वो 2 पार्ट्स में रिलीज हो गए। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पार्ट up to 25% of the total allocation, that will be the first part. After submission of juices, those states who have not drawn second installment in previous year, the states who have drawn second installment in previous year, the release will be automatically based on the PFMs. उनको कुछ भी नहीं है, उनके लिए सभी का सभी जो पैसा है ऑटोमेटिकली PFMs पे यूटिलाइजेशन देके रिलीज कर दीजिए। बैलेंस ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कवर रिलीज करेगी जब यूटिलाइजेशन ऑफ 60% ऑफ द सेंट्रल फंड। उसमें क्या होगा भाई, ओपनिंग बैलेंस एंड फंड रिलीज ऑफ द फर्स्ट पार्ट एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट मैचिंग शेयर। ये ध्यान रखना है भाई, ओपनिंग बैलेंस जो पे आता और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना शेयर रिलीज कर दिया, और मैचिंग स्टेट शेयर उसका जब 60% एक्सपेंडिचर हो जाएगा तो गवर्नमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की सेकंड पार्ट रिलीज कर देगी। सेकंड पार्ट कब रिलीज करेगी, जब यूटिलाइजेशन ऑफ 80% ऑफ द सेंट्रल फंड हो जाएगी, तो तब वो 80 सेकंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको रिलीज कर देगी। सेकंड इंस्टॉलमेंट की यूटिलाइजेशन ऑफ 60% ऑफ द अवेलेबल सेंट्रल फंड, इसमें क्या है कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट मैचिंग शेयर। सेकंड पार्ट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब रिलीज करेगी, जब यूटिलाइजेशन ऑफ द 80% ऑफ द सेंट्रल फंड, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग के लिए स्टेट शेयर। ऐसे उन्होंने फंड की रिलीज की जाती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसमें ये भी दर्शाया है कि मैचिंग एग्जांपल बना के जो मॉडल एग्रीमेंट शो किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसमें उन्होंने एग्जांपल बना के दी हुई है कि हर एक स्टेट ने कैसे कैसे फंड रिलीज करने।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जांपल दी हुई है, जैसे फर्स्ट रिलीज टू एस्क्रो अकाउंट 80%, 80 करोड़। सपोज कर लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 80 करोड़ रुपया रिलीज किया है और अनस्पेंट बैलेंस 20 करोड़ है उस स्टेट के पास, तो अप टू द 60% ऑफ द टोटल सेंट्रल शेयर स्टेट शेयर बिल, कोई भी स्टेट शेयर स्टेट को बियर नहीं करना पड़ेगा, और अप टू द 80% ऑफ द टोटल सेंट्रल फंड of 80 crore, at least 60% of the corresponding matching share means 36 crore state share स्टेट को पाना पड़ेगा, तब फंड पैटर्न जो है वो रिलीज होगा। अब आप 80% ऑफ द सेंट्रल शेयर, एटलीस्ट 80% ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैचिंग शेयर ऑफ 80 करोड़ मींस स्टेट गवर्नमेंट 64 करोड़ जो है हाँ जी ਵੀਰੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ ਕਰਾਇਆ ਦੁਬਾਰਾ? Prithpalji, we are not able to hear you. कालिया साहब अगेन कनेक्शन लॉस्ट। Okay, now please store. My friend at Patiala, please ensure that there should be minimum disruption. ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਵੀਰੇ। ਹਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ। Sir, if you can just, Prithpalji, if you can hear it. या कालिया साहब? Anji, you can keep on talking in case we are not able to see your visual. At least you can elaborate on the steps. Okay, कालिया साहब, okay. भाई now every ਜਿਹੜੀ transaction is routed through single nodal account. Further single nodal account जैसे मैंने आपको बताया है has further been developed as escrow account. अब कोई भी ट्रांजैक्शन escrow account से अगेंस्ट होगी तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नहीं एक्सेप्ट करेगी और जो वो एक्सपेंडिचर होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को बियर करना पड़ेगा। तो हमने जो अब तक जो डिस्कस किया है कि देयर आर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो स्टेट लेवल स्टेट वाटर सैनिटेशन मिशन पे या डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटेशन मिशन पे क्या क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट कीप इन व्यू रखने चाहिए प्रोजेक्ट बनाने में। हमने डिस्कस किया है कि वेटेज किस पॉइंट्स को दी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कौन कौन सी पॉपुलेशन को वेटेज दी हुई है उन्होंने, ऐसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को क्या वेटेज दी हुई है, हिल स्टेट्स को क्या वेटेज दी हुई है, हाउस होल्ड रूरल हाउस होल्ड को क्या वेटेज दी हुई है, और पर हाउस होल्ड उन्होंने क्या क्या कॉस्ट फिक्स की हुई है और कितनी कितनी एलोकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हुई है। ये ऑल एस्पेक्ट्स वी आर टू कीप इन व्यू एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग दी जी एनुअल एक्शन प्लान है। हमने एनुअल एक्शन प्लान जब बनाना है तो ये इन बातों पे ध्यान रखना है, ये हमने डिस्कस किया है। सेकंड एस्पेक्ट जो है अभी वो डिवीजन के लेवल पे, डिवीजन कौन सी है हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जो हमारी एग्जेक्टिव इंजीनियर है, सभी स्टेट्स में एग्जेक्टिव इंजीनियर है
कहीं उसको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल देते हैं, कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल देते हैं, नेम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी एक ही है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी ने क्या करना है, वो अब जो है एस्क्रो अकाउंट में, एस्क्रो अकाउंट एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नाम पे एक स्टेट का खुल गया है, और उसके साथ मदर चाइल्ड अकाउंट उन डिवीजन के खुल गए। जब जब उस चाइल्ड अकाउंट में से उनको पैसा निल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो मदर अकाउंट है वहां से उसको पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा इस सिस्टम में कि डिवीजन के पास 10-20 लाख रुपया, 30 लाख रुपया ऐसे ही पड़ा है, डिवीजन यूटिलाइज नहीं कर रही है और कहीं दूसरी डिवीजन को पैसे की जरूरत है, उसको हम दे नहीं पाएंगे। इस सिस्टम में अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल प्रूफ सिस्टम कर दिया है कि मदर चाइल्ड अकाउंट होगा वो एस्क्रो अकाउंट के साथ अटैच होगा। जब जब उसके पास पैसा यूटिलाइज होगा तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में से उसके साथ जो उसका हमने मॉनेटरी लिमिट फिक्स करी है, सपोज कर लो हमने फिक्स किया कर दिया कि 5 लाख रुपया डिवीजन के पास पैसा रहेगा, वो जब उसका यूटिलाइजेशन क्रॉस कर जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से वो क्रॉस होके ट्रांसफर होके पैसा उसके पास चला जाएगा। ये डिवीजन ने क्या देखना है कि मैंने जब कंट्रैक्टर ने, वेंडर ने, या जिसको हमने वर्क अलॉट किया हुआ है, उसने जब हमारे पास बिल सबमिट कर दिए तो इमीडिएट हमारी ड्यूटी बनती है कि उस डिवीजन उन वाउचर्स को चेक करें, उनको पास करें, टेक्निकल टीम से हमारी से चेक कराएं, जो अकाउंट्स की टीम है उनसे चेक कराएं, सीएजी के जो हमारे डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर पोस्ट किए हुए हैं उनसे चेक कराएं, और उनको पास करके हम जो एडमिटेड एक्सपेंडिचर है उसको एडमिट करें। ऐसे जो वाउचर हमारे एसडीओ ने, हमारे जेई ने, या जो वेंडर ने लगा दिए है, जो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है, उसको हम वहां एडमिट ना करें, उसको हम पास ना करें करके हमारी जो उनकी टैक्सेशन की जो 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 हमने टैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिमिट से मैंडेटरी टैक्सेस है वो डिडक्ट करने हैं। डिडक्ट करके जिस भी एजेंसी के पास हमने जमा करवाने हैं वो जमा करवाएं, उनकी जो भी रिटर्न है वो रिटर्न फाइल करें, और उनके जो रजिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेंटेन की हुई है, कोई असेट रजिस्टर मेंटेन करना है हमें, वो भी हमें उस पर मेंटेन करना चाहिए। कौन कौन की असेट हमें तैयार हो गई है, जूसी हमने भेजना है कि जूसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जरा है वो दिया हुआ है फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में जो यूसी भेजना है, ठीक है। और इंटरेस्ट का भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 31 मार्च को इंटरेस्ट प्रूव हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक फॉर्मेट लॉन्च कर दिया है उसमें से कि बैंक सर्टिफिकेट देगा कि एस्क्रो अकाउंट में से इतना इंटरेस्ट आ गया है, इतना इसमें स्टेट शेयर का इंटरेस्ट है, इतना इसमें सेंट्रल शेयर का इंटरेस्ट है। वो भी हमने सर्टिफिकेट्स लगा के सारे हमने डिवीजन पे रखने हैं। डिवीजन पे जो लेजर रखनी है, जो असेट रजिस्टर रखना है, वो भी हमने सारे के सारे तैयार रखने हैं। मतलब 3 एस्पेक्ट्स ये है। तीसरा एस्पेक्ट हमारा कि ऑडिट के लिए, फर्स्ट हमने प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए, दूसरा डिवीजन पे, और तीसरा ऑडिट के लिए। ऑडिट क्या है, एक तो सीएम पैनल है वो हमारा इसमें ऑडिट करेगा, वो कभी भी ऑडिट कर सकता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ये भी प्रोविजन की हुई है कि जो कंकरेंट ऑडिट भी करवा सकती है, जो हमारी स्कीमें ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, हम रिटायर्ड ऑफिशियल कोई ऑडिट के एंगेज करके उनसे कंकरेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है, रेगुलर ऑडिट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कोई भी हम टाइम लिमिट फिक्स कर ले, वो रेगुलर वहां जाएंगे और उनके वाउचर वगैरह चेक करते रहेंगे। कंकरेंट ऑडिट भी होगा, सीएम पैनल भी चेक करेगा कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर तुमने इसमें शामिल किए हुए हैं, कब कब कितनी तुमने डिले की हुई है, कब प्रोजेक्ट एलोकेट किया था तुमने, उस कंडीशन में ये कंडीशन डाली हुई थी कि कंट्रैक्टर और वेंडर विद इन टाइम लिमिट नहीं ये फुलफिल करता, वर्क कंप्लीट नहीं करता तो उसकी इतनी पेनल्टी पड़ेगी। अगर आपने वो पेनल्टी सरचार्ज उससे नहीं लिया तो वो भी एक जो उनका ऑडिट पैरा बनेगा। अच्छा, उनपे कुछ सिक्योरिटी हमने डिफाइन की हुई है कि जब जब वेंडर ये काम करेगा इतनी हमारी सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी गारंटी हमने परफॉर्मेंस गारंटी और सिक्योरिटी ली हुई है। वो परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी हमारे रजिस्टर में एंटर है और वैलिड है। जितना देर हमारा गारंटी पीरियड खत्म नहीं होता उतना देर वो सिक्योरिटी रिलीज नहीं हो सकती। ऐसी सभी बातों को हमें ऑडिट करवाने के लिए ऑडिट सीएजी भी करेगा, सीएम पैनल जो सीए है, सीएजी के पैनल वो भी करेगा, और कंकरेंट ऑडिट भी होगा। 3 ऑडिट के लिए हमें जो डिवीजन पे और सब डिवीजन पे तैयार रहना चाहिए और इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये भाई मेरी तरफ से ये लेक्चर ओवर है। किसी का क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं प्लीज। कालिया साहब, इज ऑडिबल?
आप audible हो जी? Yes, you are audible. Okay. My request to all the participants, अगर किसी का कोई financial management के ऊपर, financial implications के ऊपर, project में funds utilization, merging of funds, जो reports बना के भेजनी है, उनको जो आपने treasury से किसकी करनी है, कैसे आपने requisition डालनी है, वो उसके बारे में कुछ भी हो, जैसे इन्होंने बताया ऑडिट में आपने क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए. So sorry that during we have interruptions where we could not show you the slides, but however most of the components have been covered by Principal Baba ji. तो अगर किसी का भी हमारे जो साथी हैं जो हरियाणा, पंजाब, J&K जिन्होंने नया प्रोजेक्ट लगाना है या लगा रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल implications तो हर एक प्रोजेक्ट की ऑलमोस्ट स्टेट्स की सेम ही होती है, because the rules and regulations are, or the government of India की जो guidelines है, that is applicable to all the states. Under JJM what provisions are given, community को कितनी contribution की है उन्होंने बताया आपको. तो कोई किसी का डाउट हो, कोई clarification लेनी चाहते हो? See, this is the platform जहाँ पे आपको बेधड़क होके ये चीजें पूछ लेनी चाहिए, because those are going to be very beneficial. Otherwise, all the actions, the practical experience in the field all the time is that it depends on the accountants. So हमारी जो financial management के ऊपर knowledge होती है, that is limited to whatever has been told to you. So my request to you, to the participants is, in case or if they have some जो आपको difficulties face हुई हो, वो आप बता सकते हो. None. So we believe that all our executive engineers are very well versed with financial implications, financial management. Shall we take this? इंद्रपाल जी, आप पाली जी, आप बताओ, आप are you familiar? कोई ऐसे कोई complication तो नहीं कि financial management की? Okay. Actually, sorry to say, like we have chosen a very important session after lunch, where we normally just see the tendency, the most important paisa. See, this is in project management. आपने सुबह से interactions हुई हैं. There are three very important components in project management. आपको सबको मालूम है, what are the three M's? The three M's are manpower, machine, and money. And out of that, if you just take the priority, if you hire manpower, you hire the machinery, if you don't have the money and you don't know how to utilize that money, so your project will not take off. So जो भी हमारी है, इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि in case you have any doubt on फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे फंड्स को यूटिलाइज करना है, किस हेड के अंदर उस फंड को लेना है, कौन कौन सी चीजें आप उस जो आपको फंड्स अवेलेबल हैं उनसे कौन क्या चीज खरीद सकते हो, किस पे आप नहीं खरीद सकते हो, like he said on vehicles and other things that cannot be considered under this project. So these are very important. So thank you very much, Principal Babaji. I think. Okay, Kalia sir, thank you very much. Thank you very much. Thank you. Okay. So now we are coming to the last session of our one-day training, second edition of our one-day training program. And it so happened that most of the participants are the same. Those are there on 15th and 16th, because this is about the nomination we sent by your respective departments. We are going to have another edition that will be another set of participants from your states. So any of you can summarize आज की जो deliberations हुई हैं, कोई भी मेरा
any other participants, हमारे colleagues जो यहाँ पे बैठे हैं, जिन्होंने सुबह से ये डेलीब्रेशन सुनी है, डिफरेंट दपोला साहब से, मिस्टर सुधीर अग्रवाल से, चहल साहब से, और now with Mr. Bawa, any one of you can summarize कि project management, financial management है क्या, किया क्या, and what is different? What is different in project management and what is different in project management in Jal Jeevan Mission? Anyone? हरभजन जी आप बताइए. एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, एक हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अंडर जेजीएम की बात कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? सर गुड आफ्टरनून. जेजेएम में सर एक तो पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसके अंदर. हाँ जी. और दूसरा इसका अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है, इसका एक्सपेंडिचर का भी अलग वे में आईएमआईएस पे करना है. ठीक है, वो सब कुछ ये बेसिक डिफरेंस है सर. बाकी ठीक है जी. यस एब्सोल्युटली राइट. आपने देखा होगा मॉर्निंग में दपोला जी ने बड़ी एक स्लाइड आपको शो की थी. तो इफ आई मे आस्क जो भी हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं कि ये व्हाट देयर आर टू अप्रोचेस ही टॉक्ड अबाउट. वन वाज टॉप डाउन एंड वन इज बॉटम अप. तो मुझे कोई बता सकता है कि ये वाली जो जल जीवन की जो मिशन की जो स्कीम है, is it a top down or bottom up? Bottom up, sir. Bottom up. Yes, that is right. So when we take it, it is a bottom up. What does it mean? Anyone? मलिक साहब आप बताइए कि bottom up का मतलब क्या हुआ स्कीम जो हमारा प्रोजेक्ट है ये. इसको हम आप थोड़ा सा सुबह उन्होंने एक्सप्लेन किया था आपको. मोहम्मद अली मलिक साहब आप you are a very regular participant. What do you understand by bottom up approach? हाँ जी बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज उसको अनम्यूट कर लीजिए. हाँ मोहम्मद अली मलिक जी आप आपकी अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी मलिक साहब आप अनम्यूट कर लीजिए. और इन द मीन टाइम गुलशन जी आप बता दीजिए, इफ यू जस्ट शेयर योर थॉट्स ऑन दिस, कि व्हाट डू मीन बाय बॉटम अप. Sir, bottom up is just taking the project from the ground position, that is from panchayats to upward. That is, first we have to take up project with them, discuss with them how to take up, what is your contribution, what other things in order to make it a successful project. That is taking it from the ground position. Absolutely, absolutely. So I think most of us will agree to what Gulshan Kumar ji has said, that in bottom up, this is not a top down, it is not some project which you design or you will conceive from top down, then you just percolate down. It is from bottom up, we will take it, we have a community participation, we talk to them, and then we conceptualize a project. So it is a bottom-up approach which we take in this project management. Another very important factor which we talked about is that how does it different from normal our engineering component, which is the other component which we associate with engineering. हम उसको अभी हम कह रहे हैं पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को किसमें कन्वर्ट करना है? सर सोशल इंजीनियरिंग में करेंगे. Yes. So there is a change in our mindset. There should be a change in our mindset. हमारा जो जल जीवन में जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो that is not remain only for engineering component. कि हमने आपने वहाँ पे स्कीम रन कर दी, हमने प्रोक्योरमेंट लगा दी, मशीन लगा दी, पंप लगा दिया, वो OHRS लगा दिए, सबको मशीनरी लगी, that's it. वो लगानी है बाद में. पहले तो सोशल इंजीनियरिंग करी, वे टू कन्विंस द ग्राम पंचायत, वे कन्विंस द विलेजर्स, which I find like during our deliberation we find in Haryana we are facing this difficulty.
I think all my friends who are from Haryana, they must experience their own this thing, कि how difficult it is to convince the villagers. और उसके लिए हमें क्या करना है? See, any project, we are talking about today's project, and which we are talking the night since morning we have been talking. So हमारी जो discussion से अभी जो हमने आपस में interaction की है, उससे दो चीजें निकल के आई हैं. एक चीज है कि हमें community participation is an additional component in project management. So it is we as Mr. Dapola has also mentioned, अगर आपने उनका जो presentation का headline देखा होगा, तो उन्होंने लिखा था participatory project management. It is not he mentioned is project management. He mentioned that it is a participatory project management. Participate in the sense that we are involving the villagers, we are involving the gram panchayats. The last person in the village is being discussed. उसकी needs को identify किया जा रहा है. प्रोजेक्ट तो बना हुआ है, वो तो जल जीवन मिशन ने कहा हमने एक प्रोजेक्ट हमें दे दिया कि भी हमने जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है, वो तो प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड है. बट उसमें जो कंपोनेंट जो ऐड हुआ है वो है पार्टिसिपेटिव प्लानिंग. पार्टिसिपेटिव प्लानिंग नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, इट इज एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, टाइम ऑफ. अब दूसरा जो कंपोनेंट आता है, आपने सभी ने जैल साहब ने भी आपको बताया था कि ठीक है, आपने इट इज ए टेम्परेरी फेज, एक प्रोजेक्ट बन गया, खत्म हो गया. हियर वी आर नॉट टॉकिंग थ्योरेटिकल, हम कोई बुकिश नॉलेज नहीं शेयर कर रहे हैं. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, नॉट के को सम स्लाइड्स आई रन थ्रू एंड टेल यू कि भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होती है, ये प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, दीज आर द कंपोनेंट्स. नो, वी आर टॉकिंग इन प्रैक्टिकल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इन प्रैक्टिकल, वी जस्ट से कि भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहां तक है. आपने देखा होगा कहां तक है, वेयर द कंपोनेंट ऑफ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कम इनटू. एनीबॉडी, कोई मेरे फ्रेंड बताएंगे कि ऑपरेशन मैनेजमेंट जो प्रोजेक्ट साइकिल आपको दिखाया गया था 2-3 स्लाइड्स में, पहले भी मिस्टर चहल ने भी, मिस्टर अग्रवाल ने भी, तो ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है, किस का कंपोनेंट है? इज इट आउट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इज इट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? एनीबॉडी? सुमित अग्रवाल जी, आप बताइए कुछ, आप अपना ज्ञान शेयर कीजिए हमारे साथ. और प्रदीप कुमार जी, आप शेयर कीजिए. आप हरियाणा में आपने काफी प्रोजेक्ट किए हैं. प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कुमार जी, आप आई एम ऑडिबल टू यू? ओके. रमेश चंद्र जी, आप बता सकते हैं इफ यू आर देयर. हरभजन जी, आप भी बता दीजिए. आई थिंक वी हैव ए. और भानु प्रकाश जी, आप बता दीजिए, यू आर आल्सो देयर. Sir, it's the part of the project. No, it is a part of the project. बट वो कंपोनेंट कहाँ पे आता है? आप अगर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल को देखोगे, हम नॉर्मली काम करते हैं, कंसेप्चुअलाइजेशन होती है, प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है. ये तो आफ्टर प्रोजेक्ट ही आएगा ना सर. O&M तो बेसिकली यहाँ हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी O&M पे किसी पे भी नहीं आए हैं. जल जीवन मिशन के O&M के किसी भी फेज में नहीं आए हैं सर अभी. अच्छा, ठीक है. और कोई मेरे मित्र, और कोई और डियर पार्टिसिपेंट्स, कोई और किसी ने ऐड करना हो इसमें? सुरेश कुमार जी, आप कुछ अपना ज्ञान दीजिए. आपके बारे में क्या विचार है? ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कहाँ पे फॉल करता है? ये ऑपरेशन मेंटेनेंस जो आप नॉर्मली ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हो, वो उसमें सेम है कि डिफरेंट है? आपका अनम्यूट कर लीजिए, आपके अनम्यूट करिए, आपका म्यूट है माइक. हाँ जी. सर, ये जो हमारा ऑपरेशन मेंटेनेंस है JJM में, ये हमारे नॉर्मल ऑपरेशन मेंटेनेंस से डिफरेंस है, क्योंकि
नॉर्मल ऑपरेशन मेंटेनेंस में जो है हमारा सिर्फ गवर्नमेंट ही उसमें फंड्स बिल्कुल बिल्कुल हमको सही प्रोवाइड बात, करती बिल्कुल है। इसमें बिल्कुल, जो है बहुत बढ़िया। जो पब्लिक है, पब्लिक जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हमारा इसमें लगेगा, हाँ जी ताकि बिल्कुल उनमें अपनी सेल्फ उसके वो फीलिंग आए कि ये हमारी अपनी स्कीम है और ये हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, ये पैसा जो हम दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बिल्कुल कहा, भानु प्रकाश जी ने वही कहा कि ऑपरेशन मेंटेनेंस हम लेते हैं। यहाँ पे आपने अच्छा इलेबरेट किया कि इसमें पार्टिसिपेटरी है, इसमें जो ऑपरेशन मेंटेनेंस हम नहीं कर रहे, वो ग्राम पंचायत करेगी। जी सर, जी तो सर। उनको उन्हीं को हमें कॉन्फिडेंस में लेना है, उनको हमने ट्रेन करना है। हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉर्मली हम एक क्लॉज होती है टर्मिनेशन, आप भी यूज करते हो। आप भी जब हमारा प्रोजेक्ट कहीं भी हो जाता है, आप किसी से प्रोजेक्ट कराते हो, किसी कॉन्ट्रैक्टर से प्रोजेक्ट कराते हो, तो वो टर्मिनेशन एक क्लॉज है कि उसका प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वो टर्मिनेशन के बाद विल मूव फर्दर, वो क्या है, वो हैंड होल्डिंग। आप हैंड होल्डिंग करवाते हो, आप उसको क्लॉज में डाला होता है कि भी हैंड होल्डिंग आपने इतनी देर के बाद हमें ट्रेन करना है, मेरी मैन पावर को ट्रेन करना है। तो इसमें भी हमारी हैंड होल्डिंग होगी टू द ग्राम पंचायत। तो माई दिस थिंग इज नॉट कि मैंने उनको लगा के दे दिया और उनको कहते हैं भाई आप मेंटेन करो, ऑपरेशन एंड मोर ओवर मेंटेनेंस सर, आपकी इसका जो जिम्मेवारी है है। ऑपरेशन मेंटेनेंस जो इसमें हम कर रहे हैं जेजेएम में, ये पूरा पब्लिक के सामने ओपन होगा कि हाँ कहाँ पे बिल्कुल, हमारा कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहे हैं तो हाँ जी उन्होंने हर चीज का पूरा हिसाब लेना है। बिल्कुल बिल्कुल पहले जो हम ऑपरेशन मेंटेनेंस करते थे, गवर्नमेंट का फंड्स था, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट ही पूछता था आगे भाई कहाँ पे खर्च किया, कहाँ नहीं खर्च किया। इसमें जो है हर गांव वाला जो हर जिसने अपना पैसा लगाया वो आके पूछेगा कि बताओ जी मेरा पैसा कहाँ खर्च हुआ, बिल्कुल और बिल्कुल डिस्प्ले वहां पे करना है हर जगह इसमें कि इतना पैसा हमारे पास आया, इतना हमने यहाँ खर्च किया, इतना यहाँ खर्च किया। ये ट्रांसपेरेंट मैनर में हमारा जो है ये काम होगा था इसमें। बिल्कुल सही है। हरभजन जी आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। आप कुछ बोलना चाहते थे, आप कुछ? हाँ सर, ये मेरे मित्र शर्मा जी ने इसको एलेबोरेट किया है। हाँ जी ये एक्चुअल में हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद O&M जो है अपनी VWSC करेगी, हाँ जी वो अपना फंड्स अरेंज करेंगे, अपने बिल कलेक्ट करेंगे, उसके साथ ही सारा का सारा अपना खुद उसको सस्टेन करेंगे उस प्रोजेक्ट को, बिल्कुल और बिल्कुल। डिपार्टमेंट की हेल्प से करेंगे। ये क्योंकि ये जो O&M है सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने यस सुना होगा दपोला जी को, उन्होंने कहा था कि हमें जो प्रोजेक्ट लेने हैं हमें सिंगल प्रोजेक्ट करने हैं, छोटे जी छोटे प्रोजेक्ट्स करने हैं। वी शुड नॉट गो फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कि हमारा जी मल्टीपल स्कीम्स ले लें तो उसमें डिफिकल्टीज आए। वी शुड टेक सिंगल प्रोजेक्ट, और हमने उसको सस्टेनेबल कितनी देर के लिए करना है ताकि वो जो प्रोजेक्ट है 30-35 साल चले। यस सर यस। जब भी हम उसका लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट की को डिसाइड करते हैं, वी ऑलवेज डिसाइड द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट कि वो मेरा प्रोजेक्ट कितनी देर तक चलेगा। जब मैंने वो प्रोजेक्ट की लाइफ को डिजाइन करना है तो मैंने वो ऑपरेशन और मेंटेनेंस सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हाउ लॉन्ग आई हैव टू मेंटेन दैट प्रोजेक्ट एंड हाउ आई हैव टू मेंटेन द प्रोजेक्ट। See, these all the things are, it is not something I'm telling you, मुझे कुछ खास ज्ञान दे रहा हूँ आपको। आपको पता है, इसको सिर्फ एक फॉर्मुलेट कर रहा हूँ, एक फॉर्मेट में डाल के आपको बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसे होती है। नॉर्मली वी हियर इट अबाउट के ऑपरेशन मेंटेनेंस होती है, या क्यों होती है ऑपरेशन मेंटेनेंस? हम डालते हैं, हम अपने आप टेंडर लगाते हो, उसमें आप ऑपरेशन मेंटेनेंस कॉस्ट डालते हो कि 8%, 5%, 2%, जो भी है आप उसका कहते हो कि आपने मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमें देना। वो हम ऐसे नहीं दे देते, हम देते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट है उसकी कितनी लाइफ तक मैंने चलाना है उसको, 5 साल, 10 साल, 20 साल। ये वाला जो प्रोजेक्ट है हमारे वाटर सोल्यूशन के, दीज आर डिजाइन फॉर 30 इयर्स और 35 इयर्स और 40 इयर्स। सो ये कंपोनेंट जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था आई एम नॉट गिविंग ए बुकिश नॉलेज। मैं कोई स्लाइड शो नहीं रन कर रहा हूँ, मैं आपको जो बुकिश नॉलेज, मैं तुझे प्रोजेक्ट को लेके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपको बता रहा हूँ कि हाउ दिस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पार्टिसिपेटिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज डिफरेंट देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर मैंने कोई स्पोर्ट्स सेक्टर का प्रोजेक्ट डिजाइन करना है तो मेरी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी, एनी प्रोजेक्ट
लाइफ साइकिल डिपेंड्स ऑन द सस्टेनेबिलिटी। मेरा प्रोजेक्ट वो 30 साल चलेगा, 40 साल चलेगा, मैंने वो प्लान करना है। तो ये सब कुछ प्लान, ये तो है नहीं कि मैं जब प्रोजेक्ट लगा दूंगा तब मैं करूंगा। दिस प्रोजेक्ट मैं फॉर माय फ्रेंड्स फ्रॉम J&K एंड लद्दाख, जब प्लीज आप कोई स्कीम अभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग यू आर मेकिंग ए DPR और अभी आपकी स्कीम्स बन रही हैं, प्लीज हैव दिस थिंग, have this conceptualization. Assessment is very important. Role of community in different stages of life cycle is most important, and this it starts from A means assessment of the project. उसमें आप assess करोगे, उसमें आप assess करोगे भी कितनी देर चलना है, कहाँ से आएंगे, मैन मशीन मैन पावर कहाँ से अवेलेबल होगी, ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसी होगी, क्वांटिटी कहाँ से आएगा, सोर्स कहाँ से आएगा, ये सब कुछ आप पहले बनाओगे। Because we over the period of time in participative planning also we heard it, everybody asked, even in the morning engineer D.R. Yadav also asked about, सबसे पहले उन्होंने कहा सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं हम, जब भी हम कोई स्कीम लॉ इसको लगाते हैं सबसे पहले हम सोर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरा सोर्स कहाँ पे है, कैसा है, और सोर्स ऐसा होना चाहिए कि जो कि हमारा सस्टेनेबल हो। अब मैंने स्कीम रन कर दी, मैंने प्रोजेक्ट डिजाइन कर दिया, बट मेरा सोर्स है कि 5 साल ही चल सकता है। स्कीम आपने डिजाइन कर ली 30 साल के लिए, 35 साल के लिए। So all these things are very essential component of project management. These all a component are under project management. Assessment in terms of quality, आपके पास सोर्स आएगा, वाटर क्वालिटी कैसी है, वो पोर्टेबल वाटर है भी नहीं है, कितना है, और नहीं है तो कैसे होगा। सो ये सारा कुछ आप अवेलेबिलिटी सब कुछ आप उसको डिजाइन करते हो ड्यूरिंग योर असेसमेंट। जब आप असेस कर लिया, सारी सिचुएशन असेस कर ली, एक मैंने एक अंडरलाइन करना था जो मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स हैव मिस्ड आउट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब डेलिब्रेशंस हो रही थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली इज इनकम्प्लीट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन। हर एक स्टेज के ऊपर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। मैंने आज असेस किया, मैं आज ही मैंने प्रोजेक्ट कंसीव किया, तो मैं आज ही लिखूंगा ये मेरे माइंड में, दीज आर द थिंग्स आई हैव टू गो, सो यू हैव टू डॉक्यूमेंट दैट, so that one person is there, tomorrow somebody else he can just see the document, he will immediately come to know that जो ये जो प्रोजेक्ट है इस बेस के ऊपर बनाया गया था। So all these factors as documentation is very important component. There is a saying in English, well begun is a half done. अगर आप पहले अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए तो आपका प्रोजेक्ट आधा से ज्यादा कंप्लीट हो जाता है। चहल साहब ने रिस्क मैनेजमेंट की बात की है, वो हम पहले एसेस करते हैं कि भी क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। कुछ हमें पता होते हैं, कुछ अनफोर्सीन है, तो अनफोर्सीन का भी हम करते हैं। वी ड्रा आउट ए कॉन्टीजेंसी प्लान आल्सो। अगर आपका कोई सोर्स ऐसा है, कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हो गया, हाउ वी आर टू, आप लोग तो सारे फील्ड में रहते हो, आपकी कॉन्टीजेंसी प्लान बनाते हो, आप एक नेटवर्क बनाते हो। अगर मेरा एक नेटवर्क यहाँ से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, तो हाउ हैव टू दूसरे सोर्स से मैंने कैसे उसको पहुंचाना है। तो ऑल दिस थिंग्स you people do it, but this is all the part and parcel of the project management. Designing your community को involve करके करना है। Then you negotiate with the community also. Negotiate not in the terms of कि आपने को negotiate in the sense कि उनको convince करना है, negotiate करना है उनसे कि भी ये आपके लिए benefit है। जैसे over a period of time we find out कि भी कई जो some of the villagers they are not interested to go for this type of schemes, तो उनसे negotiate करना पड़ता है into the terms कि भी आपके लिए क्या चीज benefit है। We were saying कि भी quality का check करके, somebody was from J&K was saying, referring the other day कि जो टुल्लू पंप लगाया हुआ है उनको कैसे convince किया जाए। तो ये all these things are not that you have आपने scheme बना दी उसके बाद आप सोच रहे हो यार क्या किया जाए। So the emphasis of giving this component project management is not that you start a scheme and then you realize कि क्या किया जाए। No, these all things are a part of project management. It has to be designed prior to your launching a scheme. Procurement आपने करनी है, आपको पता है ई प्रोक्योरमेंट इज द प्रोसेस
through that you make the specification. ये सारा then you said आपकी जो resources हैं, resources in terms of manpower, और कितने लोग चाहिए, कहाँ से आएंगे, कैसे करेंगे, you require pump operator, you require JEs, ठीक है, sustainability के लिए. Then you have to make your implementation strategy, which we have already done it on participating this thing. जैसे for any successful, now the major component of project management, जो हम सबसे, there are 3 components. Anybody just give me the 3 components which are essence of project management. Anybody? और सबको पता है. जैसे मैं आपको बोलूंगा तो आपको कि हाँ ये तो है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के 3 एसेंस क्या चीज है? एनीबॉडी? कोई भी हमने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए हम 3 कंपोनेंट मेन लेके चलते हैं. अभी आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है कि जो मैन पावर टाइम पे डिलीवर हो. कोई भी प्रोजेक्ट हम जब कंसीव करते हैं उसके टाइम ऑन टाइम प्रोजेक्ट हो, उसको हम मानते हैं. मानते हो आप? प्लीज अश्योर मी कि आप मानते हैं ना टाइमली डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट. हाँ जी, कोई तो प्लीज टेल मी, इज टाइम क्रिटिकल फॉर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? बोले सम ऑफ आवर फ्रेंड्स, सुमेश चंद जी और सुरेश कुमार जी, कोई भी बताइए हाउ इंपॉर्टेंट इज टाइम फैक्टर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? रविंदर पाल जी, सारे लोग हैं, लॉट पीपल आर देयर. हिमांशु वर्मा आप बोल दिए. सर ये जल जीवन मिशन जो है हमारा पहले ही टाइम बेस्ड ये प्रोग्राम है. जैसे हमारा इम्प्लीमेंटिंग फेस जो है वो 6 to 12 मंथ्स का है, तो इसलिए टाइम जो है, टाइम तो इम्पोर्टेंट है ही है इसमें सर. हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि टाइम तो इम्पोर्टेंट है. ये सिर्फ जल जीवन मिशन नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट हो. हाँ, लेकिन ये जो हम सबसे पहले टाइम की बात करते हैं. आप सर टाइम जो है, टाइम तो पहले ही स्टार्ट में ही जो है टाइम उसमें होना चाहिए जो है उस, ताकि उसके हिसाब से हम आगे काम कर सकें. हाँ जी. और दूसरा कंपोनेंट इसका आता है जो सक्सेस होने का. दूसरा ये कि बजट में होना चाहिए. बजट, हाँ यस. ओवररन नहीं होना चाहिए. ये सारे एग्री करोगे? जी सर, जी सर. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट. यस यस. जब तक आपने कोई प्रोजेक्ट बना लिया, आपकी एक्सेप्टेंस नहीं हुई, विलेजर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया, भैया ये बना दे, कोई कॉन्ट्रैक्टर आपने पाइप लेआउट करने के लिए दे दिया, ठीक है, आपको उसका जो नेटवर्क है आपको पसंद है, उसकी स्कीम आपको पसंद नहीं है, आपने कहा कि यार ये क्या बिगाड़ कर दिया, ये तो आपने बिगाड़ दिया सारा काम. तो आपकी एक्सेप्टेंस किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट इज मोस्ट क्रिटिकल. और इन दिस फैक्टर एक्सेप्टेंस ऑफ विलेजर्स इन द सेंस जो GPWS है, उनकी एक्सेप्टेंस. क्यों हम उनसे, इसीलिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व इसीलिए कर रहे हैं ताकि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, हमारी स्कीम है, वो एकदम सक्सेसफुल चले. सर इसमें एक और है भाई, कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स. जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी सभी की कंट्रीब्यूशन बराबर है. अगर गवर्नमेंट फंड्स टाइमली रिलीज नहीं करेगी तब भी हमारे कंट्रैक्टर्स जो है वो काम नहीं करेंगे, या कंट्रैक्टर जो है वो काम नहीं करेगा ठीक तरीके से, तो पब्लिक का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा. सूरज जी, जब भी हम कोई प्रोजेक्ट को कंसीव करते हैं तो उसमें ना कुछ चैलेंजेस को हम लेकर के कंसीव करते हैं. जी सर, जी. वो चैलेंजेस कई हैं. चैलेंजेस है टेक्नोलॉजिकल चैलेंज, चैलेंजेस है रिसोर्स चैलेंजेस,
आप जब भी डिजाइन करोगे आप तो रिसोर्स में मनी आ जाती है, आपकी मशीन आ जाती है, ठीक है, आपकी आपने कोई डिजाइन किया, मैन पावर आ जाती है। अब आपने स्कीम रन कर ली, आपके लिए सपोज करो लद्दाख में है, जैसे आजकल के दिनों में है, उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट है उनको लिफ्ट करना, हर एक चीज तो हर बंदे तो लिफ्ट नहीं कर सकते। तो बट ये कंस्ट्रेंट को टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट कि कौन सी टेक्निक लगाई जाए, वहां पे लेवल कैसा है, ग्रेविटी वाली स्कीम लगी जाए, सरफेस लेवल पे चले, कौन सी स्कीम चलेगी। और तीसरा है उसके साथ और आपका कंस्ट्रेंट है आपका इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट। आप देखोगे अभी इन्वायरमेंट कैसा है वहां पे कैसा। सो वी वर्क ऑन दिस। जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव किया जाता है उसको ये पहले उनको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स और चैलेंजेस को अंडरटेक करना, और हम कहते हैं उसको अजम्पशंस। तो हम ये कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को लेके चलते हैं कि भी मुझे ये वाला फंड है, ये अगर आएगा मैं लेके चल रहा हूँ, अज्यूम कर रहा हूँ कि ये मैं स्कीम बना रहा हूँ, मुझे ये फंड यहाँ पे आएगा। तो मैंने उस कंस्ट्रेंट को कंसीडर किया है मैंने जब डिजाइन किया। मैंने डिजाइन स्कीम आई कंसीडर दिस थिंग कि मैंने इतना पैसा खर्च करना है, उसका सोर्स फंड यहाँ से आएगा। तो दिस कंस्ट्रेंट वी कंसीडर बिफोर वी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब हम इसको डॉक्यूमेंट करते हैं ना जी, फिर आपको हमेशा के लिए वो एक प्लेटफॉर्म और एक फॉर्मेट बन जाता है। टिल द टाइम वी डोंट डॉक्यूमेंट इट, वो इंडिविजुअल के ऊपर रह जाता है कि आपने देख लिया, हाँ मैंने तो सोचा था, मैंने तो पहले देख लिया था ये। दूसरा आपका एक्शन आएगा, वो कहेगा यार मुझे तो पता नहीं सुरेश जी ने क्या क्या सोचा था, उससे कहाँ से आएगा फंड, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सो वंस इफ यू विल डॉक्यूमेंटेड, तो आपका डॉक्यूमेंट होगा कि मैंने जब ये कंसीव किया तो मैंने किया कि 50% फंड विल कम फ्रॉम स्टेट, 50% विल कम फ्रॉम सेंटर। सो मैंने वो डॉक्यूमेंटेड किया। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट which most of our professionals also, my experience of 35 years is most of the professionals in even in corporate sector they missed out because we rely so much on our consultants। ठीक है, अब हम कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा जो भी कंसल्टेंट आपको डॉक्यूमेंट देता है, कितने मोटे मोटे डॉक्यूमेंट दे देता है, क्योंकि उनका एम्फेसिस ही डॉक्यूमेंटेशन होती है। Their lead is only that they make a proper document. They'll give you every step they document कि क्या आपने document करना है. They'll make all the diagrams and everything, give it to you. तो इसीलिए वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाते हैं because they emphasis on project management. इसी तरह जैसे सक्सेस के लिए हमें 3-4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट थे ड्यूरिंग डेलिब्रेशंस। जैसे उन्होंने भी चैल साहब ने भी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कहा, उन्होंने कैट की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी कि अगर इफ इट सिट्स ऑन वन टाइम ऑन द हॉट प्लेट देन इट नेवर सिट्स अगेन ऑन द हॉट प्लेट। मींस कि अगर आपने एक बार कोई चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है एंड यू हैव ए बैड एक्सपीरियंस, देन यू ट्राई टू अवॉइड इट, देन यू विल नॉट फॉल इनटू द सेम थिंग। तो इसीलिए सक्सेस के तो 3-4 मंत्र हैं हमारे पास कि टाइमली, बजटरी, नेगोशिएट करो और एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट होनी चाहिए। अब फेलियर भी है ना, मैंने कोई चीज को डिफाइन ही नहीं किया। अब चाहे सामने आपने इसमें लिखा था इट हैज ए डेफिनेट बिगिनिंग एंड डेफिनेट एंड, आपने नोट किया होगा। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी चीज है बिकॉज इट्स अ डेफिनेट बिगिनिंग। अगर हम बिगिनिंग में ही, मैंने जैसे कहा वेल बिगन इज ए हाफ डन, बिगिनिंग में अगर हम अपना प्रॉपरली उसको डॉक्यूमेंटेड, प्रॉपरली डिफाइंड, आप अपना स्कोप ऑफ वर्क अच्छी तरह से कर दोगे, अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस TOR आप अच्छा डिजाइन कर दोगे, आप कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट प्रॉपरली डिजाइन करोगे, तो आपको ये इसकी कॉम्प्लिकेशन से आप अवॉइड करोगे, कॉम्प्लेक्सिटी से अवॉइड कर सकते हो। अगर आपने स्कोप ऑफ वर्क तो डिजाइन कर दिया, आपने टेंडर भी लगा दिया, बीच में आपने कहा नहीं यार वो तो कुछ और भी इसमें ऐड कर देते हैं जो नॉर्मली होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है, और चलो जी हमने उसको ये फीचर भी ऐड कर दो यार, आपने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं। कब उसमें आपने अपना एक्सपीरियंस, आपने आप सभी एक्सपीरियंस हो, एक्शन हो, सभी इतने आपने प्रोजेक्ट किए होंगे, यू मस्ट हैव सीन इट द मोमेंट वी कम अंडर प्रेशर एज एन इंजीनियर्स, वी कम अंडर प्रेशर के भी ये भी स्कीम को लॉन्च कर दो। आपकी एक विलेज की स्कीम है, समटाइम्स द प्रेशर कम, ठीक है यार उसको भी ऐड कर लो, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ दिस थिंग वी ऐड दिस। सो माय दिस थिंग इज
डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, whether it's feasible or not, or then you have to redesign it. It is not only कि भी half cooked करके आपने include कर दिया. Inadequate configuration, आप कई बार डिजाइन कर देते हो और configuration proper होती है. These are the components which are part and parcel of project management, जो कि हमारे फेलियर का कारण बन जाते हैं. हमने अच्छी तरह नेगोशिएट नहीं किया, अनआइडेंटिफाइड चीजें छोड़ दी, कंस्ट्रेंट है, हमने सोचा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं यार एनवायरनमेंट को आपने कोई स्कीम लगा दी, वहां पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, आपको कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं आई, हमारी तो स्कीम ही नहीं रन हो सकती. आपने कहा जी को रोड कटिंग हो रही है, रोड कटिंग के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए परमिशन चाहिए, दैट परमिशन इज नॉट अवेलेबल, तो आपका तो प्रोजेक्ट बैठ गया ना. आपने तो ये अनआइडेंटिफाइड जो कंस्ट्रेंट होते हैं, दे बिकम्स अ पार्ट एंड फेलियर ऑफ योर प्रोजेक्ट. आपने दूसरी रॉन्ग मेथोडोलॉजी ले ली. अनदर कंपोनेंट जो मैंने आपको पहले बोला, टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स, आपने रॉन्ग मेथोडोलॉजी ले ली. अब आप देख रहे हो कि यार ये तो ग्रेविटी सोल्यूशन है इसका, तो ठीक है, और कोई सोल्यूशन बन ही नहीं सकता. ठीक है, आपने कहा नहीं 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 ऐसे कर देते हैं, ऐसे. आपने डॉक्यूमेंटेड कुछ किया नहीं है. आप some other action has come into, वो कहेगा मुझे क्या पता भैया क्या क्या सोचा था, क्या किया था, वो आपका प्रोजेक्ट भी रुक जाएगा. So these are the see with due respect to all the executive engineers, it is nothing that I am elaborating on something very unique. It is only my exposure to the project management which I am sharing with you, and you will fully agree with me. What we are talking about is practically faced in the day-to-day operations. ये हम चीजें सारी फेस करते हैं, but we are I'm emphasizing, okay, please address into this, address all these components. हम दूसरी तरह आपने कोई स्कीम लॉन्च कर दी, फेलियर का कारण मैं बता देता हूँ. आपने स्कीम लॉन्च कर दी एक विलेज के लिए, ठीक है, आप यू विल फाइंड दिस लैक ऑफ पॉलिटिकल विल और कमिटमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट. वो कहते हैं आपने तो वैसे की है, आपके हाफ के वी फेस इट इन डे टू डे. वी हैव सीन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट जो इनकम्प्लीट पड़े हैं, प्रायोरिटी चेंज होगी. So what I mean to say is there should not be any shortcut. Please plug in all the loose ends in the beginning. जितने ये लूज एंड्स हैं इनको बिगनिंग में ही प्लग इन करना होता है. As a officer project manager, because executive engineers in terminology of corporate technology, or so to say, so corporate technology में executive engineer as a project managers, they are the persons who execute the project, conceive the project and plan the project, execute the project. आप फर्दर सेक्शन डाउन द सेक्शन देते हो, एसडीओ को देते हो, देन इट गो टू जेई, देन इट गो टू डाउन द लाइन. एंड वेरी एम्फेटिकली आई जस्ट से आपको, आई डोंट नो हाउ मेनी यू नो वेयर द टर्मिनोलॉजी प्रोजेक्ट केम इनटू एनीवन. हम स्कीम को एक स्कीम कह देता है, हम प्रोजेक्ट वर्ड यूज करते हैं. व्हाई वी यूज प्रोजेक्ट? It is a Latin word basically. Project means in Latin, it's a projectum, projectum, they call it in Latin. It says something which happens before anything else happens. कोई चीज ऐसी जो किसी होने से पहले की जाए उसको प्रोजेक्ट कहते हैं. हमने कोई चीज डिजाइन करनी है, हम उससे पहले जो सारी चीजें प्लान करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, असेस करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके बाद हम हैंड होल्डिंग स्कीम बनाते हैं कि हाउ आई हैंड ओवर कैसे होगा. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो आई एम श्योर दिस, और आपने एज ए रिपीटेड सेइंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, द एसेंस इज सर्विस डिलीवरी टाइमली, विद इन द बजट, with the acceptance of the clients. These are the three things which are essence of any project management. When we talk about all these things, there is nothing beyond these three. You take it any component, ये तीनों में fall करेगी. Acceptance of client, आपकी stakeholders, आपके participatory community, उसका role,
टाइम, आपकी सर्विस, मैन पावर, बजट, फिर बजट पे आ जाओगे तो आपकी फाइनेंशियल फंडिंग कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है. So within when we do all these things within that thing, that becomes a successful project management. So with this, I'll just park myself here only. I hope I'm able to convey some of the components of project management to you. And this is my essence, like working on project management and delivering lectures on project management. And with an engineering background, I emphasizing that all our engineers are very good project managers. Only thing is we lack sometime in our documentation, sometimes we take it too lightly, all those components. And since for Jal Jeevan Mission, it is a very well defined project given to us. We know all the objectives, we know the mission, we know the objective, we know the end goal. Everything is documented. Everything it is told. आपने state water supply committees बनानी है, state के बाद district, district के बाद village, village के बाद village में ही पानी समितिज, GPWS. आपने ये देखो कि नेशनल जल जीवन मिशन हो गया, उसके बाद ये होगा स्टेट लेवल पे स्टेक होल्डर्स को कैसे करना है, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्टिंग एजेंसीज को कैसे इन्वॉल्व करना है. So all these things under this Jal Jeevan mission from the project point of view, project management, everything is documented. So my request to all my worthy participants is, please go through the documentation, operational guidelines and Margdarshika. These are the two components of Jal Jeevan mission. If you just go through these two documents, they have given 4 documents that we have shared all the links. Those are available on Government of India's website also, Jal Shakti. And if you just go to Jal Jeevan Mission, all these 4 documents are available there. So it is a well laid out, very well documented project of Jal Jeevan Mission, which is already defined to the last mile also, how the connectivity done. Whether it's from the quality point of view, whether it's quantity point of view, everything is defined there. And then जैसे मिस्टर सुधीर ने आपको बताया, अग्रवाल साहब ने बताया था आपको कि नाउ आजकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है. अर्लियर वी यूज्ड टू यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अभी भी माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, सॉफ्टवेयर है जिसमें माइलस्टोन एंड एवरीथिंग इज डिफाइंड, वो यूज कर सकते हो. और जल जीवन मिशन के लिए तो उन्होंने अपना डैशबोर्ड डिजाइन किया हुआ है, उसमें स्टेट का, विलेज का नीचे तक यू कैन आइडेंटिफाई, यू नो दैट कि क्या क्या स्टेटस चल रहा है, कहाँ पे क्या है, एवरीथिंग इज देयर. सो आपको वो हेल्प भी है. सो माय विद दिस थिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट ऑल माय डियर फ्रेंड्स to just go through whenever you get a time. Okay, must read it. It is very beneficial if you just go through for those documents at your own time. Just go through those documents. You will get insight of. You need not to go anything if you just go through that. Those are so good documents. I read it, and these are very practical, and to the minor detail they are covered up. And Mr. Dupola has contributed very significantly in framing those documents. That is the reason that we are very indebted to Mr. Dupola that he is taking the lectures. And all other prominent our experts, Mr. Sudhir Agarwal, I'm thankful to him also. He is from he's director of strategy from Microsoft, and we try to involve a person for having a rich experience in corporate sector. उनको कैसे how to integrate corporate with the government. We have Mr. J.S. Chahal, engineer. I am thankful to him also. जिन्होंने hands-on experience है, उन्होंने as a SE he is working on water supply solutions. Okay, and Mr. P.S. Baba, he has talked about financial management, and he has also given an insight to you, all of you. And you are truly myself. I'm Dr. Pramod Talia. And I have just given you all the details, what I know about project management. So thank you very much. Anybody having anything, please share on your chat, or you can ask me, or you can send a mail also, which is available because I'm interacting with you people only.
And to further also, I have any question in case somebody is having, then please raise it. Okay, before I sum up, I just request all of you to please fill up the feedback form. Those are very important. My team at Masipa, KRC Masipa, we have been chasing you for filling up the form. On 15th, 16th also, we have been requesting. My team was following up, making calls to you, and I know sometimes it becomes irritating when you approach to you to please fill up your form. It is nothing of, we don't mean anything to just offend in the sense that we just call you again and to request you to fill up the form. It is only to understand to understand us also in better fashion that okay, how we can improve it further in terms of our resource person, in terms of our framing of the training module. So for all those things, your feedback is as important to us as it is important to Ministry of Jal Shakti, because this feedback is sent to them also, the number of participation, what your contribution has been, and all things have been sent to Ministry of Jal Shakti also. So with this, I once again humbly request to all of you, please, if you find our training program has been beneficial to you, I'm sure it would be. And if you must have taken some takeaways from this training program, then please do appreciate on your feedback also and give your true feedback to us. That will help us in framing next our program. So we have a third edition of our this one-day program that will be on 22nd. And then because we understand that having an online training program, the involvement to keep involvement of all the participants is all the time is more challenging. And as a resource person, it is more challenging till the time we don't get a response. And if I don't feel all the 40 persons looking at me, then sometimes it becomes discouraging. But these are the complexity or these are challenges of online training programs. Anyway, we'll soon move into offline. We are going to have our first offline training program for 5 days. That will be starting from 6th of December and follow with some in December, some in Jan. Okay. So we'll catch up later when you come to us with more participation in one of our training program. Till then, with a request to please fill up your feedback form. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks for joining us. Thank you.